Hey everyone, welcome to the channel. Now, before we get into the conversation with Xulfi, I want to quickly tell you about how it happened and why it happened. Now, if you follow the videos on the channel, you know that season 14 of Coke Studio has been quite the emotional roller coaster, not just for us, but I think for you as well, judging by the comments and beautiful notes you've left on the videos. And I can only speak for myself when I say that it feels great to be alive in a time where art like this is showing the way not just for creators and artists, but also for the rest of us who have been forced to confront our emotional selves and confront the gamut of emotions that we keep hidden deep within ourselves. And also it's helped all of us know that we're not alone in how we feel, and how we think and how we relate and how we live life, basically. So I really wanted to deep dive into season 14 of Coke Studio, and who better to do that with than the producer himself, right? Now, Xulfi needs no introduction. His music career has spanned almost 3 decades now. He's given us classics and hit songs with not just his bands, but also, his independent and solo music. And we've seen him be a man on a mission for a while now. And, he's been on a mission to grow the music industry, to groom the musicians of tomorrow. And I feel his mission in the music landscape has evolved on many, many, many levels now. But we will talk to him about all of that in this conversation. Him and his team with this season in particular, I feel they've shown the world the power of collaboration and what kind of magic one can create when one approaches art and creativity with, an open mind, an open heart, and the right intent. The intent to tell real stories of real emotions and real people. And I feel like when the right intent is coupled with a vision and a mission and a mindset that is fueled by curiosity and innovation and the need to collaborate, well, you can create real magic. And now we've all seen them do that. So I have not edited any portions of this conversation. And it is a long one, but I really, really, really want to thank Xulfi for taking the time to have it and for sharing in such great detail all the stories behind the season of Coke Studio and answering all my questions so patiently. We basically powered through everything from power cuts to bad Wi-Fi to phone calls and lights working, not working, then working again, and a whole lot of other interruptions. We powered through all of it to get you these stories and to get you this conversation. So I encourage you to watch it in its entirety at your leisure, of course. And I really hope that you will walk away from it feeling as inspired as I do, not just to create things of value in the world, but also to just believe in magic again. Because when we believe in magic, that's when we'll experience it, right? So, on that note, without further ado, let's get into the episode. This is Real Talk, episode 3 with Xulfi. Hey everyone, welcome to another episode of Real Talk. This is Jyoti, and it is my honor and privilege to welcome Xulfi to this episode. Hi, Xulfi. Hello, Jyoti. How Feels are great to you? be here. Oh, it feels great to I'm have good. you here. I am so touched and so grateful because I know आप ज़्यादा interviews नहीं देते हैं, so I'm very, very humbled. Thank you so much for being here. I'm glad I'm talking to you, and feels great. Yay, amazing. So I know we should definitely talk about Coke Studio season 14. That is the main purpose behind this conversation. But another intent I have is to also talk about just art and creativity in general. And hopefully people who watch this then walk away feeling inspired to create magic in their own lives in whatever way. So shall we begin? Shuru kare? Please, शुरू करें. Okay, amazing. Before we begin, I want to ask you how you feel about this conversation happening at this point in time, because you talk a lot about the universe conspiring in weird ways to make things happen at the weirdest Always times, and our conversation has been pending for a while. for a long time, in fact. You know? है ना? I remember, I think a long time back as well, when basement was happening. Yes. उस time पे भी there was a conversation pending. चलें, as you said, कि universe का उसका अपना plan है.
I love Universe का plan वैसे हमेशा मुझे बड़ा अच्छा लगता है. Exactly. So क्योंकि मैं सोच रही थी कि हम 2014 के आसपास we connected. The Basement का season 3 or something was about to begin, and I was very inspired by seeing that show. And I was like, I need to connect with Zulfi and do something in some way, you know, for my radio network in Dubai. That didn't happen, but at least we connected. And I'm just giving the viewers a little background because they should know that I intended to have Zulfi on the channel on Real Talk last summer. एंड मेरा उस टाइम जब प्रेप मैंने किया था वो इंटरव्यू नहीं हो पाया, नो वरीज देयर, लेकिन मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि क्या आप कोक स्टूडियो करने वाले हैं, क्योंकि रूमर्स आ रहे हैं सुनने में. So wow. it's so amazing that that didn't happen then, and we're now connecting after the season. So there's so much more to talk about. You know? Yes. Okay. Cool. And I am ready. Okay, so let's talk about you deciding to get into music and you deciding to be a creator. I have watched some of your interviews. I know you've covered your journey in those, so I don't want to go there. But I want to talk about that moment when you knew that music is going to be your way. See, as you said, the universe now started its work I think it is always working. It's just when we receive it, when our subconscious, transfers that knowledge, that information to our conscious. And my journey, if I think now, right, तो मुझे लगता है my journey started when my father gifted me a toy piano, and it was a surprise gift. Maybe I don't know if I had said this in another interview or no, but it was a moment that उस time पे I couldn't comprehend कि वो क्या हो रहा है. I was 9 at that time, yeah, and nobody could know I had an interest in music. And my father used to get different किस्म के gifts या कपड़े या those remote control cars. But for me, he got a toy piano. I don't know how, why, what he thought. Because कुछ होता ना कि कुछ या तो signals मिले कि ये music का कुछ है तो मैं toy दे. It just happened, right? And from that moment now, एक दो फिर magic moments create हो गए. वो ऐसे हो गए कि मैं I think there was some movie टीवी पे कुछ थी और उसमें ना कुछ गाने वगैरह चल रहे थे. And I even remember the movie name. वो एक मूवी थी आशिकी, राहुल रॉय की. Yes. I'll be honest. Oh, जो love जो that बिल्कुल soundtrack. मतलब बता रहा हूँ. तो वो लगी हुई थी तो I was now the toy piano was in front of me and I didn't know I was playing. I think it was that song. जाने रे जाने मन, तनननन, एक गाना था उसका. तो I just started playing that melody on the keys and I didn't know how I was doing it as well because I was doing it subconsciously. I didn't know. So my brother noticed it. He's playing, just चल रहा है सामने वो बजा रहा है और अक्सर ही होता था कि कोई चीज लगी होती थी and I was just subconsciously playing it. So my elder brother, he decided to give me a bigger piano. And और वो सरप्राइज था मेरे लिए. मुझे नहीं पता था कि ये प्लान हो रहा है मेरे लिए. But my brothers planned it and they somehow collected that money. इकट्ठे करके पैसे उन्होंने मुझे एक बड़ा पियानो, I remember Casio CT680, उन्होंने मुझे गिफ्ट दे दिया. अब जब आ गया तो मैंने कहा यार ये तो मुझे सीखना पड़ेगा क्योंकि I didn't know I had that interest. It was happening but I didn't know I had that interest. So बस फिर उसमें एक किताब थी साथ मेरे, एक बड़े से कीबोर्ड के, जिसमें सारी नर्सरी राइम्स थी. हम्टी डम्टी, ट्विंकल लिटिल स्टार. आई वाज यंग, मैं 11-12 साल का उस टाइम पर था. तो बस वो मैंने बजाना शुरू किया. उसके अंदर कॉर्ड्स का भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ मेलोडी इन्फॉर्मेशन भी थी. सो आई लर्न फ्रॉम दैट बुक एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. एंड व्हेन आई टर्न 13 सो मेरे एक और भाई हैं दानिश, उन्होंने अच्छा the brothers who got me the keyboard, वो मेरे, we are basically 4 brothers and 1 sister, right? Okay. So Heather and Puram, they got me the keyboard. They planned it. And my brother Danish, he used to study at NCA, National College of Arts. So he was heading this theatrical group called Unwrap Nexus, right? So बड़ा मजे का नाम था, Unwrap Nexus. तो मैं 13 साल का था, मुझे ले गए, कहते हैं कि हम एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस करें, तुम उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बनाओगे. मैंने कहा यार मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं क्या बनाऊंगा. I didn't know about it. So I went to NCA and so the first thing I did was I saw what was happening. And Jyoti, I think that was the moment. So what was happening was, उन्होंने एक म्यूजिक लगाया हुआ था और उस पे माइम हो रही थी.
with no words, just movements, just dance, just acting a situation, a story out. And it was so beautiful. I remember there was this performance they did. It was मजे की थी. They were given this task. वो होता ये था कि आपको टास्क देते थे कि ये थीम है, इस पे परफॉर्मेंस बनाएं, you have 15 minutes. तो मेरे पास भी 15 minutes ही होते थे to make that music for it, right? So being 13 and just into this situation, which is a theatrical situation, and before that I didn't have enough knowledge or absorption of all of this, but it just suddenly it happened for me. तो वहां से ना there was this performance, उसका नाम था Spring. So they had to depict the spring season. और उसमें उन्होंने इतना मजे का डिपिक्ट किया कि उन्होंने स्प्रिंग सीजन को इस बात से कर दिया कि जंपी हो गए हैं सारे, लाइक देयर इज अ स्प्रिंग इन योर फीट, राइट? एंड दैट थिएट्रिकल, ब्यूटीफुल, क्यूट थी, मजे की थी. but I remember it's in the top of my mind. So all this word play, all these performances, theatrics, and so many different topics that were visually done, and I had to do the music for it, just on that, just spontaneously. मुझे ना उस एक्सपीरियंस से सोनिक और विजुअल की मैरिज का सब कुछ एक दिमाग में समझने कनेक्शन समझ आ गया शुरू से. Expanded your imagination on a different degree. It was Jyoti for 1 month workshop. सब मुझसे बड़े थे, तो मेरे जितने दोस्त बने मुझसे बड़े मेरे भाई के दोस्त थे. उनके साथ डिस्कशंस, उनका, और इतने डिफरेंट किस्म के लोग थे. NCS was quite, still is a very diverse environment, very inclusive environment. ठीक है, अब उस टाइम पे ज्यादा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट्स नहीं थी, लेकिन वो थी. और मुझे तो नहीं पता था, अभी बच्चा बड़ा हो रहा होता, उसको नहीं पता होता कि ये सारी टर्म्स का मतलब क्या है, लेकिन फील कर सकता है. तो मैं कुछ फील कर रहा था कि कुछ हो रहा है, लेकिन मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था. बट आई लव्ड इट सो मच कि एट दैट टाइम ना मुझे होता था कि नेक्स्ट वर्कशॉप कब होगी, मैं अपने भाई को कहता था. एंड इंटरेस्टिंगली मैं क्या करना शुरू हो गया कि उस टाइम पे मेरी लिसनिंग भी पीटर गैब्रियल, पिंक फ्लॉयड से शुरू होके, एनिग्मा से शुरू होके, it was going into Metallica and Iron Maiden and Nirvana and whatnot. I mean, I was listening to such a huge array of music जो बस मैं सुनता था और मुझे बहुत मजा आता था. I used to sleep to Peter Gabriel का एक पैशन, एक साउंड ट्रैक था उनका, मूवी थी लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट. उसका साउंड ट्रैक था, वो बड़ा ट्राइबल, अफ्रीकन, बट स्टिल मॉडर्न, अहेड ऑफ टाइम टाइप था. तो मेरे पास वॉकमैन था सोनी का, उसमें मैं लगा के सुन के मैं सोता था. सो अगेन ऑल द एक्सपीरियंसेस वर हैपनिंग एंड आई नो नाउ आई अंडरस्टैंड दे वर इम्पैक्टिंग मी इन अ सर्टेन वे, राइट? अच्छा, अब हाँ, अब और मैंने उधर भी जाके जब मैं बैकग्राउंड म्यूजिक भी उस थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस का क्रिएट करता था ना ज्योति, तो मैं आई यूज्ड टू, मैंने अपने पियानो बजाता, राइट? सो कीबोर्ड पियानो, मैं उसके साथ ना एक गिटार का इफेक्ट प्रोसेसर लगाया होता था, तो फुल डिस्टॉर्शन पता नहीं क्या क्या इफेक्ट्स मैं उस कीबोर्ड पे बजाया करता था कि क्या हो रहा है कुछ, मतलब कीबोर्ड पे ड्रम की साउंड लगाई, गिटार पे इफेक्ट प्रोसेसर पे पता नहीं डिस्टॉर्शन, सैचुरेशन, डिलेज, एकोज, रिवर्ब्स लगा के जस्ट क्रिएटिंग मेस्ड अप साउंड्स to have those textures in, right? So it was how I began. And only lately you start realizing in the later part of your life what was happening. So if you ask me what the beginning was, this was my beginning. This was my beginning. And मुझे उस वक्त पता चल गया था कि मैंने ये करना है. And I think that was one reason that I, once I graduated, उस वक्त तक मेरा बैंड EP बन चुका था, Call बन चुका था. I've been through that performing live on stage वाली situation. और very interestingly, my first band was Call. Back in the days, Call was a different band, and we only used to do originals. We never used to do covers. Wow. उसका सीन भी दिल में था कि नहीं, हमें अपने गाने बनाने. My brother used to write, and he was a brilliant songwriter. So हम अपने गाने बनाते थे and perform भी करते थे. और performances भी हमारी theatrical होती. So there was like, my brother's thesis was called Transformation of Space. Oh. So the place we performed, so उनका architectural by the way thesis था. So उन्होंने जिस स्पेस पे परफॉर्म करना था ना, एक दिन पहले अपनी जूरी को बुला के दिखाया कि यार ये वो स्पेस है जिसमें परफॉर्म करने लगे. उसके अगले दिन उनका थीस था कि आप जब अगले दिन परफॉर्मेंस को देखने आएंगे वो जगह आपको लगेगी. वो एक थिएट्रिकल परफॉर्मिंग स्पेस बन चुकी थी. मतलब एट एवरी मोमेंट, एवरी थोड़ी जगहों पे ना आपको नजर आ रहा था कि कुछ ना कुछ आर्ट है एवरीवेयर, राइट? एंड बीइंग यंग, उस वक्त मैं 14 था, being young and experiencing this art, this everything, it was leaving a very beautiful imprint on my mind. I named this. पूरी स्टोरी शुरू से बताना शुरू करूं तो पता नहीं क्या क्या था, क्या क्या. But there's so many transformative things that you were subjected to unknowingly, that they are going to be transformative in a way that in the future I'm going to impact the music industry in a big way.
because of these little moments. हाँ, I think because it's then you realize कि इतना ज़रूरी है कि आप sensitive हो, कि ज़रूरी है कि आप feel करें और इस डर के बगैर feel करें कि अच्छा if you are you're going to cry, you're going to dance, or you're going to do whatever, you're going to be sad or you're going to be experiencing grief, ये सब ज़रूरी है, मतलब ये सब ज़रूरी है और ये लाइफ ने ना आहिस्ता-आहिस्ता सही बताऊँ ज्योति सिखा दिया कि ये सब ज़रूरी है। मैं इससे ना बचना पसंद करूँगा, ना मैं इससे भागना पसंद करूँगा, मैं इसको एम्ब्रेस करना पसंद करूँगा। सो ये एक लाइफ की बहुत बहुत बड़ी लर्निंग थी, मेरा ख्याल है। एंड बिकॉज़ आई स्टार्टेड एट आई थिंक एट सच एन अर्ली एज of and that age wasn't the social media age. It was back in 1993. Yeah, 1990 1990s basically, right? It was a different time altogether. It was a different time. लर्निंग बिल्कुल लर्निंग का तरीका भी डिफरेंट था और आर्ट्स को एब्जॉर्ब करने का भी तरीका वो नहीं था। आर्ट्स की इतनी क्वांटिटी भी नहीं थी। अभी तो यू कैन एक्सपीरियंस इट सो इजीली। मतलब पहले भी होगी जरूर, लेकिन हमें वो एक्सेस नहीं था। और उस टाइम के ऊपर आई एम सो लकी एंड ब्लेस्ड कि मुझे आई वाज एबल टू एक्सेस ऑल ऑफ दैट एंड दैट हैज रियली इम्पैक्टेड मी इन अ वे कि अब फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूँ ना, सो व्हेन कोक स्टूडियो हैपेंड ना, अभी जब होना था, सो द फर्स्ट बिल्कुल टॉप मोस्ट थिंग जो थी ना मेरे जहन में थी यही कि द सोनिक विल हैव इट्स ओन विजुअल, राइट? एंड इट वाज समथिंग दैट आई न्यू कि यार ये तो होना ही होना है। मैं सोचता भी था कि ये मुश्किल है क्योंकि इट मीन्स कि एवरी स्पेस विल नीड टू बी क्रिएटेड, बट आई थॉट कि यार स्टोरी तो उसके बगैर आप बता ही नहीं सकते हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि दिस कम्स फ्रॉम माय From that वेरी time. Yes. फ्रॉम दैट I तो can वो sense that when you're telling me the story ki, oh my god, the seed was planted back then. बैक देन Exactly. तो Yeah. ये बिगिनिंग थी जी मेरी। Mm. दिस आई कैन एज ब्रीफली एज आई कुड। But they say that there are two types of artists in the world: those who are about the destination, the fame, success, money, awards, and then there are those who are about the journey and the process. And you are clearly about the journey and the process. But was it always like this? Because you were a rock star. I mean, you still are, but you were, you had your bands and you were singing and you were doing everything as a rock star would. So was it a switch that happened along the way and it became about the journey, or was it always? पता नहीं, आई थिंक देयर ऑलवेज हैज बीन अ बैलेंस इन माय माइंड। Okay. वो एक अजीब सा बैलेंस है जो बस एग्जिस्ट करता है और वो ऐसा है कि सी व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, व्हेन यू आर इवन इन अ कॉन्सर्ट, इन वो जो रॉक वाला, लाइक ऑब्वियसली दैट पर्सोना, इट हैज अ सर्टेन परसेप्शन एज वेल। मेरा हमेशा ना पॉइंट ऑफ व्यू रहता ये था कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ ग्रेट आर्ट और एनी काइंड ऑफ अमेजिंग टैलेंट, टॉप ऑफ माइंड मेरे वो चीज़ चली जाती थी और कुछ भी नहीं होता था, ठीक है? इवन इफ एट सम पॉइंट इन टाइम आई एम एन्जॉयिंग कि महीने में हमारे 20 कॉन्सर्ट्स हैं एंड गोइंग टू बी परफॉर्मिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस सिटीज़ और सारा कुछ। अब क्यों मैं डिनाई करूँ, इतना मज़ा आता है यार स्टेज पे परफॉर्म करके, और अभी भी मैं करूँ, मुझे पता है आई लव टू डू दैट। Yeah. एंड वो भी स्टेज पे दोबारा आई नो आनी है, राइट? Yeah. लेकिन जो सैटिस्फैक्शन इस बात की, चलो एक सैटिस्फैक्शन तो थी कि यार मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ, म्यूजिक कर रहा हूँ और उसे अर्न कर रहा हूँ, ठीक है? ये है सैटिस्फैक्शन कि आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू एंड आई एम अर्निंग। सो इट्स गुड दैट एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको साथ-साथ मिल रही है, सस्टेनेबिलिटी भी मिल रही है और आप म्यूजिक कर रहे हो, ठीक है? खुशी होती है इसकी, इसमें कोई शक नहीं है, होनी भी चाहिए। हम आर्टिस्ट हैं, हम जो भी हैं, हमने एट द एंड ऑफ द डे अपना काम, शौक, प्यार से जो आर्ट को एक्सप्रेस करना है, उससे अगर हम सस्टेन कर रहे हैं, दैट्स हाउ इट शुड बी, राइट? Yeah. एंड इन एवरी कल्चर इट इज़ लाइक, मतलब जितने प्रोग्रेसिव कल्चर्स हैं, आर्ट कल्चर्स हैं, बल्कि ज़्यादातर में यही है। अब लेकिन उसको जो सुपरसीड चीज़ करती थी ना, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देयर वाज़ दिस कॉन्सर्ट ऑफ कॉल 2000 आई थिंक 8 में था। उसमें मैंने देखा एक बैंड ने हमें ओपन किया। उसमें एक सैक्सोफ़ोन प्लेयर था। अब वो बच्चा था कोई 18 साल का, 19 साल का, और वो क्या बजा रहा था। अब मैं कॉन्सर्ट भूल गया कि मैंने कि मैंने स्टेज पे जाके बजाना है। मैंने कहा इसकी परफ़ॉर्मेंस खत्म हो, आई एम गोइंग टू गो टू हिम, आई एम गोइंग टू एनकरेज हिम एंड आई एम गोइंग टू आस्क फॉर हिज़ नंबर कि कभी कुछ होगा ना तो मैं आपको कॉल करूँगा। तो मैं उसके पास गया, मैं इतना इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा यार, मैंने जिब्रान था उसका नाम। आई टूक हिज़ नंबर एंड आई कॉल्ड हिम आफ्टर 3 इयर्स फॉर बेसमेंट। Wow. सो जब बेसमेंट वाली चीज़ मटेरियलाइज़ हुई, Mm. दैट दैट यंग वाइब, अंडरग्राउंड, एक्सप्रेसिव, उस टाइम पे मुझे पता था, मैं 3 साल वेट किया कि मैं उसको कॉल
मैं एक्साइटेड था, मैं उसको कब कॉल करूँ? हाँ। So that just was, was more important to me than any other thing. Like even I want to give that example. जब मैंने रेजिस्टेंस सुना, द फर्स्ट रेजिस्टेंस अब्दुल्ला का, सिद्दीकी का, ठीक है, जो आई डिड इन बेसमेंट 5, या या मैंने सुना तो मैंने कहा यार ये कौन है बच्चा कि जो इस तरह का एक्सप्रेशन इतने कॉन्फिडेंटली, इतने एक्सप्रेसिवली और इतने आराम से ये सारी स्टोरी टेल कर रहा है और कोई मसला नहीं है। ही इज जस्ट डूइंग इट, एसिंग इट एंड ही इज सो यंग। सो आई गॉट हिज नंबर, आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड ऑल ऑफ दिस टू हिम। I was like, oh my God. And just because of that song, when I decided to karna hai, so I decided to change the whole ideology of that basement set for that one song. If you notice, Basement 5, it is a different set, but for completely Resistance, different. Even the complete laser harp and everything, you had so सब much. सब कुछ. Because then वहाँ से वो बात शुरू हो चुकी हुई थी. The हाँ. story, the narrative, the sonic and the visual needs to, they need to marry each other. So वो सब चीजें वहाँ से समझ आना शुरू हो गई थी कि ऐसे मैंने इस चीज को आगे लेके जा. उस गाने का जैम भी हमने डिफरेंट तरीके से किया. वो trying to say is कि all of these little things, जिसमें अदनान धूल है, अदनान धूल का बैंड सोच, he came to me a long time back and he ये भी 2006 या 7 की बात है, and he had the song बंदिया, शायद आपने सुना हो, जबरदस्त गाना, ठीक है। हाँ. और बंदिया कितना गंदा हो गया है तू, उसकी लाइन है, तू ये जान ले बंदिया, इस तरह की लाइन थी, बंदिया कितना गंदा हो गया है तू। सो वो इतना अवेयर और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड लिरिसिस्ट है ना कि द वे ही राइट्स एंड एक्सप्रेसेस, उसको भी डर नहीं है। अब उसकी लिरिक राइटिंग मेरे दिमाग में बैठी हुई थी कि यार ऐसा लिरिक राइटर नहीं मैंने देखा। तो मैंने उसको अपनी एक मैंने लिस्ट बनाई जा रहा था सालों से। यार हाँ. ये जो है ये कहीं है मेरे दिमाग में, ये बच्चा ही स्पेशली है कि वो खाने से आया था और खानेवाल से आके वो लाहौर आया इसलिए था कि ही कुड डू हिज ओन म्यूजिक, अपना करियर म्यूजिक, मतलब म्यूजिक कर सके, अपना करियर बढ़ा सके। उसने स्टूडियो बनाने का शौक था। नाउ ही रन्स द स्टूडियो, डज सो मच वर्क, कोलैबोरेट्स एंड राइट्स फॉर सो मेनी पीपल। अब उसने अपना एक बिल्ड कर लिया सारा कुछ। सो मैंने वो भी सोचा हुआ था कि वंस आई गेट टू डू समथिंग, आई एम गोइंग टू गेट हिम ऑन बोर्ड। शेरी भी क्या क्या स्टोरी है। ही हैड दिस बैंड, उस बैंड का नाम था उस टाइम पे ओवरडोज। शायद आपको इस स्टोरी का पता है कि नहीं पता। यही थे, उसमें शेरी बिलावल रहते हैं। सो ना मुझे नाम बिल्कुल नहीं पसंद था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बट जब मैंने ना सुना गाना, इनका गाना था अंधेरा, उसको मैंने वो गाते हुए सुना, वीडियो उसकी आई। तो जो उसका ड्रमर था ना बिलावल, बिलावल वाज अ पार्ट ऑफ बेसमेंट एज़ वेल। तो मैंने कहा मुझे शेरी का नंबर दो। मैंने शेरी को कॉल की। आई डिडन्ट नो हिम, दिस वाज आई थिंक बैक इन 2014 टाइप, हाँ। तो आई सेड कि यार आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड सो हैप्पी to see somebody express like that. And then Bilawal had told me he also edited the video. He was also involved in the direction of the video. फिर उस गाने में भी ना साथ lyrics आ रहे थे वीडियो के साथ साथ. So and then the thing was the way, and he had produced the song as well. He had written the song as well. So I could see something कि यार एक बंदा जिसको ये सब चीजें करने का शदीद शौक है, वो करता भी है. And I could relate myself to him because I used to direct my own videos, a lot of them. I used to edit my own videos, a lot of them. जल की मैंने बड़ी वीडियोस की हैं, लम्हे एक दिन आएगा, आई डायरेक्टेड देम। या फिर उसके बाद कॉल की शायद एक वीडियो थी, वो आई डायरेक्टेड दैट एज वेल। सो बहुत कुछ, रोजन की थी यादें, आई मीन दैट वाज दैट टाइम आई आल्सो वांटेड टू डू एवरीथिंग। एंड मुझे एडिटिंग का शदीद शौक था। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स ना, व्हेन आई सॉ शेरिया, तो कि वाह यार क्या बात है, मतलब ही हैज दैट आई एंड दैट ईयर एंड दैट सेंस। सो वो भी फिर मैंने रखा कि यार काश मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलती रहें या मैं क्रिएट कर सकूँ कि जहाँ ये ड्रीम टीम बन जाए किसी तरीके से। सो खैर अब क्या किस-किस का नाम लूँ, बट ऑल ऑफ दीज़ पीपल दे स्टार्टेड, मतलब समहाउ द यूनिवर्स एक्चुअली कंस्पायर्ड टू गेट दीज़ पीपल in my life. Connected to you. Action Yes. Zan, बिल्कुल Action Zan भी ऐसे I'd known him because he used to play the guitars for Atif and he had his own band जिसमें he used to play very interesting और बहुत ही मजेदार म्यूजिकल टाइप उसकी वाइब थी, जो ज़्यादा मतलब it's a very rare vibe by the way that he has. But I Yeah. didn't know him so completely. But then my niece, she showed me uh, a piece of music that he had done. उसने एक स्ट्रीट पे फोक म्यूजिशियंस थे, उन्होंने कुछ गाया हुआ था।
उसने वो यूज़ करके पीछे उसका पूरी कॉर्ड अरेंजमेंट बनाई थी। वो मैंने देखी ना, मैंने फ़ौरन से पहले मैंने कहा यार ये बंदा इतना स्पेशल है कि इसने इतना म्यूज़िकल कर दिया है फ़ोक को, कि ये तो अगर जब इस तरह की कव्वाली और फ़ोक को कुछ करेगा, तो वो तो स्पेशल और नया हो वो जाएगा। अब तो ये हो गया पुरानी ना, बात म थक गया। वो हो हाँ। वो हो गया। तो कॉल्ड हिम एंड आई सेड कि यू कैन चेंज द फेट or you can be a part of, you can contribute to changing the fate of folk and Qawwali in the country, and not just for people in Pakistan to see, for people across the world to see as well. So, all these, and ये तो चले चंद stories हैं. Even the musicians that I have that you see, all of them, if I start telling the stories, तो ये आप मुझसे कहेंगे कि 3 दिन का interview होगा. Okay, I can that's talk we don't know. about every, yeah, उसे बता रहा हूँ. I can talk about every one of them like this. Be Yeah. it Payam, be it Saad, be it anyone जो मेरे मेरे बैंड में था उस कोक स्टूडियो के. I can talk about each one of them and I can tell you an emotional story about each one of them. We will get into a deep dive with all of them and with Coke Studio. I'm But just being very no, it's fine. I'm trying to latch on to like a thought. It's very clear to me that like your brother spotted the talent in you and your family gifted you the piano and things like that, which then snowballed into everything else. You are now that person on a mission who's trying to spot the talent where it appears and keep it in your mind to give them the right platform in the future. So when I was researching you last year, I was like, Zulfi is a man on a mission. You also said it in an interview कि आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री कैसे ग्रो होगी जब लोग इंस्पायर होंगे म्यूजिशियंस बनने के लिए. सो वी हैव टू make them get inspired. And I want to ask you कि अभी वो बेसमेंट के टाइम का इंटरव्यू था और अब कोक स्टूडियो हो चुका है, तो has your mission evolved from that? You were grooming the musicians of tomorrow. Today, what has added on to that? I think एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस जो हुआ है ना पिछले कुछ सालों में, वो है कि it's not just music alone. It's a culture that you need to portray. It's a culture that Culture you of need to art. progress. Yes. So culture of art का direct outcome ही artist होगा. Correct. So if we can contribute towards evolving, growing a culture of art, or I would say a place of belonging, which I think every culture should be, every society, community should be. If we are able to do that and fall people in love with the very narrative of that, of the very concept of that, of having a culture where art can thrive, for people to create art, for people to experience art, the artist ना वो automatically नजर आना शुरू हो जाएगा खुद ही. और क्या हुआ? एक कमाल, again I have to connect it to my Coke Studio experience because Yes. हाँ, when we presented the idea for this whole new direction for Coke Studio, Yes. so उसमें जो first slide थी ना वो थी I accept who I am and I accept who you are. ये Coke Studio की presentation की first slide है. And there were so many people that I was presenting to. उनकी global team थी, उनकी local team थी, सब लोग थे. And I wanted to start not with a technicality or with a plan or with an executional thought. I wanted to plan with what I am actually thinking. I'm thinking of surrendering. I'm thinking of opening my heart. I'm thinking of starting from zero. I'm thinking of listening. I'm thinking of collaborating. And in those two lines, there was everything. It's going to start. It's going to begin, or it begins with acceptance. उस थॉट को आगे, और ये बाय द वे है, इट्स उसके रूट में वो एक ये आर्टिस्टिक थॉट ही है. एंड आई नो इसके रूट में है आर्टिस्टिक थॉट ही. अब प्लान हमारा जब हमने प्रेजेंट भी किया ना, उसके अंदर एक था कि वी आर गोइंग टू क्रिएट आर्ट वर्क फॉर ऑल आर्टिस्ट्स, फॉर ऑल सॉन्ग्स. एंड हमने आर्टिस्ट भी शॉर्टलिस्ट किए कि ये आर्टिस्ट होंगे हमारी, हम इस तरह की लिरिक वीडियोस भी बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे. ठीक है, क्योंकि वी वांटेड पीपल टू ऑब्जर्व, क्या कहते हैं उसे, I'm not think राइट वर्ड मुझे नहीं मिल रहा, बट एक आर्ट एक्सप्लोजन लोगों को फील होने की जरूरत है फ्रॉम एवरी एंगल. कि म्यूजिक भी आ रहा है, उसकी वीडियोस भी हैं, फिर आर्ट वर्क भी आ रहा है, फिर आर्टिस्ट को भी आप रिप्रेजेंट इस तरह कर रहे हो, और मतलब आपके जो सिंगर्स, म्यूजिशियन, सबको आप आर्टिस्टिकली रिप्रेजेंट भी कर रहे हो इन डिफरेंट आर्ट 360 degree experience. और म्यूरल भी बनाना है. ठीक है, म्यूरल्स भी बनेंगे, हम ये सब कुछ करेंगे. चलो जी, सीजन आया.
वो खुद ही होना शुरू हो गया ज्योति, वो खुद ही होना शुरू हो गया। वी डिडंट डू एनीथिंग, पीपल Wow. स्टार्टेड क्रिएटिंग आर्ट वर्क। नसीबो जी आब्दे जी का पहला आर्ट वर्क आया, लिरिक वीडियोस आना शुरू हो गए एंड आई वाज लाइक वी हैड थॉट ऑफ दिस, ये होना चाहिए और ये खुद हो रहा है। एंड देन आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट, जिसमें कमाल कमाल आपके इलस्ट्रेटर्स, कमाल वीडियो एडिटर्स, कमाल डांसर्स, कमाल सिंगर्स, कमाल म्यूजिशियंस, सब के सब आर्टिस्ट आना शुरू हो गए। तो ये कहाँ थे? कल्चर बना, खुद सामने आ गए। Art उनको भी inspiring एक्सप्रेशन art. का यस। अब कोक स्टूडियो सिर्फ ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसमें ये जो म्यूजिशियंस नजर आ रहे हैं इन्होंने एक्सप्रेस कर दिया या ये विजुअल, जब लोगों ने भी उसके अंदर अपने आप को शामिल किया तब बना है कोक स्टूडियो, तब बना है कल्चर फिनोमिनन, तब बनी है प्रोग्रेशन, जब उसमें लोग शामिल हों। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब लोग शामिल नहीं होते ना, इट्स नॉट अ मूवमेंट। व्हेन पीपल हु आर लिसनिंग, हु आर एक्सपीरियंसिंग दैट आर्ट ना, जब वो शामिल होते हैं ना इस पूरी चीज के अंदर, मूवमेंट तब बनती है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, दैट बिकेम माय फ्यूल टू कंटिन्यू वर्किंग, बिकॉज आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि 1 साल से मैं अपनी टीम के साथ लगा हुआ हूँ और obviously it's a comprehensive process, it's a tiring process mentally, physically, and it's a huge undertaking. The way we Wow. were doing it मजीद Mm. huge हो गई उससे, ठीक है। Mm. And but when I saw people getting involved in it, for example, Jyoti, when I saw you even react the way you reacted, and Shutspa as well, Yeah. you know, the way you had absorbed it, and so many like you who were reacting, dancing, laughing, crying, and being fearless. Who, you know, people who were healing, the people who were sending me videos, people who were dancing. I mean, I could see that culture finally, you know, becoming alive. ठीक है, और मैंने नहीं इस तरह देखा था। मैंने जब देखा था तो वो था जब मैं 13 साल का था, जब मैंने वो वर्कशॉप की थी जिसमें सब आर्ट थ्राइव करता था उस जगह पे, एक प्लेस ऑफ बिलोंगिंग थी। एंड यू नो इट वाज लाइक माय इनविटेशन टू दैट प्लेस ऑफ बिलोंगिंग। एंड आई हैव सेड इट बिफोर, जिस तरह वो हॉगवर्ट्स है ना, आपको एक लिटरली खत आता है कि यार आप यू आर यू नो रिक्रूटेड इनटू अ प्लेस, Yeah. यू नो, ऑफ मैजिक। तो बेसिकली उसका एसेंस भी क्या है? यू आर रिक्रूटेड इन अ प्लेस वेयर यू फील यू कैन बिलोंग। और मुझे अब जाके ना वो कनेक्शन बड़ा सॉलिडली बनता है कि यार अ प्लेस ऑफ बिलोंगिंग तो हम सबको ही चाहिए यार। मैंने इतने लोगों को देखा, आपको भी, बाकियों को भी, जो आर्ट वर्क बना रहे थे उनको भी, जब कोक स्टूडियो खत्म हो गया, उन्होंने कहा अब क्या करें? एंड यू नो, Like this एंड इट वाज experience. एन ऑनेस्ट एंड इट वाज एन ऑनेस्ट थिंग टू से, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू से। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो कोक स्टूडियो जितना मेरा उतना आपका भी है ना, बल्कि शायद ज्यादा आप ही का है। सो ये वो फीलिंग होती है जो कि आपके आर्ट कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। ये वो फीलिंग होती है जिससे आपको यकीन होता है, होप भी होता है, बिलीफ भी होता है कि यार आर्ट विल थ्राइव, आर्टिस्ट्स विल थ्राइव, दे विल आर्टिस्ट, यू नो, न्यू पीपल विल बी इंस्पायर्ड टू क्रिएट न्यू आर्ट एंड न्यू आइडियाज। और मैंने तो होते हुए देख लेना ज्योति, मतलब ऑल दीज पीपल लाइक सना हाशिम आर्ट डायरेक्टर है, ठीक है, क्या बंदा है यार। आप थोड़ी देर के लिए आप उससे बैठ के बात करें, उसकी उसका विजडम, इंटेलेक्ट, नॉलेज, आर्ट की कदर, प्यार, और नॉट जस्ट हिम, सो मेनी पीपल, जिशान परवेज, कमाल, जमाल, मुर्जी, आर स्टाइलिस्ट, हमारे डिजाइनर्स, साइमा, फातिमा, ऑल ऑफ दीज पीपल, मावी, आप इनके People. साथ बैठ के बात करें, दे हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट टू गिव। एंड व्हाई दे वर गिविंग देयर ऑल इनटू दैट स्पेस? बिकॉज दे न्यू इट्स अ प्लेस ऑफ बिलोंगिंग, ये हमारी जगह, हमारी बात सुनी जाएगी। इट्स यहाँ की, मतलब होता है ना, एक क्या कहूँ मैं, एक आर्टिस्टिक प्लेस में तो होती ही बड़ी एक ब्यूटीफुल किस्म की डेमोक्रेसी है, वेयर एवरी आइडिया मैटर्स। सबके दिलों में जब यकीन हो जाता है ना, तो फिर वो उनकी लाइफ में क्या चेंज आया होगा? ये चेंज आया होगा कि दे विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर इवन न्यू पीपल। सबके सब यकीन जो आ गया कि ये हो सकता है। सो दैट्स हाउ आई So, थिंक आर्ट yeah. प्रोग्रेसेस And it's a फ्रॉम snowball वन हार्ट टू effect. द अदर। Yes, you या create that environment for someone, they'll create it for other people, and it'll just snowball. It will grow मेरे लिए भी automatically. सरप्राइजिंग, ये Mm. स्नोबॉल इफेक्ट मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, बिकॉज ख्वाहिश थी, दिल तो करता था कि ऐसा हो, और सोचा भी था कि ऐसा होगा, लेकिन जब वो होना शुरू होता है ना, तो वो आपको सरप्राइज करता है। आप कहते हो यार ये इज इट अ ड्रीम, यू नो,
I think but it's not. creativity is a leap of faith at the end of the day. Na? It's like falling in love. And then you, like you said in one of the BTSs, you don't know how the journey will unravel. Yes. But I also sort of kind of figuring out how, you like to have control on things. How was it for you? How much control do you feel you had on the creative process, and how much of it was surrender? Because you're saying it is Beautiful. about surrender, no? Yes. I think surrender का सबसे जो beautiful outcome होता है वो collaboration होता है. और surrender का दूसरा अच्छा outcome ये होता है कि वो collective होता है. वो सिर्फ एक इंसान की तरफ से नहीं होता. वो पूरी टीम की तरफ से होता है towards each other. फिर आप आइडिया सुनते हो एक दूसरे के. So it was not just my surrender. It was the vision was to surrender. Even Coke Studio in its own surrender to listen to people, what they are listening, what they are feeling, what are their current narratives, how to talk about them. So you have to surrender to listen. Because कोई भी गाना ना ज्योति, it doesn't start from creating a chord structure or creating a beat or a groove. It starts from the conversation of what you need to talk to people. Yeah. What is the conversation you need to have with people, right? So even like, let me give you an example of the process. You get the essence of it. तो झूम. अब तो झूम में the day है, बल्कि मैं थोड़ा और पहले पीछे जाता हूँ. I'll begin the तो झूम story, how it you know evolved. I did Groove Mera for PSL, and in Groove Mera I had Nasibo, Aima, and the youngsters. ठीक है, जबरदस्त experience, जबरदस्त. And the first person from the music fraternity and industry who called me, आप guess करें वो कौन हो? नहीं, वो wild guess. हाँ, Abda ji called me. Wow. And she called me and she said कि यार क्या तुमने जबरदस्त काम किया है with Nasibo. And Nasibo is राजस्थान की queen है, वो राजस्थानी म्यूजिक की. ठीक है, उनके पास बहुत सीक्रेट्स हैं म्यूजिक के. जुल्फी, उनके साथ आप और काम करें. और इतने प्यार से उन्होंने बात की कि मैं सुनता रहा और मैं रोता रहा. मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, बिकॉज आई हैडंट टॉक टू हर बिफोर. बट उनकी टॉक के अंदर भी एक ब्यूटीफुल सरेंडर ही था. मतलब उन्होंने खुल के नसीबो जी की इतनी तारीफ की कि मैंने कहा यार क्या बात है यार, कितनी बड़ी बात भी है, कितनी हमदर्द भी है और कितनी खूबसूरत बात भी है. मेरे दिमाग में मुझे लगता है कि सबकॉन्शियसली ना ये कोलैबोरेशन बन चुकी थी यार, बी ऑनेस्ट. लेकिन मुझे बस पता नहीं था. सो व्हेन थिंग्स started to happen, कोक स्टूडियो भी अब अपने पॉइंट पे आना शुरू हुआ कि मैंने करना है. तो द फर्स्ट थिंग आई थॉट ऑफ वाज कि यार एक स्टोरी तो स्टार्ट हो चुकी हुई है. सो आपदा जी, नसीबो जी की स्टोरी ग्रूव मेरा से स्टार्ट हुई. आपदा जी की कॉल आई. सो द यूनिवर्स एक्चुअली टोल्ड मी कि यार दीज पीपल नीड टू कनेक्ट बिकॉज द कन्वर्सेशन हैज हैपेंड. हो तो चुका है सब कुछ. तो so this was one idea that I wrote down कि आपदा जी, नसीबो जी together, because honestly it is already happening. I just need to surrender to the idea and I need to surrender to what the universe wants. So bas ho gaya. And when I said कि ये combination है, so there was this point जो बहुत लोगों ने कहा टीम में भी कि their voices are so different, how it's going to be a balance, and how can we create a musical personality that can somehow दोनों के लिए दोनों को निभाए, दोनों की आवाज़ों को, दोनों की इन टेक्सचर्स को. मैंने कहा बात तो ठीक है, बट बिकॉज़ आई हैड दिस बिलीफ इन माय माइंड कि ये होना ही ऐसे है, वैसे कि वो भी हम बना लेंगे, ठीक है. तो फिर वन ऑफ दीस डेज़ आई हैड टोल्ड माय सेल्फ कि मैंने आज ना ये बनाना है यार. I have a music personality for this. I have to make a music personality for this. And I woke up one day in the zid कि I have to make it, even though I did not want to work or think or do music. बस मैं बैठ के इधर ही बैठा जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, ठीक है. एंड ये मेरा पियानो है साथ पड़ा हुआ. इस पे मैंने कुछ चीज़ें की. ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है. आई लव दिस इंस्ट्रूमेंट. यू मस्ट हैव सीन इन बेसमेंट वगैरह इधर ही पड़ा हुआ, बिल्कुल ऐसे. तो मैंने शुरू किया कुछ बजाना. एंड व्हाटएवर आई वाज मेकिंग ना, वो सब का सब एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहा था ज्योति, जो मुझे पता था तू झूम की डायरेक्शन नहीं है. बट आई स्टार्ट मतलब मैं आई केप्ट ऑन डूइंग इट. और मैं एक अजीब सी डार्क नेगेटिव स्पेस में था. तो फिर शाम हो गई ये करते करते. आई टुक माय फ्रेंड, माय डॉग रेंजो फॉर अ वॉक. एंड मैं उसको लेके जब गया ना, तो वो पता नहीं थोड़ा सा मेरे लिए भी थेरेप्यूटिक था. एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबली के
मैंने ना अपनी इस फीलिंग से नहीं डरना कि मैं डार्क और नेगेटिव म्यूज़िक बना रहा हूँ, तो कुछ नहीं होता था। मैं जाके ये कंप्लीट कर दूँगा, ये डार्क और नेगेटिव ही कंप्लीट कर दूँगा। तो मैं गया, वापस इधर बैठा, वापस जब आया, अगेन ऑन द इंस्ट्रूमेंट, आई स्टार्टेड प्लेइंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स ऑन इट, और आई मेड अ ग्रूव व्हिच बिकेम द ला एंडिंग। जो ग्रूव आप उसमें सुनते हो तो झूम में वही ग्रूव है। वो करके एक और प्रोग्रेशन बनाई एंड उसके ऊपर मैं प्ले करना शुरू किया। तो मैंने जितनी डार्कनेस थी, नेगेटिविटी थी, प्ले करता गया। आधे घंटे के बाद आई प्लेड दिस लिटिल पैसेज व्हिच वाज सिंपल सा, बिल्कुल। अब नाउ यू हियर टू झूम अगेन, यू आर गोइंग टू हियर इट इन प्लेसेस दैट प्रोबब्ली अभी शायद रजिस्टर नहीं किया हूँ। बट इट इज़ दैट लिटिल हुक, जो म्यूजिकल हुक है, सिंपलेस्ट हुक है। बट यू नो व्हेन आई प्लेड दैट ना, आई ट्रांजिशनड automatically into this new world, which later became the Tu Jhoom world. राइट। Wow. सो आई केप्ट ऑन प्लेइंग, वो बीट बन गई, मैं मुझे गूज़बम्प्स होना शुरू हो गया, मैं बजाता रहा और मैं कुछ नहीं, बस मैं बजा के एन्जॉय करता रहा। मैं इतनी एक्साइटमेंट में ना, मैं यहाँ से उठा, मैं ऊपर सीढ़ियों पे जा रहा था अपने कमरे में, एंड आई स्टार्टेड हमिंग ता ना 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 ता ना 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 ना, एंड आई स्टार्टेड सेइंग तू झूम 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 झूम। अब ये अभी भी मुझे ये हालत हो रही है ये सोचते हुए। मैं Wow. और मैंने कहा यार ये क्या है? ये तू झूम। देन आई रियलाइज़्ड कि मेरे साथ हो ये रहा था कि मैंने अपने आप को मैसेज दिया कि तू झूम। वो जो भी मेरी नेगेटिविटी थी, या मेरा जो भी ग्रीफ था, या मेरा जो भी था, जो डार्कनेस थी या गम था या दुःख था, तो उसमें भी मैंने झूमने की कोशिश करनी है। मैंने उसको भी एम्ब्रेस करना है, राइट? एंड यू नो व्हेन दैट हैपेंड ना, अकेला था। व्हेन दैट हैपेंड, मैं इतना एक्साइट हुआ, मैंने सबसे पहले तो मैंने अदनान को कॉल की। मैंने कहा यार ये है, पता नहीं क्या है लेकिन ये है। तो वो उसको बहुत अच्छा लगा। कहता मैं फिर मैंने कहा बस फ़ौरन आ जा यार, फ़ौरन आ जा बस। तो फिर वो अगले दिन ही आ गया। एंड आई देन व्हाट हैपेंड, वो बहुत अच्छा प्रोसेस था उसका भी। वो आया, मैंने उसको कॉन्सेप्ट बताया। मैंने उसको बताया कि यार कोई ब्लैक नहीं है, कोई व्हाइट नहीं है, अम, कोई कुछ अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कुछ गम नहीं है, कोई खुशी नहीं है, जो भी है वो सब हमारी है। और हमने इस एरिया में ही लिखना है। हमने इस एरिया में हमने पिन पॉइंट करके ना ये बात नहीं करनी कि सुबह अलग है तो शाम अलग है। तो यू नो द ब्लैक्स एंड व्हाइट्स ऑफ लाइफ एंड द गम एंड खुशी ऑफ लाइफ, सबको एम्ब्रेस करना है, एंड दैट्स द थॉट। इस जो लाइन इस थॉट पे पूरी उतरेगी, हम कहेंगे यार यही है, ठीक है। कोई तो उसने डुअलिटी नहीं है, बस है, जो है वो है। है, ठीक है, और है। और दूसरी थॉट क्या थी, जो सबसे मतलब जहाँ से ये बात आई थी ना, वो एक था हज़रत अली का कोट। उस हुँ। कोट का एक पार्ट है, योर रेमेडी इज़ विदिन यू। अब जब ये बात मतलब ये मेरे ज़हन में ना उस बनाने से पहले कहीं न कहीं थी, सबकॉन्शियसली पड़ी थी, मुझे पता, ठीक है? और मैं सोचता रहा, और स्पोर्ट में ना आगे एक बात भी आती है कि ये तो योर रेमेडीज़ विदिन यू, और आपने ना उसको अपने अंदर ही ढूँढना है। तो मैंने बस थोड़ा-सा उस बात को इस तरह कर लिया कि अपने अंदर ढूँढना नहीं है, अपने अंदर झूमना है। वाओ! ढूँढने में ना कभी-कभी आपका मिशन बन जाता है। हाँ, आपने इसको मिशन के तौर पे नहीं लेना, आपने इसको एम्ब्रेस और सरेंडर के तौर पे लेना एक्सेप्टेंस। है। एंड जब ये बात मतलब मैंने अदनान से बात हुई है, तो अदनान उसके बाद के गया बाहर, वापस आया, "क्या ज़ुल्फ़ा ये सुने?" वो बड़ा एक्साइटेड है। "ज़ुल्फ़ा ये सुने।" इस तरह करके वो आता है हमेशा। एंड आई लव दैट एक्साइटमेंट। आई नो व्हेन ही सेज दैट ना, उफ़ यार आई एम मिसिंग दैट। ओह शिट! उफ़ ऑल वाओ! ऑल So he came to me and he said मीन्स कि he said कि "ज़ुल्फ़ी भाई ये लाइन है, ये कैसी है? पीड़ा नूं मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावां." And this हाँ, was the first line of the season, you know. This is how we started, with this embrace and with this level of healing. you hear a line like this, how do you keep it together? मतलब I don't, and you don't even try to keep it together. But it was like all that had happened for this line to exist in this universe. फिर ब्यूटीफुल। उसके बाद it took us 45 days. Every day there was sometimes 2 लाइनें लिख रहे हैं, 1 लाइन लिख रहे हैं, लेकिन हमें और साथ-साथ और गाने बन रहे हैं। बट जब ये गाना जो था ना, ये नैरेटिव जो था, वी न्यू फॉर अ फैक्ट कि इसने सब कुछ रिप्रेज़ेंट करना है। इसने इस नैरेटिव को भी रिप्रेज़ेंट करना है,
इसने साथ साथ आपदा जी की लाइफ को भी रिप्रेजेंट करना है, नसीबू जी की लाइफ को भी रिप्रेजेंट, साथ साथ उसने मेरी लाइफ को भी रिप्रेजेंट करना है, अदनान की लाइफ को भी रिप्रेजेंट करना, आपकी लाइफ को भी रिप्रेजेंट और करना, जो सुनेगा उसकी भी, हाँ। आपकी भी, बिल्कुल सबकी, राइट। अब ये बैलेंस रीच करते करते ना, और ये बैलेंस बहुत आर्टिस्टिक, बहुत सोलफुल, बहुत साइंटिफिक, बहुत सेंसिटिव, इसमें सब लेयर्स हैं, इसमें सारी लेयर्स हैं, इसमें कोई एक लेयर मिसिंग नहीं। और फिर जब हमने एक एक लाइन पे, बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जो हमने लिखी और फिर हमने नहीं यूज की, बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं, क्योंकि ये बैलेंस रीच करना हर एक लाइन में जरूरी था। अब इस तरह आपदा जी, मैं दीवानी कुछ ना जाना, मस्त होके गावा। अब दिस टाइम फ्रॉम मैंने ना अपनी एक लर्निंग्स की लिस्ट बनाई हुई है, यस, जबरदस्त। एक मेरी लर्निंग की लिस्ट है जिसमें ना मैंने लिखा हुआ है, मेरी जो लास्ट लर्निंग है वो है आई नो नथिंग। तो आई एक्चुअली ना, मैंने अदनान को वो अपनी लिस्ट भी खोल के दिखा दी कि यार ये देख ले, इसमें से भी कुछ तुझे अगर समझ आ जाती है। सो उसने वो आई नो नथिंग और आपदा जी की पर्सनैलिटी को मिलाया और उसने लिखा मैं दीवानी कुछ ना जाना, मस्त होके गाओ। Wow. बात ही खत्म नहीं हो जाती है। सो यू नो, when you ask of the process na of the surrender, it is not surrender ke you are designating work, that is not a surrender at all. You're collaborating, you're sensing with all of the people who you're collaborating with. You make one unified heart, you one make unified soul. That is the surrender. It's not like यार किसी को कह दिया कि आप काम करके ला दो, नहीं, शामिल हो, नैरेटिव की बात करें, एक एक अगर साउंड आनी है कैसे आनी है, किस तरह आनी है, उसकी बात करें, क्यों क्या है, बात कहनी है, और बात क्या कहनी है, राइट। अब इसमें मेरे लिए फ्रीडम पता है क्या है, अगर आप मतलब मेरे लिए कोलैबोरेशन फ्रीडम क्या है, वो टुगेदरनेस में है, जहां हर एक बंदा इंप्रूव कर, असली आजादी वो है, वो आपका माइंड आजाद उधर हो रहा होता है ना उसमें। और मुझे पता है फॉर अ फैक्ट, all of the people involved in Coke Studio have experienced so much now that their next journeys will represent that. It will that have a new happens. spirit of yes. असल में स्टोरी सारी मतलब मेरे लिए यही है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह सजन दसना था, ठीक है, अब मैं कोई रैपर तो हूँ नहीं, रैप मुझे नहीं करना आता, बट यू नो दैट रैप पार्ट जो अपना, बल्कि आई विल सेंड यू वीडियो ऑफ इट, वैसे ही भेज दूंगा। वो जो आतिफ का म्यूजिक मेलोडी रैप पार्ट टाइप है, वो आई रोट दैट मेलोडी फॉर हिम। खैर, अब आई एम नॉट काइंड ऑफ अ मेलोडी राइटर लाइक दैट, बट the fact that I had my heart open and I was listening to so many different ideas and all, and collaborating with people like Abdullah on one side, Action Zain on the other side, Sherry on the third side, Talal Fresh on another side, talking to Hassan Rahim, talking to the Talhas, talking to everyone, and it's so many inspirations, influences. मैं भी तो साथ साथ learn कर रहा था ना इसमें। So I was able to create that melody. अब एक तरफ तू की melody है, which is a completely different melody. एक तरफ आपकी सजन दसना कर रहा है, वो एक completely different चीज है, फिर एक तरफ फिर मिलेंगे की melody है, वो एक completely different चीज है। So when you start experiencing in collaboration ना, तो फिर आपका कुछ नहीं होता, फिर सबका ही सब होता है, आपके फिर अलग आप अलग ये चैनल्स खुल जाते हैं ना, यू ऑल्सो। वो कोलैबोरेशन की वजह से खुलते हैं कि आप इतने लोगों के साथ काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, और आपने दिल खोला हुआ है, ये है सरेंडर, और सबके फिर चैनल इस तरह खुलते हैं। फिर इसलिए कहता हूँ किसी का कुछ नहीं होता, फिर हम ये बना रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे टू डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम इट। हम बना इसलिए रहे होते हैं फॉर पीपल टू नाउ अटैच, क्रिएट देयर नैरेटिव्स, क्रिएट देयर स्टोरीज। माय सॉन्ग इवन जो लारी शूटी है, मैं अगर बताऊं मैंने क्यों लिखा उसकी, मैं अभी रो रो के पागल हो जाऊंगा अगर बता दूं कि मेरा रीजन क्या था। It's so emotional for me, but for other people it must be something completely different, but that's what matters more। जो मैंने लिखा, मुझे अपने प्रोसेस से अटैचमेंट करनी है, जो थी प्रोसेस से, ताकि मैं सच बोलूं, ऑनेस्टी से अपना इमोशन बयान करूं, but at the end of the day when the song becomes a reality, it's people belongs who to the people. define, yes, music for the people, it's sound of the people। so और anyhow, कोई भी क्रिएटिव वर्क जब एज अ लिसनर, एज अ व्यूअर, आई एम सेइंग, when you read it or when you listen to it, you then put your own story into it, and then it becomes yours in different ways that the creator will never know about. So when we yeah, heard Tu Jhoom, for example, and I immediately was crying in that reaction, because for me it was like the perfect combination of, what you want from a song. You want to feel like that is your story, that is your journey, that is your emotions and your feelings, and then by the time the song ends, you reach a
a place that is a better place than when you started listening to it. That better place could be of peace, it could be of healing, it could be of joy, it could be of surrender and acceptance. Yes. And when these two, you get these moments, then you have a classic, and you know it's a song you'll keep going back to and relating to. So I think that's why it worked. That's why it worked. And interestingly, ये बात भी है, और पता है जब इस तरह बन रहा होता है ना गाना, when you take that song to to the people who will be expressing this song finally, like to Nasibo ji and to Abda ji, this process is so important for them to also absorb it like that, like we have absorbed it. जब इतना ज़्यादा अटैचमेंट बनी होती है, इतना सा कनेक्शन बना होता है, और वो बड़ा ऑनेस्ट, ट्रू और सोलफुल होता है, तो फिर वो it reaches people. It reaches people. And I even remember the time when we went to Abda ji to make her hear it, and the smile on her face upon hearing the first 10-15 seconds was a real honest smile. Was that appreciation I can never forget, that honesty I can never forget. मतलब that blessing that she gave me, I can never forget. What she talked, मतलब ऐसी कुछ बातें उन्होंने मुझसे की, वो इतनी प्यारी बातें थी कि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं भूल नहीं सकता। वो इतनी प्यारी बातें थी। सो वो इतनी बड़ी बातें अपने बारे में, मतलब आदा जी की क्या ही बात है, नसीबो जी की क्या ही बात, वो दोनों इस लेवल पे हैं, इतने इंटरेस्टिंगली, मतलब कॉन्ट्रास्ट, बट स्टिल उनका इंटेलेक्ट का भी लेवल, उनका विजडम का लेवल, उनका बात करने का एक्सप्रेशन, वो सब इतना ऑनेस्ट है कि मुझे बस यही था कि हम इस ऑनेस्टी से उनके पास लेके जाए ना, तो वो उसी तरह समझे उसको, और दोनों ने उस तरह ही समझा, फिर दोनों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। जब हमने जो मेलोडी बनाई हुई थी, वो इट वाज शॉर्टर, बट नसीबो जी सेड इन द स्टार्ट कि जब ना पीना नु मैं सीने लावा ते मैं रसदी जावा धुप्पा देना लड़, तो उन्होंने कहा कि मैं इन पूरी लाइंस को, ये बहुत जल्दी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तोड़ के करूँ। सो देन वी मेड श्योर कि कुछ लाइंस हम रिपीट भी कर लें। अगर आप फर्स्ट वर्स पे देखें, सिमिलरली आपके आबदा जी के पार्ट के अंदर भी हमने रिपीट, क्योंकि ये उनकी फिर कंट्रीब्यूशन थी कि व्हाट इफ वी डू इट लाइक दिस, एंड आई रियलाइज्ड कि दे आर राइट। गाने को और ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी, नैरेटिव को और ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी, वो जब उस आइडिया को सीमेंट हो जाएगा लोगों के दिमागों में, अच्छा आप ये बात क्या कर रहे हैं, सो ऑल, एंड दिस वाज हैपनिंग 2 days बिफोर द शूट, इन द जैम। सो ये भी हुआ, और मतलब मैं बता रहा हूँ, ये एक बड़े खुले दिल का प्रोसेस था, और इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन, सबकी अक्रॉस द बोर्ड, सबकी कंट्रीब्यूशन। आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, बड़ी मजे की, वो बल्कि बीटीएस में देखी होगी मैजिकल जर्नी में, कि पसूरी के लिरिक्स हम एक दिन पहले लिख रहे थे, जनरली एक दिन पहले। I wanted to talk about that. और वो क्या ही प्रोसेस था, I was like, wow. और पता है मैं इतना सा भी परेशान हूँ, I was not worried at all, because I don't know क्या उस गाने में था, when I heard it for the first time, और ये बैक इन आई थिंक मार्च या अप्रैल की बात है, लास्ट ईयर, मुझे ना पियानो पे थोड़ा सा गा के भेजा सेठी ने, अली सेठी ने, एंड अभी इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि इस गाने से पहले ना मेरी सेठी से जो बात हो रही थी, when I told him that this is the new vision for CS and all, he got really excited, and I told him about Shegil, and I said that this is the person I feel you should be collaborating with, and I think with the two of you, it's going to be a song that people won't be able to forget, because your voice. How did you think? How did you think of that concept? यार ये अजीब बात है, I don't know how I think of it. I can try explaining. Shegil na, I had been following her journey for quite a long time, from the basement times. So at that time I knew she used to sing more in Urdu, more in English at that time. ठीक है, अब आते आते मैंने देखा कि उसका अपना उसने इंस्टाग्राम पेज बनाया, उस पे उसने अब जिस तरह का एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, समझ आ गई कि अब वो आज़ाद हो रही है, समझ आ गई कि अब वो फेयरलेस हो रही है, एंड आई वाज नोटिसिंग दैट, आई वाज ऑब्जर्विंग दैट साइड पे। मुझे उस वक्त ये भी नहीं पता था मैंने कोक स्टूडियो करना है, बस आई वाज एन ऑब्जर्वर, एंड आई कीप डूइंग दैट, आई कीप लिसनिंग टू ऑल दीज न्यू पीपल, जो कि सारा साल, मतलब मेरा स्काउटिंग जो है ना, वो ज्योति अभी भी चल रही है, 365 वो बिल्कुल वो चल रही है, ठीक है। और साथ साथ इतनी अच्छी बात ये कि देयर सो मेनी पीपल, ग्रेट पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु हेल्प मी स्काउट एज वेल नाउ। ये आपने सुना है इसको, आपने इसको सुना है, तो मैं कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं किसी को सुन रहा होता हूँ, तो 10 बंदे मुझे आए कहते हैं कि आपने इसको सुना है, मैं कहता हूँ क्या बात है यार। सो यू नो ऑल ऑफ दिस इज अगेन वन यूनिफाइड हार्ट, तो कुछ करना चाहते हैं ना, तो वन यूनिफाइड हार्ट हो ही जाता है। सो यूनिवर्स करती है ये। तो खैर शेगिल को मैंने आवाज़ सुनी थी, सेठी की भी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई थी। आई वाज लिसनिंग टू हिज न्यू वर्क व्हिच वाज मोर एक्सप्रेसिव देन एवर, राइट? एंड
he was doing his own music as well now, writing his own lyrics. मुझे उन दोनों की पर्सनैलिटी, मतलब मैंने ऐसे स्लाइड भी बनी हुई थी जो प्रेजेंट की थी, अभी गाना नहीं बना था, एक साइड पे सेठी एक साइड पे शेगिल, वो स्लाइड बना के मैं इतना खुश हुआ था, क्या जबरदस्त लग रहा है क्योंकि इट वाज जस्ट लाइक इट्स लाइक मेंट टू बी वाली सिचुएशन थी, राइट? एंड एंड आई हैड अ फीलिंग कि उन दोनों की आवाज का टेक्सचर है ना, वो इंटरेस्टिंगली सिमिलर है और इंटरेस्टिंगली कॉन्ट्रास्टी है, ठीक है? और ऐसा है कि वो एक दूसरे की बात को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो वो बात छोड़े अगला शुरू कर दे। जब और फिर कुछ आवाजें ऐसी होती हैं ज्योति के, जब यूनिजन में होती है ना, गाती हैं, वो एक नई आवाज बना देती हैं। राइट। आई हैड फीलिंग कि जो कोलैबोरेशन है, ये मिलके कोई पार्ट गाएंगे ना, तो वो मैजिकल होगा, ठीक है? क्योंकि उनके टेक्सचर्स कंबाइन ऐसे करते हैं कि अपना भी रखते हैं और सिमिलर फ्रीक्वेंसीज भी ढूंढ लेते हैं, एंड इट डजंट हैपन so easily, but I like figuring these kind of collaborations out, right? So जब ये आप मुझसे पूछ रहे थे कि हाँ शेगिल और सेठी का, तो मैंने बस सेठी को ये बताया अली को कि यार आई थिंक शी इज द पर्सन विद whom you should collaborate, और हम ये करते हैं। फिर उन्होंने मुझे गाना भेजा थोड़ा सा, कहते हैं जुल्फी ये है। अब मैं गाना सुन के इतना एक्साइट हुआ, और मुझे भी अभी तक समझ नहीं आई कि इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, मैं अपना वॉइस नोट सुनता हूँ ना, वो एक बहुत डेडली एक्साइटमेंट थी। इट्स लाइक के मुझे क्या हो गया, मैं इतना एक्साइट कैसे हो गया हूँ, बट वो जेन्युइन थी। उसमें मैंने उनसे कहा कि अली ये गाना लोग सुनेंगे, उनको दे वुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हिट देम, दे विल गो मैड ये जबरदस्त है, ये एंड आई कैन इमेजिन यू एंड शेगिल इन इट और सारा कुछ, और बहुत एक्साइटेड हुआ। फिर मैंने कॉल की अली को, उनसे बात की, मैंने कहा दिस हैज द चांस ऑफ गोइंग ग्लोबल, दिस सॉन्ग विल गो ग्लोबल, इसमें अंदर ही सब कुछ है, अभी कुछ आप बना नहीं था, ठीक How है? did you know? I आई know. डोंट नो ज्योति, आई ऑनेस्टली आई कैन नॉट पिन पॉइंट हाउ, बस मैं आई वाज प्रोबब्ली जस्ट लिसनिंग वेरी इंटेंटली Your ओवरऑल creative द वाइब, instinct is so, yeah, it's in tune. and you have to do that, right? So बस वहाँ से फिर बात शुरू हुई। We got Abdullah Siddiqui on board. He started making the music arrangement for it. I got Sherry on board. Sherry made the guitar arrangement for it, and then some melody portions बनाए हुए थे उन्होंने गाने के, तो सारे मेलोडी पोर्शंस अली नहीं बनाए हुए थे, बस कुछ कुछ वो नहीं, उस पे बालामा पे जो बजता है Paglama, mandolin, दोनों, हाँ। ठीक है, हाँ वो पार्ट्स इस तरह के कुछ बने हुए थे, राइट? Okay. एंड वो सेठी नहीं ये सोचे हुए थे कि मेलोडी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, बट द फैक्ट दैट वी स्टार्टेड इंक्लूडिंग ऑल दीज वर्ल्ड इंस्ट्रूमेंट्स ना, वो उसके ग्लोबल नैरेटिव पे बिल्ड कर रहा था। And I wanted that these new textures should come in and surprise people at every moment. For example, the same melody being played on an instrument that they have, heard before, like a flute or like a rubab. It's not a new texture. It cannot surprise people that much because of the melody as well. It has to marry in a way where it's just fresh, new, exciting, and it comes at a point where it can, further the story. Yeah. यहाँ तक इस तरह पे बनता रहा। I think Abdullah made a killer beat. He made, the sounds that he selected. और वो बहुत ही interestingly गाना modern हो गया, लेकिन rooted भी रहा because what Sherry was doing in it and all of that. Yeah, वो सब कुछ वो कह रहा हूँ, it's a combination. I'll be honest. फिर उसमें शेगिल contribution भी है। जब हम बना रहे थे ना, तो there was this melody जो कि अभी शेगिल की हमने नहीं बनाई थी, अभी नहीं बनी हुई थी, right? तो एक दिन आई वाज सिटिंग एंड आई वांटेड कि शेगिल की मेलोडी थोड़ी सी सेठी की मेलोडी से फर्क हो, जो उनकी वर्स की मेलोडी है। जिस तरह आपकी तो है ना, और शेगिल की हमने चेंज की, तो आई जस्ट थॉट ऑफ दिस मेलोडी, ना 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 ना, ये उस वक्त मैंने सोची, मैंने सेठी को भेजी, सेठी टू 24 hours and said कि यार this works. Then I called शेगिल as well. शेगिल के साथ गाई उस मेलोडी को, और उसके साथ मिलके, शेगिल के साथ मिलके हमने एक स्टेप और इवॉल्व भी किया, वो जो ऊंचा जब जाता है, राइट? सो वो शेगिल के साथ बैठ के किया। शी सेड कि हाँ इसको हम इस तरह करते हैं, फलाना करते हैं। अगेन एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड, एंड देन वी गॉट सेठी ऑन अ वीडियो कॉल। तो उसने कहा ये जबरदस्त हो गया काम, बिकॉज ही हैड मेड सच अ वंडरफुल सॉन्ग, जो इतना जबरदस्त गाना था कि आप सुनते साथ ना आपको होता था कि मैंने you need to express something when you're listening to it, like either you dance, either you start singing along, so it does something to you. And as I said ना, मेरा एक सबसे important role था कि मैं listener बन गया था, एक listener, one unified listener, right? And I was trying to think, act like one. And फिर वो universe का है कि वो वही again, you feel like this and you give it your all, and everybody gave it their all, but when it starts happening in a way कि जो सोचा वो हो रहा है हम सब ने, it still feels amazingly surreal. I mean, No. It feels बहुत magical, surreal no? feels,
वो मैजिकल है, ठीक है। और वो इतना मतलब वो डिस्क्राइब नहीं आप कर सकते हो। मैंने बहुत कोशिश की है, मैं अभी भी कोशिश ही कर रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि क्या है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना, दे आर, this is collaboration, this is the surrender, this is the acceptance, the way we created all of this together. Yeah. So it's a universal thing, it's a community thing, it's not a singular thing coming from one person, it's coming from everyone. I think this has been building in your personality for so long, because I remember आपका एक EP के टाइम का एक इंटरव्यू मैं देख रही थी, और उसमें आप कह रहे थे कि art is not just coming from personal experience, it's also coming from observation. It can also come from just being a listener, and that's showing so beautifully even now. So I don't even remember the interview कौन सा था, but I'm so मैंने बहुत happy you have रिसर्च seen करी it. है. हाँ, बहुत रिसर्च की है, सही बात है। मुझे नहीं याद, but it seems like something that I could have said, and wow, आपने एक और मतलब I बात बोली है, remember. which was I just need a moment, give me a moment, I want to get into it completely and I want to own it. और आपने बहुत अच्छे से किया है through this season, because I was talking about it in one of my videos कि Zulfi's got these micro emotions and micro moments that he's tapping into. You know, हर एक song का जो thought था आपका कि ये campaign है, एक narrative है, एक story है, एक बात कहनी है, तो वो उस moment पे you frozen in even to Jhoom या Pasoori और फिर मिलेंगे या मेहरम, In every, yes, all of और them. and you know what, the thing is कि हर इमोशन के अंदर माइक्रो इमोशंस होते हैं, और वो टैप करते हैं तो फिर वो यूनिवर्सल हो जाता है सब कुछ, वो पूरा प्रोसेस, उसका इम्पैक्ट भी यूनिवर्सल हो जाता है। अब जिस तरह अली सेठी उसकी स्टोरी की भी ना यूनिवर्सल हो जाती है, सॉरी. स्टोरी भी, अब पसूड़ी में भी अगला वा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू, it comes from a real place, it comes from a real place of something that happened, and against it, against that thought that was in his head, he wrote those lines, and then he talked about कि बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए आर्ट। तो गाने ने क्या किया, यही किया। Yes. So when it comes from a real place ना, it is so powerful कि हम imagine नहीं कर सकते, So हम imagine नहीं कर intent, are you reaching that intent? And you are, because everyone has contributed to the intent. बिल्कुल। फिर वो बहुत पावरफुल हो जाता है ना, जो कम्युनिटी इम्पैक्ट करती है ना दुनिया पे आइडियाज के थ्रू, वो सिंगुलर पर्सन नहीं कर सकता। सिंगुलर पर्सन कैन, उसका विजन हो सकता है, वो कैप्टन कर सकता है शिप को, बट वो इट हैज टू बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट फॉर अ बिग चेंज टू हैपन। लिसन टू एनी सॉन्ग एवर दैट डिड समथिंग, इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट from everyone that was involved in it. नाम भी लिखे रह जाते हैं। Shape of You सुने, it's one of the biggest hits ever in the world, right? There's so many names that you will see in the credits. Why? Because this is what a collaboration is. और वो भी by the way global है. If I'm now talking about it, the song Shape of You, it has an African groove to it. Even it has a tribal vibe to it. The melody, the music कहाँ से आई? वो गाना का आप पहली दफा सुनते हो तो outrightly आप ये नहीं कह सकते हो कि इसमें ये वाला groove है. But the sense जिसने बनाया एड शीरन ने मिलके जिन लोगों के साथ, ये डिस्कशन हुई हो कि लेट्स हैव अ डिफरेंट ग्रूव, लेट्स गो टू ट्रैवल करते हैं किसी और कॉन्टिनेंट के म्यूजिक से, हम ऐसा आइडिया अपने आप के लिए इंस्पायर करते हैं कि वो यूनिक डिफरेंट हो जाए, फिर वो गाना देखे ना, वो इट्स अ वर्ल्ड हिट, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक जगह की, इट्स अ वर्ल्ड हिट। सो व्हाट यू पुट इनटू द थॉट यू पुट इनटू समथिंग, एंड for an expression to be universal, if you do it right ना, then फिर ये होना ना कि ये इस गाने का किसी का ग्लोबल होना या दिलों तक पहुंचना, ये कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी है, एंड सो मेनी कल्चर्स हैव नॉट प्रूवन इट। आई मीन अफ्रीका प्रूव्स इट विद ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, विद देयर कोलैबोरेशंस। के-पॉप हैज, मतलब किसी अच्छा लगे ना लगे एक फर्क बात है, बट दे हैव क्रिएटेड और मैन्युफैक्चर्ड और व्हाटएवर डन समथिंग व्हिच इज नाउ रनिंग अलोंगसाइड ऑल स्टार्स इन द वेस्ट and their music narratives, so they have done that as well. So when that can happen, तो हमारे मुल्क से क्यों नहीं, हम या हमारे कल्चर से, हमारे सब कॉन्टिनेंट से हम ये स्टोरीज क्यों नहीं बार बार दुनिया को दिखा सकते हैं? हम बड़े, वी आर वेरी रिच इन कल्चर, एंड नॉट जस्ट रिच, वी आर सो डाइवर्स इन कल्चर। आप इवन पाकिस्तान भी देखें ना, आप नॉर्थ में जाएं, यू कैन हियर फ्लूट, इट्स कॉल्ड तूतैक, इट साउंड्स लाइक अ चाइनीज फ्लूट। You then find an instrument called the yagini, which sounds like a Turkish instrument. सो अब ये चाइना, टर्की, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स अगर और बनते हैं, पाकिस्तान में बनते हैं, बस कम लोग बनाते हैं। अब मतलब ऑब्वियसली these sounds are rare, these textures are rare, but the point is they all exist here ना, तो ऑलरेडी ग्लोबल इम्पैक्ट तो हुआ भाई यहाँ, आपने उसको अनलॉक करना है,
उस पोटेंशियल को, और लोगों को वो साउंड सुनानी है. सो दिस ग्लोबल थिंग इज ऑलरेडी हैपनिंग, और हर आप मतलब हर मुल्क में, हर कल्चर में. और अली सेठी ने बोला भी था बीटीएस में कि वी हैव टू जस्ट टेल शो द वर्ल्ड दैट बिफोर यू थॉट ऑफ इट वी वर इट. वी वर क्या इट, बात है. है ना? बिल्कुल, 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 वही. क्या बात है. तो बस इसमें ये हाँ. कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है ना, ये कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है, ये एक इंटेंट, नीयत ज्योति, मैं बताऊँ, द वन थिंग दैट आई आउट ऑफ दिस ऑल इज़ नीयत. खत्म कर देती है बात, वहीं से बात शुरू होती है, वहीं से बात खत्म होती है, बस. बाकी नीयत ठीक हो तो फिर आप टीम भी ज़बरदस्त बिल्ड होती है, आइडियाज़ भी ज़बरदस्त आते हैं, कोलैबोरेटिव आइडियाज़ भी ज़बरदस्त होते हैं, फिर पता नहीं फिर क्या होता है, फिर वो रियल मैजिक होता है. आई थिंक नीयत इज़ द फर्स्ट इंग्रीडिएंट ऑफ रियल मैजिक. Absolutely. और नियत से फिर वो आपका you have the what you've done in this season especially is the concept of narratives, which I think is again going back to what the culture has always been about. Art, music, any art is about telling a story. And I think Yes. along the way people kind of forgot that, music making then became a business and it became a lot of other things, other layers. You've gone Very. back to going to a narrative, a story, and I feel like um, that is why people are connecting so strongly. They're finding their own stories in the stories you're telling. बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है. So, we have gone back to expressing feelings, शायद. Expressing honest feelings through stories. Or, this reminds me of how we started creating what became Mehram. Oh, please tell us the story. अच्छा, Mehram ना, again, my way is that we begin everything with a conversation. And no music personality, no nothing, just a conversation. So, in all the discussions that we were having as a team, we knew that we need a song which has to be heartbreaking, and that gets that emotion out in a way, that in a way that just moves you, that yes, bilkul, that makes you cry, but it also is able to channel your grief. ये पता था, इतना डीप होना उसका ज़रूरी है. ठीक है. अच्छा, अब ना जब ये सब बातें मैं सोचता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में जो एक नाम आया वो असफरी था, कि इस बात को लिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए. सो आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई कॉल्ड हिम अप, आई सेड कि आ जाओ, बात करते हैं. And I told him this narrative, and we heard a few songs which were based on this narrative, but they were not showcasing one side of the story. They were showcasing the other side as well. Like when there is a breakup, या when there is a खत्म, finish, पता नहीं finish होता भी है कि नहीं है, क्या होता है, जो भी एक डिस्कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट जो भी है, उसमें एक पर्सपेक्टिव नहीं होता. ज़रूर एक जो बंदा उसको फ़ील कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, तो वो समझ जाता है, लेकिन दूसरे की फीलिंग को समझता है? या दूसरा बंदा बन के क्या वो फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है? दिस इज़ व्हाट आई आस्क्ड असफर टू डू. एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, then express the other person's feelings too. And at that moment, he broke down, I broke down. And we broke down so bad that I don't even want to, I don't want to talk about it a lot, but वो ऐसा था कि वो समझ आ गई कि यार, it has moved us, the narrative, and he was like कि I'm not ready for this. I'm not ready to write the other perspective. So मैंने कहा शायद फिर यही वजह है कि we are meeting today to talk about it. And I told him, I think if somebody can write about the other's perspective now, the other person's perspective, and probably that's you. So he said, I'll do it. I'll write. So वो एक ऐसा moment था कि जहाँ I knew कि he does not want to visit that space. But I'm asking him to visit that space, यार. मुझे भी अजीब सा लग रहा था, और मुझे साथ ये भी लग रहा था कि there is no other way, he also has to go through it. फिर he went back to चित्राल, and then वो एक अलग मैजिक है, वो जगह, पहाड़ और ग्रीनरी और मौसम, और वहाँ वो वहीं पला बड़ा हुआ है ना, तो उसका लहजा, उसका एक्सप्रेशन, उसका पोएटिज्म बिल्कुल फ़र्क है
बाकी सबसे। वहाँ बैठ के उसने फिर लिखना शुरू किया, एंड देन व्हेन ही रोट दैट लाइन, "तू महरम ना रहा मेरा।" मैं सुन के मैंने कहा, मतलब मैं तो उसने लाइन लिखी, भेजी, फिर गा के भेजा। मैंने कहा हो गया काम। और ये वो एक्सप्रेशन है जो दोनों का है। ये दोनों का एक्सप्रेशन है, ये एक का नहीं है। इसके अंदर भी कोई सेल्फिशनेस नहीं है। इसके अंदर भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स Stating. बता रहे हो। फिर दूसरा एंड भी, अब वो जब अरूज की लाइन लिखनी थी, वो भी आसान काम नहीं था। Wow. That was, नहीं था। yeah. एंड दैट इज़, मैं बात बताऊँ, वो बिकॉज़ इन द प्रोसेस जब मैं गुज़रा ना, तो वो समझ आती है कि रियल मैजिक सब है उसमें। सब लाइन्स, सब एक्सप्रेशन, इमोशन, बट असफर राइटिंग फॉर अरूज टू एक्सप्रेस द अदर पर्सपेक्टिव इज़, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता वो क्या है। वो आसान काम नहीं था। कहाँ से चैनल किया हो? कहाँ से उसने चैनल किया। खूबसूरत बात ये है कि चैनल किया। आपकी बात से कनेक्ट कर रहा हूँ कि इतना जो बिज़नेस बना देते हैं ना, कि म्यूज़िक एक बिज़नेस बन गया, म्यूज़िक एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप एक तरीके से एक डायरेक्शन बन गई, सारा कुछ। तो इस पूरी चीज़ बनने में जो चीज़ नहीं, जो हम भूल गए ना, वो स्टोरी टेलिंग थी। सही कह रहे हो। और स्टोरी टेलिंग आती है इमोशन से, फीलिंग से। ऑल द स्टोरीज़ दैट वी रिमेंबर आर द स्टोरीज़ जो हमें इमोशनली कहीं न कहीं से ट्रिगर करें। खूबसूरत कोई मेमोरी के थ्रू, या मतलब एक्सप्रेशन इतना प्यारा हो। तो आई एक्चुअली वांटेड टू गो बैक टू दैट स्पेस। और मुझे पता है कि असफर इज़ अ हाइली सेंसिटिव पर्सन, और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएटिक लिरिक राइटर्स इन द कंट्री। आई नो दैट। सो बस उसने फिर वो लिख दिया, वो होता रहा। और जब वो फिर फाइनल, मतलब मैंने फिर अरूज को भी भेजा कि यार ये ही रोट फॉर यू, वो इतनी खुश हुई। उसने जब फिर गा के भेजा, एंड अरूज वाज़ समवन जो, जिनसे मेरी ना बातचीत रहती थी, पता है किस तरह? शी लव्स, मतलब शी इज़ आल्सो रिकॉर्डिंग इंजीनियर, सो शी लव्स द माइक्स एंड एवरीथिंग, एंड आई लव माइक्स एंड एवरीथिंग एज़ वेल। सो उनका और मेरा ना ये बहुत एक कन्वर्सेशन होती रहती थी, माइक्स के बारे में, माइक प्लेसमेंट्स के बारे में, और सारी ये गुफ्तगू बहुत होती थी। सो आई लव दैट नर्डिज़्म इन मी। और मुझे कोई और ऐसा मिल जाए, मैं उससे बहुत बातें करता हूँ टू एक्सप्रेस दैट ना। तो तो ख़ैर, फिर लेकिन उनकी जर्नी ना बड़े इंटरेस्टिंगली फ्लो कर रही थी, और वी कुड सी कि हाउ शी इज़ बिकमिंग ग्लोबल। सो एक दिन डिस्कशन में अब्दुल्ला साहब बैठा हुआ था, और जब ये मेहरम का नैरेटिव हम क्रिएट कर रहे थे, जब मतलब हो गया था और असफर लिख रहा था, एंड आई वाज़ मेकिंग अब्दुल्ला हियर इट एज़ वेल। सो उसने ये बात ना एक सोची भी कि अम, अरूज वाज़ ऑलरेडी इन आवर लिस्ट, बट ही सेड कि मेबी हर वॉइस विल सूट दिस नैरेटिव। ठीक है? एंड बहुत लोग हमने बाय द वे कंसीडर किए, ठीक है? कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उसमें उसमें अरूज का नाम भी जब आया, तो वहाँ ना मुझे लगा कि वैसे बात तो ठीक है, कि हर वॉइस विद असफर्स पोएट्री can be magical. Her expression with Aswar's poetry can be magical. So then, by the way, I sent her the melody, and she sang it, sent it back. वो इतनी डिफरेंट थी, इन अ ब्यूटीफुल वे, कि पहले मुझे समझ नहीं व्हाट हैज़ हिट मी। तो मैंने उनको भी यही लिखा। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई व्हाट हैज़ हिट मी। और मैं एम्ब्रेस भी पूरा नहीं कर सका, बिकॉज़ मैं उसी के औं में था कि ये हुआ क्या। फिर लेकिन आफ्टर 2 डेज़ आई न्यू कि मेहरम इज़ असफर एंड अरूज। 100%, और कोई हो ही नहीं सकता, और कोई हो ही नहीं सकता। एंड उसका तो ख़ैर तब You were मैजिकल right. था, वो वीडियो का देखो। हुँ? You were right, because when we heard it, we were like, wow, these two voices go perfect together. और खूबसूरत बात ये है ना कि जब आप इकट्ठे बैठ के टीम में काम कर रहे होते हो ना, सो देयर आर पीपल हू आल्सो गाइड यू इंटू द राइट डायरेक्शन बाय गिविंग यू चॉइसेस दैट माइट जस्ट वर्क। यू नो, Wow. Abdullah, Action Zain, Sherry, even Murzi. Murzi is one of the directors. He was also part of the think tank. ये सारे वो लोग हैं यार, जो बड़ा अरमान, they all become sort of like one spirit, एक बन जाती है ना, one soul। फिर एक जैसा सोचना शुरू हो जाते हैं। We give each other great ideas and then everything happens again। वही surrender, collective surrender, और चीजें हो जाती हैं one way or the other। खैर, हर गाने की बहुत लंबी स्टोरी है, पता है। Oh, okay, wow. But जो then Aruj came on board and we saw what happened. I could not ये sleep आरुष ने after I तो heard that song. completely understand। और उसका म्यूजिक पर्सनैलिटी भी, अरेंजमेंट भी, जो अब्दुल्ला ने उसमें चीज़ें ऐड की, वो भी ऐसी थी जो आपको उस लिरिक्स से दूर नहीं लेके जाती। इनफैक्ट दे पुल यू इवन डीपर इनटू द नैरेटिव। उसकी सिंप्लिसिटी ऐसी थी।
deeper into the narrative, and बस फिर वो पता नहीं बनते इनफैक्ट वो गाना ऐसा हो गया कि जब उसका एक दरमियान वाला पार्ट था, ब्रिज दरमियान वाला, वो जो मैं सुन रहा था सभी तो सुन सका ना कभी, Yes. लफ्जों की बात, उलझीन ख्वाहिशों में दिल का मकान आ रहा। I'm not a poet at all, honestly speaking, but because in that process I was working with Aswar, I was able to write these lines. Oh. I also didn't know कि मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, but एक जो मोल्डेबल ब्यूटी है ना प्रोसेस की, कोलैबोरेटिव प्रोसेस की, कि आप वो फील और सेंस करना शुरू कर दो, तो फिर आप यू आर एबल टू चैनल दैट और अनलॉक दोस साइड्स ऑफ योर्स दैट यू डिडंट नो कि इस इंटेंसिटी में वो एग्जिस्ट करती हैं। तो ये भी हो गया। सो मैं तो ऑनेस्टली आई समटाइम्स फील के आई हैव मेथड प्रोड्यूस्ड द होल थिंग। कभी-कभी ऐसा लगता है कि आई वाज प्लेइंग दीस डिफरेंट रोल्स फॉर डिफरेंट सॉन्ग्स एंड it's also very difficult to get out of that zone. That's why I think it's that emotional for me. Or But just letting the inspiration take over, no, in every moment. yeah, simply put, बिल्कुल Basically. यही था। तो खैर Uh-huh. yeah. But I have to say, like for this, for Mehram especially, because it left you in the hopeless state. It didn't give you any hope at the end. But the beauty of it was, like you said, it made you confront your pain, and it delivered you through it. But it also left you, okay, I've confronted it. Now I'm here. It's done. Mm-hmm. Which is exactly what you did with Asfar. You asked him to go through it. He wasn't ready to. You know? And then So, everybody went through it. and then everyone went. Everybody went through it. And the way they went through it was how actually, first of all, Aswar has gone through it. Exactly. इससे प्यारी बात क्या है यार? I mean, इससे प्यारी बात क्या? इससे कमाल बात क्या है? सबकी अपनी फीलिंग्स हैं, लेकिन वो अब उसकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड कर रहे थे, और बहुत लोग जो कि इस फीलिंग को नहीं जानते थे, वो भी इस फीलिंग को जान गए। और जो इस तरह की फीलिंग से गुजरे हुए हैं, उनके लिए वो इन वन वे और द अदर वो ग्रीफ चैनल करके थेरेपी थी। Exactly. Yes. और वो पता है जो हम सबके लिए भी थी यार। हम पूरे प्रोसेस में हम सारे इकट्ठे ना, हम इतनी दफा रोए हैं सारे कि मैं नहीं बता सकता। और इजी रोए हैं, मतलब हमने इस तरह सोचा ही नहीं कि बैठे हैं इकट्ठे एक चीज देख रहे हैं। तू झूम था जैसे ऑडियो फाइनल की, मैं अब्दुल्ला बैठे हुए रो रहे हैं, ठीक है, और इजी कोई मसला नहीं, हम खुल के रो रहे हैं। वीडियो देखी, हम रोते हैं। Beautiful. हम इवन मतलब हम नेड़े बस और ठगियां पे भी रोए हैं, खुशी में सब एक्शंस हैं। मैं Nice. शेयरिंग सब, मतलब क्योंकि वो इमोशन ही ऐसा है, वी कांट। But joy also makes you cry. Yeah, You are like, I'm so happy. you're right. So खैर anyhow. So I want to ask you, एक आपने कहा था एक और इंटरव्यू में पुराने में 2016 का है, where you kind of foresaw the mixing of electronic music with traditional sounds, and you were like, it can create a new hybrid which can also be our own. And you said this back then, and अब 6 साल बाद we're seeing it. You know, so it's amazing to me. But I want to ask you कि a lot of people then, after the first 2-3 songs had released, people were saying ye coke studio, you know, there was a little bit of criticism, people saying ki ye coke studio nahi hai, traditional hamara jaise hota aaya hai, wo sab. Talk to me about that whole thing. Pehle to ki aapne kaise decide kiya ye hybrid create karenge, aur fir how did you take the feedback, all kinds of feedback? Okay, see, मेरी अपनी ना पर्सनल जर्नी ने मुझे एक बात बताई है कि एट द एंड ऑफ द डे ना कोई जॉनरा है नहीं म्यूजिक का। Yes. सही है। Yes. Every. साउंड्स हैं, टेक्सचर्स हैं, वर्ड्स हैं, एंड यू हैव टू merge them in a way in which they become heartfelt, or they become something that people अपनी स्टोरी से रिलेट कर लें। It's expressive, it's real, it's honest. And that is how, if you notice, that is where the world is now right now. If somebody like Billie Eilish in her bedroom can create a world-winning album with a musical personality that nobody had heard before, but still becoming that famous, still touring the world with that, what does it tell us? It tells us that stereotypes are becoming extinct. Yes. So उसकी acceptance भी जरूरी है। अब I agree. अब उसमें, अब मेरी अपनी जर्नी में मैंने इतना म्यूजिक पिछले ऐसे सुना, लोकल भी, ग्लोबल भी, और इतना इंटरेस्टिंग सॉन्ग राइटर्स को सुना,
नए भी लोग, जिस तरह यंगस्टर्स हैं, मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है, मैं जेन्युइन फैन हूँ उनका, जिस तरह वो लिखते हैं, जो उनकी स्टोरी है, जिस तरह वो सोचते हैं, जिस तरह के वो हैं यार, वो आते हैं ना, पता नहीं मैं उनको देख के मुझे क्या होता है, मैं इतना इमोशनल हो जाता हूँ ज्योति, मुझे समझ ही नहीं आती पता नहीं क्या हो जाता है। आई डोंट नो, आई मीन इट्स लाइक देयर समथिंग इन देम दैट आई फील रियली कनेक्टेड टू। अभी भी ना, मतलब मुझे याद है कल मेरी यूनुस से बात हो रही थी, तो वो जब लिख भी रहा होता है ना टाइप करके, तो मेरे ज़हन में उसकी शक्ल आती है कि ये बात ये बोल कैसे रहा होगा मुझे, इवन सेम विद अंजुम। सो मेरा इस तरह का उनसे कनेक्शन है, और मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाया कि यार क्या है, बस मुझे उनका लिखना सब कुछ इतना पसंद है, एक्सप्रेस करना। सो व्हेन यू स्टार्ट हियरिंग दीज नैरेटिव्स, व्हेन यू हियर समथिंग लाइक गुमान, आपका और पक्का हो जाता है यकीन यार कि दो लड़के, उन्होंने एक बैंड बनाया, उन्होंने म्यूजिक करना शुरू किया, उनके पास कुछ ये नहीं था कि कोई रिकॉर्ड लेबल है या कुछ है, उन्होंने बस बनाया, दिल से किया, और पूरी दुनिया को पता उसका। वो गाना परफॉर्म करते हैं, एक एक बंदे को पूरी किताब है वो गाना, वो पूरा पता होता है यार, एक एक लाइन साथ गाते हैं। तो बात समझ आ गई कि ऑनेस्टी, ट्रू सेंटिमेंट, रियल सेंटिमेंट, ऑथेंटिक सेंटिमेंट का कोई जॉनरा नहीं होता, वो बस सच होता है। सो ये एक मुझे समझ आ गई थी कि जॉनरा लेस होना है, और ये भी समझ आ गई थी कि हर गाना फर्क होगा। क्यों? एज यू सेड, कैंपेन है, सेंसिटिविटी को चैनल करने की कैंपेन है, इनिशिएट करने की कैंपेन है, इमोशंस को अपने एक्सप्लोर करने की कैंपेन, इस आर्ट से मजीद आर्ट बने, इस बात की कैंपेन है, अपने आप को डिस्कवर करने की कैंपेन है, न्यू जॉनरास को भी डिस्कवर करने की कैंपेन है, न्यू नैरेटिव्स को, न्यू वर्ड्स को। अब जब ये समझ आ गई ना, तो ये तो मैं आपको बताऊं, देखें, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट कि इस बात का पता था कि हम 13 साल की लेगेसी को आगे भी लेके जाना है, थोड़ा साइडवेज भी लेके जाना है, और डाइवर्सिफाई भी करना है, और ग्लोबल भी करना है, और इस जनरेशन को भी कनेक्ट करना है, पुरानी जनरेशन से भी नाता नहीं जोड़ना। तो पता था कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि हर बंदा कहेगा बाजी का कमाल। ठीक है, ये बात तो होगी कि यार कि मुझे किसी को वो वाली आइडियोलॉजी पसंद है, फेयर इनफ, क्यों नहीं, पसंद आ सकती है। बट दिस वाज अ विजन व्हिच वाज ट्राइंग टू टेक द इनिशिएटिव directly मजीद to people's hearts, directly मजीद to global hearts as well, कि this is the progressive side of art, this is the progressive side of Pakistan. And we also did it very interestingly, if you notice, to Jhoom, when it starts, yes, it looks because it's shot on film, so it's very cinematic or sarko, it starts dark like the old Coke studios, and within the 30 seconds you see how the lights lit up and you're introduced to the new world of Coke studio. Right. You are introduced to theatrics, dance, you're introduced to this beautiful space that has been created, you're introduced to how the musicians are standing, you're introduced to a new space altogether, new art altogether. And that is the transition that we did in 30 seconds. From that, and that was Ishan Parvez. When he thought of the concept, उस वीडियो का, उसने कहा कि यार ये करते हैं, और इतना सा मुझे ये नहीं शक था कि ये नहीं करते, मैंने कहा यही है, we have to transit it like that, so for people, तो हम उनके सामने इस तरह उसको जो अनरेबल करें वो इस तरह करें, जो रील करें इस तरह। Really? Yeah. Beautiful. हाँ, अब और वो आबदा जी की आवाज़, नसीबू जी की आवाज़ ऐसी है जो कि दुनिया, पाकिस्तान ऑलरेडी ऐसे कनेक्ट करता है उससे कि जब उनको सुनेगा ना, तो उनको लगेगा हाँ, ये हमारा वही कोक स्टूडियो है। बट साथ-साथ हम क्या कर रहे हैं, साथ-साथ हम ये भी बता रहे हैं कि म्यूज़िकली, सब्लिमिनली, यू पुट सो मच इन्फॉर्मेशन इन पीपल्स माइंड्स के बहुत लोगों को समझ आ गया सबकॉन्शियसली कि चेंज हो गया। Evolve हो गया है, दिल yes. उधर इवॉल्व हो गया, दिल उधर ही है, रूट उधर ही है, ठीक है? अब बात उस तरफ आप लेके चले गए, सबकॉन्शियसली यू आर इम्पैक्टिंग पीपल, दे आर एम्ब्रेसिंग इट, दे आर वेरी इंटरेस्टिंगली अंडरस्टैंडिंग इट बट नॉट नोइंग इट सडनली उनको। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता आपने रिवील करना है ना कि आप कैसे लोगों के सामने भी प्रेज़ेंट कर रहे हो। सो इट वाज़ क्वाइट अ जर्नी, और आबदा जी, नसीबू जी की आवाज़ से आपने इतना ब्यूटीफुली उस नए नैरेटिव को इंट्रोड्यूस कर दिया कि वो सबका हो गया, वो सबका हो गया। किसी ने उस टाइम पे ये भी नहीं कहा कि पुराना कुछ नया कुछ, कुछ नहीं, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि ये लाइव नहीं है, तो मैं इस बारे में बात नहीं ज़्यादा करता, बट द थिंग इज़, जो हाउ इज़ देयर एनी अदर वे मैं आबदा जी से कोई परफॉर्मेंस रिपीट करवा सकता हूँ, नसीबो जी से? वो तो वही हैं जो उधर वो गा देंगी ना। उनकी उनकी ब्यूटी ही यही है कि दे आर ऑलवेज़ न्यू, दे आर ऑलवेज़ यूनिक इन Right. उनका उतार-चढ़ाव, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी टाइमिंग, वो ऐसी है कि वो यूनिक टू देम, वो मैं उसी वक़्त कर सकता हूँ और कभी नहीं कर सकता। Right. So then that science comes in as well to
to make sure all of this magic happens live as well. ये आसान तो नहीं है, but obviously technology वगैरह ये सब इस point पे है कि जहाँ बहुत सारी चीजें possible, कर सकते हो। अब तू झूम आया, तू झूम के बाद, पता नहीं क्यों मुझे मेरा दिमाग ना फंसा बात है कि नेक्स्ट गाना कना यारी, कि हमने कना यारी नेक्स्ट गाना करना है, ठीक है। और वो भी क्योंकि आई जस्ट वांटेड के इतना सरप्राइज हो जाए लोग कि ये क्या हुआ है। यस व्हाट वो मूविंग वॉल्स वाला सेट और राइट, हाँ बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग था। अच्छा, अब वो ये तो हुआ क्या, दूसरा आई एंड एक और चीज जो हमने की ना, वी डिडंट रिलीज द ट्रांसलेशन, इफ यू नोटिस, उसकी तो इंटेंशनली था कि हम ट्रांसलेशन ना करें। व्हाई? आई टेल यू व्हाई। I didn't want the translation to go foreign. I just wanted people to hear the beauty of the language in its purity, right? Because it is so percussive, it is so rhythmic in nature. It's like all these languages जिनके गाने दुनिया सुनती है और समझ नहीं आती। डेस्पेसिटो लोगों को समझ, मतलब जिसको नई लैंग्वेज आती है उसको समझ तो नहीं आएगी ना बात क्या हो रही है, बट ब्यूटी ये है कि उतनी percussive rhythmic है कि you start dancing or singing along. Baluchi has that same quality to it. It's that percussive nature, right? So I wanted people to hear it in the way it is supposed to be heard, without any knowledge of what he's saying. And then after a few days, when we actually shared the lyrics उसके, तो लोगों को समझ भी आ गया कि ये narrative भी deep है, ऐसी बात नहीं हो रही, बात भी बड़ी मजे की हो रही है। But first hear it what it is. Just see these artists, creating this magic, moving up Kafi, Kiba, भुक्ति, क्या यार, आई मीन क्या बात है क्या we were just like what सोचो तो सही। और हर एक पर्सनैलिटी है, खूबसूरत पर्सनैलिटी है, मेहनती पर्सनैलिटीज हैं, और स्पेशली तो सबसे अच्छी बात है सारे गाने ओरिजिनल हैं। अब इन्होंने अपने पार्ट्स खुद लिखने हैं। अब कैफी ने कॉम्पोजिशन कैफी की है गाना, इतनी प्यारी मेलोडी, इतने प्यारे वर्ड्स की चॉइस, उसका एक्सप्रेशन इतना प्यारा, और उसकी एक इनोसेंस है जो कि मतलब क्या बात है। वो कैफी भी एक ऐसा इमोशनल इंसान है कि उससे भी मैं मिलता हूँ ना, वो भी जिस तरह यंगस्टर्स है ना, मैं कैफी से मिलता हूँ, मेरा इमोशन वही है। और उनको क्या होता है, बस एक रोना आ जाता है अंदर अंदर, इंटरनली एक फीलिंग आती है, बहुत हाई इंटेंसिटी इमोटिव। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी ईवा है, अब वो शी हैज सो मच टू से, सो मच टू एक्सप्रेस, एंड देन हर स्टोरी इज ऑफ रेजिलियंस, इज ऑफ कंसिस्टेंसी, is of that much passion and intensity के ये जब रिवील होते हैं ना लोगों के सामने in their own original ways, और जब ये आइडियाज इनके नैरेटिव्स लोग एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, जबकि ये नैरेटिव बिल्कुल नया है, ये लोग बिल्कुल नए हैं, आपका होप और बिलीफ इतना बड़ा हो जाता है ज्योति। आप कहते हो कि यार क्या बात है, पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट। yes People are ready to accept all these new narratives. They want to hear this. They want to be surprised. So all the more reason we explore new things instead of going back. I agree. Yes. So to answer to as an answer to your question, moving forward, yes, again, आपका tradition तो आपका एक constant होता है, लेकिन आपका culture has to be progressive. And these are all our stories. Bill has to evolve. ये हमारी stories हैं, हमारी कहानी है, तो हम नहीं बताएंगे तो कौन बताए? बस हम बता रहे हैं और आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं। आप कल्चर को इवॉल्व भी कर रहे हैं, एक्सपैंड भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ लोगों की इमेजिनेशन को एक्सपैंड कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नाउ द ऑडियंस आल्सो नो कि ये भी पॉसिबल है, और ये साउंड भी हमें अच्छा लगेगा, और ये लैंग्वेज भी हमें अच्छी लगेगी, इवन इफ वी डोंट अंडरस्टैंड इट। एंड सो डिफरेंट लेवल्स पे यू आर एक्सपैंडिंग पीपल्स माइंड्स, है ना। हम कोरियन भी सुन लेते हैं ना, के पॉप भी सुन लेते हैं, अब कैसे सुन लेते हैं समझ तो नहीं ज्यादातर आ रही होती, but we are able to listen to it, we are able to enjoy it as well. Even reggaeton, Spanish, yeah, they're all global. अब ना वो, और yes, and you know the thing is कि एक टाइम पे बहुत सारी चीजें ना जो थी एग्जॉस्ट हो जाएंगी। अब आपको, जब तक आप न्यू ऑथेंटिक नैरेटिव्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना, उस टाइम पे आर्ट भी फिर इवॉल्व करना रुक सकता है। इट्स इम्पोर्टेंट, हर कॉन्टिनेंट का, हर मुल्क का, हर शहर एक टाइम ट्रैवल है। आप जाएं, आपको वहाँ लोगों से मिलें, आपको नए आइडियोलॉजीज मिलती हैं, आप लोगों से मिलें, आप लोगों से बात करें, आप किसी जगह पे ठहरें, आप किसी जगह के पहाड़ को, ग्रीनरी को, ग्रास को, कम्युनिटी को काम करते ही देख लें, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है। और वो सारे पर्सपेक्टिव आर्ट हैं, दे आर ऑल आर्ट, सो दे आर इन्फिनिट न्यू पर्सपेक्टिव्स टू वर्क ऑन। सो ऑल द मोर रीजन के मंडेन नहीं होना, क्योंकि दुनिया डाइवर्स है, उस डाइवर्सिटी को सही मानों में विद एब्सोल्यूट ऑनेस्टी एक्सेप्ट करना और फिर आर्ट क्रिएट करना।
फिर जॉनरा लेस ही होगा। Yes, जॉनरा I फिर हो ही नहीं सकते इसमें। I always say कि when you want to open your channels of inspiration, travel. Go someplace nobody knows you and you don't know anyone and just experience life. 100 है ना? एग्री, सही बात। So I've seen the inspiration you got with travels specifically because आपने इतने different musical instruments use करे हैं and I made a mental note of them. You had to Jhoom में you had the mountain dulcimer which is from the Appalachian region, है ना? And then आपने एक और आपने balalaika था काना यारी में, फिर आपने बगलमा और मैंडोलिन का वो किया पसूरी में। हाँ, और एक और देखा था मैंने जैम लॉक एंड जंगू पीछे हट में, which I still I don't know, you know, I don't know कोरियन, what they look. जंगू इज Oh, कोरियन, वो इज oh कोरियन। wow, जैम रोक तो आपके ये कैरिबियन में भी, अमेरिकन वेस्ट में भी यूज होता है बहुत, लेकिन लैटिन शैट में भी बहुत यूज होता है। फिर हाँ, देयर वाज दिस उडकिया, इट वाज अ टॉकिंग ड्रम। right, टॉकिंग ड्रम था, हाँ, जो पीछे हट में अजीज बजा रहा है, द हाँ, परकशन। और सरोद था, सो आपने बेपरवाह में सरोद का सोलो डाल दिया था। बिल्कुल फिर बिल्कुल, आपने बहुत ब्रास सेक्शन डाला है, आपने सारंगी और सितार था गो में, which shocked me. in that sonic landscape आपने सितार और सारंगी दोनों फिट कर दिए, it was सारी beautiful. आवाज़, हाँ, ज्योति, सारी आवाजें हैं, सारी साउंड्स हैं, एंड इफ यू नो यू नो जज ना करें, जज उन साउंड्स को कि ये एक तरह का एक्सप्रेशन डिफाइन करने के लिए कि सारंगी है तो यूजुअली स्टीरियोटाइप हो गई है टू yes, शोकेस डार्क विजुअल पैसेजेस और सैड और डेथ, इस तरह की चीजों को सिग्निफाई। आप भूल जाएं इस बात को, ना करें स्टीरियोटाइप, तो फिर ये सारी साउंड्स ही है ना, यू कैन क्रिएट सो मेनी एक्सप्रेशंस आउट ऑफ देम, इनफिनिट। आप इस तरह सोचें, अब जिस तरह मैं बताता हूँ, जिस तरह एक सिंपल सी एग्जांपल है हारमोनियम, बहुत ही वैसे बच्चों वाली एग्जांपल है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। हारमोनियम क्या है? You must have heard in modern music there is something called side chain, जहाँ वो जब किक की आवाज आती है तो बेस की आवाज थोड़ी कटती है, तो इट्स पम्प, इट पम्प्स, right, होता है। हारमोनियम के अंदर तो अपना पंप मौजूद है, इट्स एन yeah, ओल्ड इंस्ट्रूमेंट। yeah, तब कौन वो जो आप उसको बैरोस का आप उसको करें तो वो तो वी यूज्ड इट लाइक दैट इन ठगियां, we did, yeah, we used some of it like that in Nere Nere Vas as well. mm, So to fuse भी क्या कहूँ, to create one, you know, one emotion out of all the sounds that you've already heard, but in new ways, it is a very possible thing. I mean, it's not even a surprising thing. It's like all instruments want to have a conversation with you, and if yes, you know use in ways, तो वो easily आप collaborate उनको भी करा दो। अभी भी हम लोग भी जो इंसान भी जो collaborate कर रहे हैं आपस में, चीजें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो आपस में पहले कभी मिले भी नहीं थे यार, और पता भी नहीं था कि अच्छा ये लोग आपस में कोलैबोरेट करके कुछ बना सकते हैं। एक्शन जैन की दुनिया और है, अब्दुल्ला सिद्दीकी की दुनिया और है, ठीक है। आप सोचो वो उनकी दुनिया कैसे मिलके मोज़ेज़ सारिफ बन गया, wow, वो म्यूजिक पर्सनैलिटी मिलके बनाई। वो mm, किसी, सो द थिंग इज दिस इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, एवरी साउंड एवरी इमोशन मैटर्स यार। तो अब इंस्ट्रूमेंट नहीं मैटर करता, ये चीज मैटर करती है, उससे आप कर कैसे रहे हैं, उसको से बात क्या कर रहे हैं। और एक बात बताऊं, जो यार सो मैं जब से खत्म हुआ ना सीजन, आई हैव बीन सोर्सिंग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑल ओवर द प्लेस। मैं नाइजीरियन टॉकिंग ड्रम लेके surprised. आया हूँ, मैं पर्शियन तार मैंने सोर्स किया है, बल्कि मैं पर्शियन तार सोर्स करके मुजम्मिल को Wow, दे दिया। okay, मुजम्मिल द गाय हु प्लेज सरोद, ही वाज हियर यस्टरडे, तो मैंने हाँ, उसे कहा कि आप इस मास्टर करें, इसको आप ले जाएं। सो वो करेगा, मुझे पता है, stay बच्चे with में it, स्पिरिट है, हाँ, wow, play with it, understand? So the thing is कि the story needs to continue. This, all of this effort, intent needs to continue, and it needs to continue on a community level, not from an individual level. So I am now, my excitement and also curiosity is the chapters this CS process will write further, and what others will write inspired from this process. मैं वो एज एन ऑडियंस पे बैठ के देखना चाहता हूँ कि अब क्या होगा। how आई will they फील take it कि forward? हाँ, साइडवेज कह दें, फॉरवर्ड कह दें, इन मोर डाइवर्स वेज चीजें होना शुरू हो जाएं, बट लेट्स सी। मैं मतलब आई एम क्यूरियस एंड आई एम एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर यार। Yeah. You challenge, I mean, you've been challenging people through the course of the season, but you asked someone to play the harp for the first time and it was in the song, na? Was it Sajan Dasna? Sajan Dasna में भी था, महरम में भी था, फैज। So हाँ, he's a very interesting guy. He was in our Magical Journey team जो Magical Journey shoot कर रहे थे। हाँ, So one day we were in Islamabad for some discussions with artists. तो मैंने उसको गिटार बजाते हुए देखा। मौसम बड़ा उस दिन बड़ा अच्छा था, बारिश हो रही थी। So we were on the upper floor पे and he was playing the guitar.
आई वाज लाइक यार तू गिटार बजाता, मुझे तो पता ही नहीं था, और इतना अच्छा बजा रहा था और फिंगर पिकिंग कर रहा था। सो व्हाट हैपेंड वाज कि बस एक मेंटल नोट मैंने बना लिया था। तो सजन दसना में ना जब वी रियलाइज कि देयर हैज टू बी अ हाफ पार्ट, सो मैंने फौरन मेरा दिमाग वो फैज़ के पास ही गया कि उसको मुझे याद आया कि जिस तरह वो नायलॉन स्ट्रिंग गिटार बजा रहा था, मैंने सेड कि आई थिंक यू कैन प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट। सो असली स्टोरी ये थी कि जब मैंने उसको बताया ना, तो मैं असल में इधर देख रहा था और वो मेरे पीछे डांस कर रहा था। ये मुझे नहीं पता चला कि वो इतना खुश हुआ कि वो नाच रहा था कि मैं बजाऊँगा। लेकिन व्हेन आई टोल्ड हिम, तो मैं बाकियों से तो उसके बाद बात करना शुरू हो गया कि आई फील कि ही रियली हैज़ इट इन हिम, बिकॉज़ ही प्लेज़ द फिंगर पिकिंग पार्ट्स इतने ब्यूटीफुली दैट हार्प ये मास्टर कर सकता है। सो ही हैज़ दैट इन हिम, राइट? सो ही वाज़ डांसिंग बिहाइंड मी व्हेन आई वाज़ टेलिंग दिस टू एवरीवन। तो सबसे खूबसूरत बात ये थी एक्साइटमेंट उसकी। बट वो हो गया। आई थिंक यार पता है सब कुछ कर सकते हैं। मुझे तो ये भी आपका यकीन है माइंड ना, कि आई फील लाइक, सॉरी, योर माइंड इज लाइक अ ब्राउजर विंडो विद 100 टैब्स ओपन, और फिर कब कौन सा टैब खोल के किसको पिक करना। Actually, my browser window was like this, and all my friends used to say कि तू क्या कर रहा है भाई, ये क्या-क्या खोला हुआ है? लेकिन my browser window had always had all these different things, कहीं म्यूजिक है, कहीं वीडियोस हैं, कहीं रिसर्च है, साइंस की, स्पेस की। मेरी तो वाकई आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हो कि ये सीन है, ब्राउजर विंडो है। There's something to be said about the chaos, finding the right point in the chaos as well as a talent. But how do you find the focus for the song amidst all the chaos? How do you recognize what a song needs? I know it's a very broad question, like हम्म, because I watched an interview of Sherry's recently, and he said कि वो लोग jam कर रहे थे ये दुनिया के लिए specifically, और वो melodies बना रहे थे और भेज रहे थे आपको, और आप constantly बोल रहे थे कि नहीं अभी नहीं, कुछ और, थोड़ा और करो, थोड़ा और करो, अभी you haven't got it yet, it's not there हम्म, yet. So हम्म। and then when you heard, for example, असफर ने जो आपको एक line भेजी, the minute you read it you knew it was it. So वो recognition कैसे आता है कि ये है और ये नहीं है? पता नहीं, आई थिंक वो बायसेस से डिटैच करके आता है। Hmm. जब आप अपने ईगो से भी डिटैच, अपने बायस से भी डिटैच्ड, आप एक वो एम्प्टी से हो जाते हो ना, तो आप ज़्यादा सुन सकते हो इमोशनली, और ज़्यादा ऑनेस्ट भी हो सकते हो। बायस से अटैच होना होता है, और दूसरी बात, अपने ईगो को ना अपने आइडिया से अटैच नहीं होने देना। वो चीज़ भी बहुत हेल्प करती है, Wow. Yeah. बस। तो आई थिंक दीज़ आर द फ्यू लर्निंग्स दैट आई हैव हैड ड्यूरिंग द प्रोसेस, एंड दे हेल्प मी टू पिनपॉइंट कि यार ये हो गया, और फिर बिलीफ भी बढ़ जाता है इस तरह। ये दुनिया के केस में भी, we made another song as well before Ye Dunya, by the way. It's also a great song. It's unreleased, but we loved it. But I just felt that Karakaram needs to tell something else to people through the story. So I then said कि यार शेरी सब छोड़ते हैं, सब आइडियाज को साइड पे करते हैं, आप बैठ के एक पर्सनैलिटी डेवलप करना शुरू करो म्यूजिक की, जो आपको लगती है कि होनी चाहिए, सब छोड़ के, राइट? सो उसने एक फिर बीट बनाई, and then he made a chord arrangement and he made a melody. Na na nay, na 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 nay. मैंने कहा चलो अदनान को बुलाते हैं। ठीक है। अगेन दिस वाज द रूम यहाँ बैठा हुआ था शेरी, इधर बैठा हुआ था अदनान, एंड कहते हैं कि ये क्या मेलोडी है शेरी, दोबारा सुना। सुनी, क्या चल मेरे साथ बाहर चल। अदनान बाहर ले गया उसे, एंड यू नो वापस आए, इसलिए भाई ये सुने। अदनान चेहरे बदलते जाएंगे, पूरी लाइन लिखी हुई थी। मैंने सुन के कहा, मैं पागल हो गया खुशी से। मैंने कहा यही है। कहता है, मैंने कहा हाँ यही है मैन, हो गया, कोरस लिखा गया, कोरस हमारा ये नैरेटिव लिखा गया, और बहुत बड़ा नैरेटिव था। और वो पता है कैसा नैरेटिव था, मैं इट वाज काइंड ऑफ नैरेटिव जो मॉडर्न भी है, इस तरह यंगस्टर्स की लिरिकल पोएट्री के अराउंड भी था, फिर उसके अलावा करंट, फिर वो ऐसा था जो एक तरह से जो रॉक बिगिनिंग्स है ना काराकरम की, उनको भी डिपिक्ट कर रहा था नैरेटिव, और वो ऐसे वर्ड्स में कर रहा था जो कि यूजुअली रॉक नैरेटिव्स के अंदर ना उर्दू में इतने यूज नहीं होते। मैं किस तरह बता रहा हूँ, ये कनेक्शंस यूज नहीं होते, क्योंकि उर्दू रॉक ना बहुत ज्यादा फंस के भी रह गया था। चेहरे Okay. बदलते जाएंगे, चलती जाएगी दुनिया, रुकती है कहाँ किसी के भी लिए,
So I felt that this narrative takes rock forward as well. These words, and then they open a sort of a canvas जिसके अंदर और बड़े ideas आ सकते हैं, और बड़े interesting philosophies आ सकती हैं, और बड़ी interesting poetry आ सकती है कि आपने Pandora box खोल दिया, right? और अब इस नए narrative के through आप एक रैप रॉक की नई पर्सनैलिटी शोकेस कर सकते हैं, म्यूजिकली भी बहुत मूविंग इंटरेस्टिंग और सब कुछ। मुझे समझ आ गई उस पार्ट पे कि ये पैलेट बन गया, राइट? सो आफ्टर दैट ना वो शेरी ने एक स्ट्रक्चर इसका बनाया, तो मैंने सोचा मुझे भेज दे। सो फिर उस लाइक वी वर्क टुगेदर अ लॉट बाय द शेरी एंड आई, तो हम अब तो सबके साथ ही वी वर्क टुगेदर अ लॉट मैं कह सकता हूँ, लेकिन शेरी के साथ बहुत पहले से, सो वी कोलैबोरेट एंड वर्क लाइक दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। सो उसने भेजा, देन आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन इट इन थिंकिंग कि वो कौन सी साउंड है जो रॉक लगे भी और नहीं भी लगे, वो क्या टेक्सचर है जो यूनिवर्सल भी लगे और वो ऐसे भी लगे कि उसमें वो अग्रेशन, वो इंटेंट जो एक रॉक का होता है वो भी मौजूद हो, वो मूवमेंट्स ऐसी हैं। व्हाट कैन आई डू के गिटार हैवी बनाए बगैर इसके अंदर वो अग्रेशन आ जाए जो हर बंदा सुन के कहे यार ये तो मैं भी सुन सकता हूँ। सो आई वांटेड न्यू पीपल टू बी रिक्रूटेड एज रॉक लिसनर्स ऑफ दिस नैरेटिव, बिकॉज इस म्यूजिक पर्सनैलिटी में जो रॉक के अराउंड जो म्यूजिक पर्सनैलिटी में जो नैरेटिव जिस तरह बयान कर सकते हैं ना, वो भी आपकी लाइफ के लिए जरूरी है टू अंडरस्टैंड इट एंड अब्सॉर्ब इट, वो भी जरूरी है। और अगर अगर रॉक वाला नैरेटिव खत्म हो जाएगा तो वो एक ब्यूटीफुल बैलेंस खराब हो जाता है, और वो जरूरी है होना कि लोग इसको भी एक्सपीरियंस करें। तो फिर बस उस नैरेटिव को आगे लेके जाते जाते हमें समझ आ गई कि जिसमें दो और इमोशंस ऐसे हैं जो ऐड होंगे अगर, तो स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी कंप्लीट हो जाएगी। उसमें तलहा, उसको मैंने भेजा ये ना कि यार इस पे कुछ लिख के भेज, कुछ करके भेज। उसको एक मैंने सुनाया बल्कि उसको हेडफोन पे पहले, 2-3 दिन गुजरे और उसने वो लिख के भेजा, तो मैं तो उस टाइम पे हर जगह गूज़बम्प्स, ऑनेस्टली हाथ, टाँगे सब कुछ। मैं आई वाज़ लाइक कि यार इसने क्या लिख दिया है, एंड इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पैसेजेस, यू नो। अगर मैं ओवरऑल वैसी बात करूँ, मतलब मैं जितना म्यूज़िक सुना, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट पैसेजेस, ये दुनिया का तल्हा अंजुम का पैसेज। एंड आई जस्ट सेंड इट टू शेरी, एंड वी बोथ थॉट कि यार ये क्या बात हो गई, क्या बात लिख दी है। एंड देन फारिस केम इनटू द पिक्चर विद हिज इंटरेस्टिंग दिमाग, आइडियाज़, और उनका उनका बात करने का तरीका, उसका रेफरेंसेस ऐड करने का तरीका, जैसे बादशाह द वेदर द मार्शल मेथड, so he mentioned Eminem in ways Yeah, that nobody can, really done. only Yeah. he can do, right? Yes. So he अजीब ही, मतलब मैं मुझे तो अभी भी ये समझ नहीं आती कि ये सारी चीजें कलेक्टिवली कनेक्ट होती जा रही थी, समझ भी आ रही थी कनेक्ट कर रहे हैं, और मैजिकली लग रहा था कि ये इट वाज सपोज्ड टू बी लाइक दिस, और ये सब रन टाइम में, रियल टाइम में हो रहा था, ये सब रियल टाइम में हो रहा था। मतलब जो फारिस का वर्स है वो शूट से आई थिंक 3 दिन पहले कंप्लीट हुआ था। कैन यू बिलीव इट? Wow. My God. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोसेस। जब आप जब पसूड़ी 1 दिन पहले लिरिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो झूम में कुछ हम स्ट्रक्चरल चेंजेस ला रहे हैं 2 दिन पहले, द प्रोसेस नेवर एंड्स अंटिल अंटिल आप मिक्स करके खत्म करके फाइनल एक्सपोर्ट करना कर लेना, आपका नैरेटिव प्रोसेस भी खत्म नहीं होता, प्रोडक्शन प्रोसेस भी खत्म नहीं होता। सो खैर एनी हाउ, ये नहीं, बट दुनिया की शेरी ये भी बोल रहा था इंटरव्यू में कि there were other people involved with that song before, फिर it didn't work out, and so I think even then the universe conspired to create this song the way it was meant to be created. yes, लेकिन yes, yes. yeah, I wanted to know, were you ready to scrap the song, because at one point Sherry said कि I was like नहीं रहने देते हैं जुल्फी भाई, like नहीं करते हैं, it's not Well, beautiful. No, I was never. I thought कि this good. narrative has to go to people. हाँ. मेरा तो बिलीफ था, हम्म. और मेरा काम भी ये है कि जहाँ कोई बंदा उस पॉइंट पे आए कि जहाँ उसको लगे कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, मैं उसको समझाऊं कि अगर मैं किसी चीज में बिलीव कर रहा हूँ तो मेरे पास वाकई रीजंस और कुछ है जिसकी वजह से मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस चीज से, एंड आई जस्ट वांट टू गिव दैट पर्सन दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट लव कि आप ठीक कर रहे हो, हो जाएगा. डोंट हाँ. हाँ हो भी जाएगा, ठीक भी कर रहे हो, और अगर कहीं रुक गए हैं तो कुछ नहीं होता, ब्लॉक तो होता है, लेकिन हम निकल निकल जाएंगे और बहुत बेहतर निकलेंगे इससे। बेशक वो आखिरी दिन हम निकल जाएंगे, जिस तरह गाना था ना, अम, ये दुनिया ही, अब इसका एक पॉइंट आ गया कि जहाँ हम रुक गए, जहाँ इसका ब्रिज लिखना था। सही है। अब देयर वाज अ टाइम व्हेन होता है हर इंसान पे, इतने टाइम्स आते हैं। तो अगेन आई आई वन डे आई वोक अप इन अ फेज जिसमें मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, सो भी नहीं पा रहा था, होता है कभी कभी। सो आई जस्ट मैंने गिटार उठाया,
and I sang this and recorded it. शहरों में हूँ मैं ढूंढूं क्या शहरों में घूमूं बेवजह, and I just sent it to Sherry, and Sherry was like, this is it, यही है. तो ये जो हमारा ब्लॉक आया हमने मिलके रिजॉल्व कर लिया ना यार. ज्योति, the thing is that's the whole, even अब्दुल्ला सिद्दीकी वाला गाना भी हमने कितने गाने बनाए, बहुत सारे, ठीक है. और जो फिर पहला था ना जिसपे एक कंप्लीट बिलीफ और ट्रस्ट मेरा भी था, हमने एट द एंड वही किया जो पहला था, जो आपने सुना. सो यू नो ये बहुत डायनामिक प्रोसेस है. और अगेन ये ऐसा प्रोसेस है कि यार आप बस मिलके कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, और आप इस तरह कर रहे होते हैं. तो फिर व्हेन यू रैली अराउंड ईच अदर ना, और ऑनेस्टी से, तो फिर यार वो पता है, वो मैं सही बताऊं हो जाता है. आई कांट पिन पॉइंट एनी साइंस टू इट, बट आई कैन पिन पॉइंट के, बिकॉज हम सब सेंसिटिव है ना, हम सब सोच रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं. तो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ने वो मैसेज दे ही देना है अगर हम सुन रहे हैं तो वो दे ये मैसेज हो जाता है. I think ideas and songs are, they want to be born, so they're just looking for the right channels कि कौन हमें लाएगा into the world. So since you all are so open, I wanted to ask you specifically about the Talhas. You mentioned how much you love them, and there was a very strong presence of rap hip hop in this season, which has never really happened in such a big way before. And honestly, मैंने Urdu rap और Talhas को अपने channel के starting के बाद discover किया. I was a lot of artists I have discovered through my journey, but I was honestly, I bata rahi hu, last year I was thinking, when I was like loving the Youngsters so much at one point and researching for our conversation, I was like, I really wish Zulfi is listening to them, because Zulfi is doing crazy good things here in the music industry, and these guys are coming up and they're doing such good stuff. I really hope he's listening to them. And then I heard about Groove Mera and I was like, okay, he's listening, he knows what's happening. Zulfi is very aware. I don't need to worry about this. But then you brought them into the season of Coke Studio, and I want to know your thoughts on the genre and the rap and Urdu rap specifically. Aapke kya thoughts hain? Why do you love it so much, you said? Yes, I think it's poetry. How did you first hear them? Yeah, my first experience of listening to them was Guman. बस. Me too. फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल फिर मैंने लगा रहा सुना. And then I heard of Sane as well, and I kept getting sucked into their world. And मैं जब भी सुनता था, in fact these are some we've had long discussions, अदनान और मेरी ना बहुत discussions होती थी कि मैं उसको बुलाता था, हम बैठते थे और हम यंगस्टर्स और जितना ये उर्दू रैप है ना उसकी पोएटिकनेस को डिस्कस करते थे कि the fact is कि people are connecting to them, they are listening to them, each word उनको याद है. वो बेशक अब गुमान कोई आसान वर्ड नहीं है, वैसे मैं आपको बताऊं, इन द सेंस के सुना वर्ड नहीं है इतना, बट अगर आपने एक नई जनरेशन को गुमान वर्ड से भी इंट्रोड्यूस करा दिया ना, ये भी बड़ी बात है. और फिर वो बड़े इस तरह की बातें करते हैं जो इतनी खास उर्दू और खालिस उर्दू होती है. सो यू इंट्रोड्यूसिंग पीपल टू उर्दू एज वेल. सो समटाइम्स इन मेलोडी व्हेन यू इंट्रोड्यूस पीपल टू न्यू वर्ड्स, कभी ना वो रिसीव नहीं होते सही. when you are trying to do it in simple, जिस तरह की मेलोडीज होती हैं इन पॉप मेलोडीज, कभी उनका मीनिंग उस तरह कन्वे ही नहीं हो पाता. बट रैप इज अ जॉनरा कि जिसमें आप जो बात कर रहे हो अगर तो ठीक लिखी, even if it's poetic, even if it's खालिस उर्दू, people are going to connect to it if it's honestly done. And the proof was that people were connecting to it, people were remembering it, singing along with it, right? So Anand and I were having a discussion that these people should write for pop music as well. So now if somebody says कोई गाना लिख रहा होता है कि उसको कोई पोएटिक टाइप म्यूजिक लिरिक्स चाहिए, तो मैं तलहा अंजुम का कहता हूँ कि आप get to him, talk to him. He's not just, even Yunus, they are not just people who can just write words for rap. They are poets. They're poets. They are modern day emotions. Poets. Yes. They write emotions. Yeah. और वो जरूरी नहीं कि वो रैप टाइप वाइब के लिए लिखें, वो आपके बाकी गाने भी लिख सकते हैं. मेरे लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट पता है म्यूजिक जॉनरा वगैरह सब, अगेन वो तो आप बता भी दिया, मैं जॉनरालिस्ट दिमाग हो चुका है. It's what you are saying, यार. It's the narrative, it's the words that pierce through people's hearts and then reside in people's minds and hearts.
वो बात क्या कर रहे हैं, वो लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन वो बात ठीक हो जाएगी ना तो लोगों के दिलों में बस जाएगी वो। बेशक कना यारी, गद्दारी, जो भी हो, वो लोगों को पता है, ये 4 वर्ड्स भी याद हो जाएंगे ना, वो दिल में बस जाएगी। इट हैज टू कम फ्रॉम रियल प्लेस, राइट? सो फॉर मी दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये मुझे रैप में फील होना शुरू हुआ, स्पेशली यंगस्टर्स के रैप में, फारिस के रैप में। समझ आई बात कि यार दीज पीपल आर बीइंग ऑनेस्ट, दे आर डूइंग व्हाट दे वांट टू डू। इस पे, और जिस पे जहाँ का ये तलहा दोनों का है, दे आर पोइट्री, एंड I started now then thinking how we can also write in a way which is as poetic as this, but in melodies that can just convey the message easily to people. So youngsters is sort of a very important point in Pakistani music. There is a lot to learn from them, right? And a lot that they can give more to the rest of the industry and the scene as well. So I have learned from them, I will absolutely admit, of how narratives, and even narratives which is इतने वर्डी हों और वो भी लोगों तक पहुंच जाए, और एक एक लफ्ज लोग कहें कि हमने गाना है, हमने सुना, इससे क्या बड़ी बात होती है? So it's a learning कि how we can bring that into the narrative, and I think ये दुनिया is quite an example of that. Even all the lyrics around it, शहरों में घूमूं मैं ढूंढूं क्या, अब शहर का वर्ड मैंने जिंदगी भर नहीं यूज करना था यार कभी लिखते हुए, वैसे मैं सही बता रहा हूँ, नहीं करना था। हम तो रास्ते और रास्ते और मंजिल थे उस पहले, यही दिमाग सोचता था, लेकिन अब वो खत्म हो गया। अब शहरों में घूमूं ताकि पीपल रिलेट टू इट, कि कोई गाड़ी में जा रहा है वो भी सोचे, साइकिल पे जा रहा है वो भी सोचे, पैदल चल रहा है वो भी सोचे, और वो उसको लगे कि वाकई यार मैं क्या ढूंढता हूँ। अब ये सारे नैरेटिव्स ना, दे आर द न्यू नैरेटिव्स, द न्यू थिंग्स दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, and youngsters are a very important chapter in that conveyance. So मेरे लिए वो ये हैं, वो they are inspiring, not just for me, I think they are inspiring for a lot of people. So Urdu rap तो खैर, I think it's writing wise it's my favorite thing in the world right now. मैं तो बहुत लोगों को suggest करता हूँ कि किसी ने lyrics लिखने हैं, sit with the Talhas. Yeah. नहीं बिल्कुल and देखिए ना, जिस तरह we have some great writers. Adnan, we all know who great writer है. Aswar, we all know he's a great writer. Youngsters, we all know, and there will be so many others, yeah, 100%, जो कि उनके साथ बैठ के भी प्रोसेस में आके भी कर सकते हैं. I have tried that and done that ना, मुझे पता है. So it's just about sensing, feeling, surrendering, accepting, and then you're going to be, creating your own vibe with it as well. पॉइंट पे लेके जाने की, जहां इतने खूबसूरत नैरेटिव्स आप जहां से उठाएं कि आपको कुछ नजर आ जाए कि आपने ये पर्दा उठाया, ये लिरिक्स, ये उठाया, ये लिरिक्स, ये नैरेटिव्स. मतलब एक यंगस्टर होने जरूरी नहीं है, एक अदनान होना जरूरी नहीं है, एक शायरी, एक अब्दुल्ला, एक एक्शन ज़ैन. वी नीड टू हैव सो मेनी डाइवर्स फ्लेवर्स that every day we are listening to great art, we are witnessing great art. That's what is, I think, is most important. Exactly, agreed. And I was so happy. I honestly, Ye Dunya ke time pe, I put it in my video also. I felt vindicated because I've been saying it for so long on my channel, because I had a very distinct division in my audience also, hip hop and rap ki audience, or non hip hop or rap ki audience, which was more inclined towards, the Coke Studio basement sounds and things like that. So I was like, see guys, it can all mix and it can all sound beautiful. Oh, yeah. Bilkul. So I want to talk about, you mentioned to me in one of our earlier conversations that you feel like you challenged people a lot during this season. You really pushed them to their limits and beyond. And I mean, speaking of youngsters, you made them rap to melodies that were not a typical beat that they're used to. You asked Asfar to write the other side, the second person's perspective. You asked Nisha to write lyrics, which she's never done, even though she's been with Coke Studio for so long. So different examples that are coming to my mind. You pushed people. Tell me about that. Was there any pushback, or was everyone just like, yes, I'm happy you're challenging me? I think ये बात ही ना कि यार we want to tell your story to people, ये तो वैसे बड़ी इंस्पायरिंग बात और बड़ी खुशी की बात है for artists. I've always believed कि इतना कुछ बताने के लिए है ना दुनिया को, क्योंकि हर बंदा एक अपनी स्टोरी है, every person, और that's the very definition of diversity. Now if everybody says कि every song is so different from the other musically, lyrically, क्यों? क्योंकि वो honest stories है ना जो लोगों ने लिखी हुई हैं, वो narratives हैं जो लोगों ने दिल से बयान किए हैं. And if everybody has so much to give to art, then I would be mad to not channel that. I would be mad to not initiate that.
and to make sure it happens. Collaboration तो का एसेंस ही यही है. और ये जो रियल नैरेटिव्स होते हैं ना ज्योति, ये जाके बहुत जोर से हिट करते हैं, क्योंकि दे कम फ्रॉम अ रियल वाकया, रियल स्पेस, रियल स्टोरी. ये रियल स्टोरी है. वो बेशक लोगों के लिए नई स्टोरी भी हो ना, वो अगर रियल होगी ना तो हिट करेगी, लोग रिलेट करेंगे उससे. मुझे ये पता है कि जनरली ना लोग एक्सप्रेस करते हुए ना घबराते हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं भी इससे गुजरा हूँ. ठीक Yes. है. और वो उसका उसका मसला क्या होता है, उसका मसला क्यों होता है, ये कि सोशल इशू है कि जब आप एक्सप्रेस कर रहे होते हो ना, और तो लोग कहते हैं कि यार तू बड़ा इमोशनल है यार, बड़ा सेंसिटिव है, और हर बात बात पे इमोशनल हो जाता है या रो बैठता है या कुछ जो भी. तो आपका कल्चर आपको कभी कभी ना सोसाइटी कंडीशन कर देती है कि यार इमोट करना ना कोई जबरदस्त बात नहीं है. क्या यार, ये गलत कंडीशनिंग है. मैं ये सोचता बहुत हूँ गलत. कितनी गलत कंडीशनिंग है. अब मेरा क्या सीन था कि मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता था आंखों में आंखें डाल के अपने. इवन मैं जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा था, मैं ऑब्वियसली हमारी डिफरेंट प्रेजेंटेशंस होती थी, मुझसे प्रेजेंट नहीं होता था, कांपना शुरू हो जाते हाथ, क्योंकि मुझे पता था इस बात का कि पता नहीं मैं जिस तरह एक्सप्रेस करता हूँ ना, वो शायद एक्सेप्ट ही ना हो, क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका है कि मैं इमोशनल होकर करूंगा. अगर मुझे किसी और तरीके से भी कहेंगे रोबोट बन के या फलाना करके, जिस चीज में बिलीव ही नहीं करता, मुझसे होगी नहीं. बहुत देर से मैंने इस तरह की और अपने दिल पे पत्थर रखे, एक्सप्रेस नहीं कर पाया. कॉन्फिडेंस, मतलब मेरा तो वो सिचुएशन थी, अभी भी हो जाती है जब परफॉर्म करने जाना होता है. तो अभी भी ना वो एक तो बटरफ्लाइज इन द स्टमक भी होते हैं, एक्साइटमेंट भी होती है, और वैसे भी ना आपकी तबीयत भी थोड़ी खराब होना शुरू होती है, क्योंकि वो एक्साइटमेंट थोड़ा ओवरवेलमिंग भी हो जाती है. राइट, होता है, नॉजिया हो जाता है. मैं झूठ भी क्यों बोलूं. बट व्हेन यू ओवरकम इट एंड देन यू परफॉर्म, इट कम्स आउट टू बी The एन feeling एक्सप्रेसिव is so good. इमोशन. बात बिल्कुल. Hmm. इवन जिला वतन से पहले वो जो था, आपने देखा होगा बैटल ऑफ द बैंड्स वाला, Yes. उससे पहले भी अगर आप वो वीडियो देखो तो पता चल रहा है कि ऑन कर रहे हैं सारे. लेकिन मैं अगर पर्सनली बात बताऊं, बिल्कुल उसके स्टार्ट होने से पहले मैं था वरीड और हो रही थी तबीयत खराब. बट वंस द फर्स्ट मोमेंट स्टार्ट, इट्स ओके. It's एंड okay. आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये प्रॉब्लम है मेरा. फिर मैंने एक इंटरव्यू पढ़ लिया हांस जिमर का. उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई थी. उन्होंने कहा कि मैं इतना मेरा टाइम गुजर गया, मैंने कभी लाइव परफॉर्म तो किया नहीं था, मैंने फैसला किया आई एम गोइंग टू बी टूरिंग लाइव. सो I didn't have that experience. So when I went to stage for the first time to perform live, I just, wasn't ready, I realized. So there were so many nerves, and it took me 20 minutes to overcome those nerves. Okay? And then I started performing, and I thought, oh, yes, now I have, मैंने अपनी nerves को overcome कर लिया. Now the next time I perform, I'll be absolutely fine. So उन्होंने कहा कि when the next time he came, and again he started performing, again the same nerves hit him. And then he again had to overcome those nerves. And he says that till this day, whenever I start performing, there are nerves. And I have to overcome them. But now I understand this is my process. This is my process which will lead me to expressing myself. And then that told me that it's okay even if I'm worrying, if I'm worried, if मेरी भी अगर तबीयत खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, it's okay. I'll overcome those nerves. See, so back Your to tunnel, emotions. na? It's your tunnel that you go through. And you have to embrace it as well. वो बहुत important है. अब जब आपको सोसाइटी थोड़ा सा कहती रहे ना कि इमोशंस और सेंसिटिविटी पे आपको एक पुश बैक मिलता रहे, तो आप शायद कभी कभी कंडीशन भी हो जाते हो कि यार ये ठीक नहीं है. फिर एक दिन क्या हुआ, वो बाय द वे मैजिकल मोमेंट. आई वाज प्रेजेंटिंग बेसमेंट फर्स्ट सीजन, एंड आई ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ इट, just a little, but I broke down. I know. Yeah. I was talking about Pakistan and the talent in it, and I just started, my mind started thinking about all the people that I was going to recruit for that show. People like Gibran, that I told you about, the saxophone player, people like Adnan, and all of those people, they do make me emotional. And I just started, I broke down, shed a few tears, and I think they noticed. And I think that became the reason that show happened. They realized that he feels for this. Yes, And there's passion. that moment showed me कि अब मैंने ना अपने इमोशंस को लेके, सेंसिटिविटी को लेके बैक फुट पे नहीं खेलना. मैं अगर प्रेजेंट करता हुआ इमोशनल हो रहा हूँ, मुझे नाचने का दिल करता है मैं नाच लूंगा, मुझे हंसने का दिल करता है मैं हंसूंगा, मुझे रोने का दिल करता है मैं रोऊंगा, मैं डरूंगा नहीं अपने एक्सप्रेशन से. एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स टू दिस, आई डोंट हैव दैट फियर, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि माय सेंसिटिविटी इज माय सुपर पावर.
Yes, 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 yes. बस You're living a completely real and authentic life, and it reminds me of something Brené Brown put so well. She said that we're taught that we need to be brave, and we're also taught that vulnerability is weakness. So what do we end up doing? We end up faking bravery through life, and then living inauthentic and unreal lives. ओए होए So, Hannah, so when you realize that you're faking bravery and actual courage is from, vulnerability, and creativity comes from vulnerability, you start एब्सोल्युटली living a real life. क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम वल्नरेबिलिटी और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बताऊँ आपके इवन चॉइस ऑफ वर्ड्स आप कुछ भी देख लें, पूरा सीज़न भी उठा के देख लें, ऑल दीज़ वर्ड्स Oh. दे आर Mm, फ्रॉम दैट गो mm, जस्ट सिंबल ऑफ दैट, mm. सच अ सिंबल यू नो एंड हाउ एल्स आई मीन कहीं न कहीं से कोई आपकी स्पेस वल्नरेबल होती है, वो सेंसिटिव स्पेस होती है जहाँ से आप अपना नैरेटिव ढूँढते हो, डिस्कवर करते हो एंड देन यू क्रिएट इवन मोर नैरेटिव्स आउट ऑफ दैट। बट इफ इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम दैट स्पेस, इट्स नॉट गोइंग टू बी रिलेटेबल बिकॉज़ पी पी people like to embrace that यार। मुझे तो अब ये भी समझ आ गई है कि the moment CS happened and the moment I started watching the impact and people not being afraid to cry in front of the camera and showcasing that और कुछ भी बिल्कुल it's beautiful, it's beautiful। I was like शुक्र है यार कि ये इसमें घबराना लोग अपनी vulnerability को या अपनी sensitivity को बयान करना इनके लिए मुश्किल नहीं रहा। ये चैनल कर पा रहे हैं and this is going to Yes. help us as people। वो अंदर रखने से तो कुछ भी नहीं होता। No, I'm personal, example of it, because when the season started, I didn't know what's going to hit us, and I had already been doing YouTube for a year and a half, and I was always holding back whenever I would feel emotional during a song reaction. When the channels opened to Jhoom ke time say, by the time the season ended, and I think I told you this, I was like, okay, I don't care, phir milenge mein jitna rona aa raha hai, I'm going to just express, So क्या I think I think I'm not the only one. There's so many people around the world who have been impacted by the art in that way. आपको पता है आपकी जो वीडियो थी ना फिर मिलेंगे की रिएक्शन की, वी बाय द वे वी ऑल लव योर रिएक्शंस, ऑल ऑफ अस, Thank you. ऑल ऑफ अस Thank you. So touched. एंड जो फिर मिलेंगे का रिएक्शन था ना मैं वो देख रहा था, यू नो इट बिकॉज़ यू वर एक्सपीरियंसिंग दैट जर्नी इन वेज़ दैट वी फेल्ट के यार That शी इज़ was फीलिंग एग्ज़ैक्टली आई एम आउट ऑफ वर्ड्स एज़ वेल, शी इज़ फीलिंग एग्ज़ैक्टली how we feel and how we were thinking about it as well. She's emoting like that, even Shutspa, she was emoting like that as well. And I had to stop in the middle। I had to stop that reaction कि मैं अब बाद में फिर मैंने देखा, मैंने कंप्लीट फिर बाद में देखा। लेकिन दैट वाज़ द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट हैड, ठीक है? एंड वो अगेन आपकी ऑनेस्टी भी नज़र आती है ना उसमें, which is beautiful। And I think you're right, by the end of it when you heard फिर मिलेंगे, the tears were not just for फिर मिलेंगे, it probably was for the whole journey, and it just hit you very hard that day because exactly this is what happened to us। exactly what happened to us by the end of it। So we loved your reactions, in short। we loved your honesty। Thank you so much. And we loved not just the songs, but also the BTS and everything that every Yeah, department on the show had done. So please talk to me about the set designers and the art directors, the even the BTS team. How was how did that all come together? Because I know in Basement, I saw in season 5, our BTS is बहुत अच्छे बना रहे थे सब गानों के, and I watched all of them, and I was like, this is amazing. I don't think I've seen BTS like this. So I don't know if that idea you carry forward and brought to this season with you. But the entire crew, you clearly challenged all of them. see पहले तो हमारा मकसद था ना कि we have to create a team that is completely authentic in everything that they want to portray। For example, even to recruit a team which had to capture our moments, the first thing that was told to them was you are going to capture honest moments, there will not be an essence of fakeness anywhere। So I don't care if the shot is not, if the moment is not shot well, it's I don't I'm okay with that, but that moment has to be honestly captured and that moment has to be Real. honest and बस ये था। So and दूसरी बात ये थी कि
nobody should feel कि they're in a space where they are giving interviews and there are questions that are asked of them. It has to flow in a way where all of these things are happening. You're capturing it like a story, like what is really happening in the jam room, what is really happening in our studios, what is really happening in our conversations. You have to capture that. और ऐसे लगना चाहिए कि बेशक किसी को पता भी ना चले आप वहाँ बैठे हुए. You have to be one of the many people there and बस capturing it silently. और मेरे लिए बहुत important था बताऊं, because when the camera is there in front of me, like even right now, मुझे ना ओवरकम करते हुए टाइम लगता है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मैं फॉरन सबको कंफर्टेबल हाँ नहीं सेम. तो मुझे होता है कि यार कि अगर मेरी अवेयरनेस में होना कि कैमरा है तो मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा. अगर मैंने रियल रहना है तो मेरी अवेयरनेस में नहीं रह सकता कि कैमरा. सो पहली बात, वो बंदा जो कैमरा लेके आया हुआ है उसके साथ ऐसी दोस्ती होनी जरूरी है कि मैं उसे घबराऊं ना, कोई उससे ना घबराए. एंड आई थिंक मोइज डिड अ वंडरफुल जॉब ऑफ दैट. उसने सबके साथ दोस्ती की, सबके साथ. आप कभी देखें मैजिकल जर्नीज के अंदर उसकी आवाज भी आती है और वो जब लोगों से बात कर रहा होता है, इट्स अ वेरी फ्रेंडली वे दैट ही इज टॉकिंग. एंड देन फैज वाज द गाय हु प्लेइंग द हार्प. तो उससे तो म्यूजिक पे सबकी दोस्ती हो गई थी. शुगर लगता था, सारे दोस्त थे, मजे करते थे, कोई हायरार्की नहीं थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. टुगेदर. फिर मोइस की जो वाइफ है आमना, शी वाज हेल्पिंग. ठीक है. एंड इवन दिस टीम ऑफ मोइज, आमना एंड फैज वाज पिक्ड अप बाय माय वाइफ विजिया, हु वर्क्स विद मी. She was there during the whole process. And बहुत सारी हमारे पास choices थी. तो but she picked it, and she picked it on the basis कि ये लोग ना, इनका काम ऐसा था कि travel vlogs भी बनाते थे और इस तरह की सारी चीजें थी, लेकिन real लगता था, moments real capture करते थे. So she understood that कि अच्छा यार ये टीम है. And when she told me कि ये मैंने select किया, मैंने कहा spot on, बिल्कुल सही है. And then they proved it by capturing it in बिल्कुल authentic. कोई चीज मुझे ऐसी नहीं लगती थी कि यार ये इन्होंने क्या मोमेंट फजूल से कैप्चर कर लिया. हर मोमेंट इतना जबरदस्त होता था जब वो एडिट भी करके भेजते थे कि इट वाज कार्व्ड लाइक अ स्टोरी. एडिट भी तो जरूरी होता है ना. सो आई थिंक दिस चूजिंग द राइट टीम इज अगेन अ वेरी कोलैबोरेटिव एफर्ट. के हम इतने अरसे से काम कर रहे थे ना, तो हमें ये जो दिमाग में ना अभी भी देखें, पता नहीं मैंने कितनी दफा रियल ऑनेस्ट ऑथेंटिसिटी की बात की है, क्योंकि यही बातें हैं सारी. ये हमारे अंदर ना एब्जॉर्ब पूरी टीम के अंदर ऐसी हो गई थी कि फिर हम दूसरे को भी जब कन्वे करते थे या कोई नई टीम हायर करते थे, ऑन बोर्ड लेके आ रहे होते थे, उनको ये बातें इतनी दफा करते थे कि कंडीशन हो जाए कि यार हमने रियल रहना, हमने कोई फेक नहीं पकड़ना, जो जिस तरह का है वो दुनिया को दिखाना है. क्योंकि क्योंकि आप जब रियल चीज दुनिया को दिखाओगे ना, रिलेट तो उससे ही करेंगे ना लोग. लोग फेकनेस से नहीं रिलेट करते. People can tell लोग fake रियलिटी. very easily. हाँ, Yes. People can tell when बिल्कुल something is fake. Yeah. बिल्कुल. बल्कि देयर वाज अ स्लाइड अगेन इन माय सीएस की प्रेजेंटेशन जिस पे लिखा हुआ था, द ऑडियंस नोज व्हेन यू आर लाइंग. Yes. एंड दिस, ये कोई एक म्यूजिशियन है, आई थिंक जेम्स कीबो, सॉरी नाम मुझे उनका सही इतना याद नहीं है, उनका कोट है, द ऑडियंस नोज व्हेन यू आर लाइंग. और इससे बड़ा क्या सच है. इसलिए बस आप जो हो आपने वो दिखाना है और वही कैप्चर होना चाहिए. और वो अगर आप देखें, इवन जब इनके इंटरव्यूज भी हैं, यंगस्टर्स का इंटरव्यू दिमाग में लाओ, या हसन और तलाल का लाओ, या जस्टिन बीबीज का लाओ, अब वो बैठे हुए हैं और उनसे बात हो रही है, लाइक इंटरव्यूज होते हैं, लेकिन द वे दे आर सिटिंग और एक्सप्रेसिंग और टॉकिंग इज नॉट लाइक दे आर आंसरिंग एन इंटरव्यू. इट्स लाइक दे आर Just हैविंग अ chatting. कन्वर्सेशन. हाँ, they're दैट्स just chatting. हाँ, चैट. गपशप असल चल में रही इतना है ही बस. सिंपल है. असल में सब है इतना सिंपल. तो हमने फॉर्मल बना के उसको मुश्किल किया है थोड़ा सा. ये बहुत ऑर्गेनाइज रहे. इतना ही सिंपल है कि एक दोस्त आपसे सवाल पूछ रहा है और आप उससे साथ बातें कर रहे हैं. इट्स अ कॉन्वर्सेशन. सवाल भी क्या पूछ रहे हैं, कॉन्वर्सेशन है. हसन जिस तरह बात करता है वो कॉन्वर्सेशन है. अगर हम नोट करें, तलाल, आपका ये यंगस्टर्स हैं, जस्टिन बीबीज हैं, कोई भी, अब्दुल्ला वगैरह, सब उनकी पर्सनैलिटी नजर आती है. अगर अब्दुल्ला सिद्दीकी आर्टिकुलेट है, इंटेलेक्ट है, वो विजडम नजर आता है, तो उसकी आवाज में, उसकी बात में नजर आता है. आतिफ का एक करेक्टर, एक पर्सनैलिटी है, उसकी आवाज में, उसकी बात में नजर आता है. और कमाल बात ये थी कि सब गानों में भी घुल गए थे. इफ यू नोटिस कि हर बंदा जब गानों को भी अपने एक्सप्रेस कर रहा था ना, आतिफ सेइंग नहीं हूं कमजोर Yes. is is as big as it. Yeah. You have to think about it as a narrative, just this. And he did it so powerfully. Notice it. He did it so powerfully कि मतलब वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है. He did, and I noticed it. I talked about nahi main nahi hu kamzor, and I was like, even there's so much vulnerability in that line, you know? क्योंकि आप ये नहीं बोल रहे कि मैं strong हूँ, आप बोल रहे हो कि मैं कमजोर नहीं हूँ. और
अब ये भी ब्यूटी है. अब इसका भी क्या प्रोसेस था? We involved new people in this as well. We involved Manu. Yes. Manu is a songwriter. He's a very sensitive songwriter जो modern है लेकिन उसकी soul थोड़ी सी old है, beautifully old है. आप उससे बात करें, उसका लहजा, उसकी उर्दू, उसमें वो old soul है, old soulness है जो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है. You know, बहुत अच्छी लगती है. उसको अक्सर मैं कहता भी हूँ कि मुझे उससे बात करके लगता है कि you know, I have known him for a long time. हालांकि मेरी उससे 4 मुलाकातें हैं, 5 मुलाकातें हुई हैं, और उससे फील कैसी आती है. खैर, मतलब there's something about him. So उसके साथ बैठ के भी लिरिक राइट करना मेरे लिए एक प्रोसेस था. उससे भी लर्न करके, उसके रंग में ढल के, लाइंस में, इवन गो के अंदर भी आई हैव रिटन अ फ्यू लाइंस. दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. मुझे दिल जाने ना जाने क्या है, आधी ये बातें क्या, ये 2 लाइनें मैंने लिखी. थर्ड मानू ने उसको हूँ आदि जिन राहों का, फिर आ गया वहां. मतलब ये आखिरी 2 फिर वी कंप्लीटेड टुगेदर. बट यू नो, आई कुड कंट्रीब्यूट इन द काइंड ऑफ मूड जो हमने गो में बना लिया था. एंड कमाल बात ये, सबसे प्यारी बात ये कि इस प्रोसेस में भी आतिफ अननोन नहीं था, आतिफ भी उधर ही था. आतिफ, मैं, अब्दुल्ला, मानू sat together. You know, this is a combination that you can't know it will happen, but this was a combination that was happening inside the studio room. This discussion was happening, and these lyrics were being written. Even Atif की contribution भी, जो melody है इसकी, na 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 na, Atif has made it. Wow. Beautiful, nice. Even वो ना नहीं रात सुनहरी, कुछ दिल से बात ये कह रही. हाँ, और ये melody जो है, ये भी आतिफ की melody. और इसके अंदर भी I wrote a few words. ख्वाहिशों के दर पे बैठा, आंसुओं का बोझ क्यों सहता. This is what I wrote. So मैं कह रहा हूँ, प्रोसेस ऐसा होता है कि आप जब इकट्ठे बैठ के लिख रहे होते हो, बना रहे होते हो, वो उसमें बस हो रहा होता है यार ज्योति, उसमें बस वो हो रहा होता है क्योंकि सब होते हैं ना. और एक भी बंदा अपनी ईगो को नहीं सामने ला रहा होता. हर बंदा यही चाह रहा होता है कि यार वी राइट समथिंग दैट वर्क्स, व्हिच इज इमोटिव, व्हिच इज ब्यूटीफुल, एंड एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड इट एंड यू नो लाइक इट एंड लव इट. सो ईगो खत्म. और अपना क्या कहते हैं, एक तो ईगो भी आपको तंग करती है, फिर आई थिंक ईगो ही है सबसे बड़ी बात जो Ego is आपको the डिस्टर्ब main करती thing. You know, they है. say Is the that main thing. the only thing that gets hurt after a failure is your ego. Everything Yeah. else benefits. So the songs themselves are sounding like sub, you know, puzzle का piece बना के ला रहे हैं और सब उसमें जोड़ रहे हैं और वो फिर final बन रही है picture. It's बिल्कुल ऐसा ही है, टुगेदर. right. Wow, I'm just amazed hearing you talk about all these little details about each song. मैं भी बहुत रैंडम हुआ वो मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्या करूँ. मतलब this is the way I can carry a conversation. This is the only way. No, that's totally cool. I want to go to Beparwah because Momina said something in the BTS where she was like, I was thinking these thoughts, and at that exact moment, I got the call from Xulfi कि ये गाना आपके लिए, you know, you want to do this. So again, the universe conspiring in these beautiful ways. और वो भी पता है, it was like again this room इधर ही बैठे हुए थे, and we were looking for a voice, and I wanted कि ये voice ना has to be a girl's voice. That narrative has to be told like that. I was thinking कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, और अजीब सी बात है. I was sitting with Murtaza, and we were taking a lot of names, and one of the names that we took was Momina. And the moment that name got into the conversation, I don't know what happened to me. I said कि I'm going upstairs to call her. मुर्जी कहते हैं क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, I'm going upstairs to call her. I want to tell this to her. I feel she's the one for this. I was sure. So I went up, I called her, I read these lines, and there was silence for some time. And she couldn't understand what was happening, and at that moment I also couldn't understand कि what is she thinking. थोड़ी देर बाद उसने मुझे बताया कि I was stunned that I was thinking this, and then you called during that. So these two things happening in different universes, and in a way, and they just connected. And usually, you know, मैं इस तरह भी नहीं करता कि एक नाम मेरे जहन में आया हो और मैं कहूँ कि बस यही है. But at that moment मुझे लगा बस यही है और मैंने अभी ही कॉल करनी है. I want to call her right away. I don't know. Yes, you're right. The universe conspiring in ways that are unimaginable. Other forces at play.
मतलब होता था मैं, the more I try to understand the science of it, the more I fail of how it is. I do know that there is a science about a lot of things that happen, and we figure that out, we analyze in the kind of work we do. But there are a few things that are just pure magic. You have to think about them like that. And it all, boils down to the fact that it is starting from a collective honest intent of doing this. And it just takes you there then. Wow. That's the only explanation I can have. And then, उसने निभाया फिर वो गाना. उसने निभाया. The way she has told these lyrics, and even, Adnan was so happy. Adnan has written it. Adnan was so happy कि यार कि ये हम imagine नहीं कर सकते थे कि from her voice this narrative will be told, because we had always heard this song in Adnan's voice. But then when Adnan heard this in her voice, he was so happy कि यार ये अपना निभाया भी गया ज़्यादा और खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट भी हो गया, और मोमना का अपना एक्सप्रेशन, इमोशन भी अब इसमें भी लग रहा है कि यार ये भी इवॉल्व हो गया. So so much happened. I mean, I think वही मोमना के बीच की बात क्या थी कि वो भी तो सेंसिटिविटी की स्पेस से बात शुरू हुई है. आपके सेंसिटिविटी को आपकी रेज हुई भी है तो आपको इफेक्ट हो गया, और वही फिर इफेक्ट एट द एंड ऑफ द डे आपकी उस परफॉर्मेंस पे हो गया, और जब वही परफॉर्मेंस हुई, लोगों ने देखा, उनकी लाइफ चेंज हुई. तो आप आर्ट लाइफ चेंज करने के लिए तो करते हो यार, और क्यों करते हो? Yeah. Everyone's pouring a part of their soul into it, so it's evolving into it. Yes. Wow. That shooting star at the end now, उस video में, whose idea was that? I should ask. Because The timing was the universe. The timing was the universe. We didn't plan it in a way कि shooting star तो जिशान का idea था. It will pass. But the fact कि at that very moment she looks down and she says that this was the universe. Oh wow. Yes, that's how it is, and we all noticed it. बाद में जब हमने edit हो गया, it became such an emotional moment for all of us. Just to witness this has happened. It wasn't planned, but it's so beautiful. So हालांकि beautiful. in the was कि she didn't have to look down. उस shot में उन्होंने ऐसी मोमेंट नहीं ना उधर ही खत्म करना था, ऐसे नहीं करना था. But she just did it for it to happen. So बड़ा कुछ. और by the way, Beparwah was a last of the season. Oh. Last shoot of the season, yes. That's why अभी तो उसका बहुत इमोशनल मैजिकल जर्नी से भी ज्यादा बन सकती थी, लेकिन वो गाना क्योंकि लास्ट नहीं था, तो because it had a final goodbyes to each other, so it was very emotional. Everyone in tears, and but we realized कि people won't get it अभी कि इस गाने के एंड पे क्यों, क्योंकि वो ओवरऑल सब कुछ ही खत्म था ना. And I remember Zishan Pervez, when the last shot happened now. So Zishan Pervez is also such an interesting person. उन्होंने ना he मतलब in this whole process he's become a great friend. So he had been asking me कि how do you feel, this is the last shoot और सारा कुछ. तो मैंने कहा कि I feel okay, I feel normal, बिल्कुल ठीक हूँ. So होता ना, मैं acceptance वाले मोड में भी नहीं था. तो जब आखिरी शॉट शूट हो गया ना, so Zishan Pervez had a mic in his hand and he said, Zulfi, this was the last shot of the season. And he gave me the mic. I just broke down like I've never broken down in my life. Everything, came crashing down in my mind कि वो जो पूरा सारा टाइम गुजरा और ये उस पूरी चीज का आखिरी दिन है, ये आखिरी शॉट अभी हो गया. I said a lot of things, but I said all of them while I was crying. And it became too overwhelming. It became too overwhelming for all of us. But मैं रजिस्टर नहीं करा था उससे पहले. मैं ये कोशिश कर रहा था कि हाँ मैं ठीक हूँ. But when that moment happened, I just couldn't. तौबा. खैर बहुत हैवी हो गया था. मुझे वो सुनने याद आ गया ना एकदम से. एंड फिर मैंने शान को कहा भी, मैंने कहा आपको क्या मुसीबत थी कि आप माइक लेके आके आपने ये अनाउंस किया कि ये आखिरी शॉट है. और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि वो पूरी जर्नी इतनी इंटेंस थी कि उस पॉइंट पे जब वो बात हुई ना, मुझे उसकी ह्यूजनेस एकदम से फील हुई कि ये आखिरी शॉट था. अब
मंथ्स का स्ट्रगल जर्नी सबकी, वो एक मोमेंट के अंदर ठाटा हिट करी और ये खत्म हो रहा है आज। खैर, तो उसके बाद वो बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स थे जिसमें वी ऑल हग्ड ईच अदर, वी हग्ड एंड वी क्राइड एंड we talked and we had such beautiful conversations. उधर हाशिम भी था, जो बैंड था वो सारे लोग भी थे, मोमिना भी, all the team as well, and you could see a bit of it. If you notice, if you see the magical journey of it now, you will see a separate kind of emotion in it. हमारी शक्लों पे उसके towards the end. Watch it So वो again. यहीं से स्टेम कर रहा था कि वो end हो रहा है. खैर anyhow. I think इतना footage होगा आपके BTS team के पास, they can release a nice documentary post season Yeah. वाला. So we have too many stories to tell, Abhi. And I think it's very important to tell that. Yes, It's we very, want to hear them. I think the world yes, will yes. benefit. बिल्कुल, बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो करेंगे भी इंशाल्लाह। I wanted to talk about Thagyan because ब्रेक okay, all the चलें जी, forces in ठगियाँ। the universe. हाँ, Thagyan और specifically Action Zain Yes. and his sounds. My ears were like Yeah. wondering ये क्या हो रहा है. ज़बरदस्त है। नहीं वो I can understand. और Action Zain ना Thagyan. बड़ा Action Zain is a very interesting person and a great friend as well, honestly. As I said, even before भी अभी हम बात करते हुए मैंने कहा था ना कि the moment I heard what he can do to all these folk ideas, narratives, these Qawwali narratives, and how he can make it musical, बड़ा effortlessly. So I knew कि जब हम कवाली करेंगे ना, तो ये ही करेगा इसको. You know, he will be the person who will be arranging this. अब कवाली की भी स्टोरी शुरू होती है ज़ैन ज़ोहैब से एक्चुअली. ज़ैन ज़ोहैब बड़ी मज़ेदार स्टोरी थी. वो आए, I love their voices, I love their textures, बहुत खूबसूरत है. So there is a familiarity to their voices and they are great boys as well. ज़बरदस्त है. तो मैंने उनको बुलाया. मैंने कहा कि यार I want you to be in this season Coke Studio, लेकिन I want you to talk about narratives that you haven't really talked about अभी तक. ठीक है, उनका जो अगर आप वर्क वोकैबुलरी देखें, सो इट्स मोर सूफी एंड स्पिरिचुअल एंड वो. तो आई सेड कि वो आप करते रहो, वो तो आप करते रहोगे, ठीक है, बट इसमें हम आपकी नई लेयर्स भी ढूंढना चाहते हैं, सो जरा चैलेंजिंग होगा. कहते हैं ठीक है. Challenging as always. As always. Then they came after a month कि ज़रू भाई हमने कुछ थोड़ा सा लिखा है. So that was the beginning of ठगियाँ. They sang it to me a little bit. I loved it. And कमाल बात ये कि उसमें जो ठगियाँ का वर्ड था ना, it didn't come at the point जिस तरह अब गाने में आता है. ठीक है. And I was sitting there again with my friend Murzi. Murzi has been, you know, बड़े प्रोसेस में इंटेग्रल रहा है. So he also can pinpoint चीजें, बैलेंस उसको ही pinpoint करना बड़ा अच्छा आता है. तो बैठा हुआ था, हम सुन रहे थे, and you know the same thought, you know, उतने came into both of our heads. उसने बोल दी. उसने कहा यार ये जो ठगियां तुम आगे वर्ड यूज कर रहे हो, अगर तो ये पहले ही कर लो ना, ऑन द कोरस ऑन द हुक, तो बात ही बदल जाएगी. मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है. This is something that I was thinking as well, and it just came out of his mouth. And फौरन imagine हो जाती है बात कि यार this is going to change the fate of the song as well. The way it's going to be conveyed and the way it's going to trigger those beautiful emotions in people. जरा शरारती सा भी हो जाता है, मजे का भी आता है, यूनिक भी हो जाता है, you know. So that happened, and then when they sang it with ठगियां being the hook, फिर उनकी शक्लों के इमोशन भी चेंज हो गए. वो हंसना शुरू हो गए, मजे में आ गए. तो समझ आ गई कि यही है. यही है. And then I sent that to Action Zan. मैंने कहा do your thing, कर दे बस. और उसने ना मुझे एक दो दिन बाद he sent me a groove and some chordal arrangement. मुझे याद है उस दिन ना I had a meeting with the brand team Coke की, and मेरा तरीका actually ये था कि while we were working, I want to involve everyone. So it's not that we are working separately. Even the brand team, they are part of the process. They need to know कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, and they should have an opinion as well. So मेरा है कि शुरू से involve करें. मतलब गाने बनने से पहले से भी you need all the teams together for the analysis, for the statistics, for understanding. आपको stats बहुत कुछ बता देते हैं कि बात किधर जा रही है, क्या करना है, किस तरह करना है. तो आपको ये उन लोगों के साथ मिलके बैठ के बात करनी बहुत जरूरी है, जिनको इन स्टैट्स का सबसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, जिनका इनिशिएटिव है, जिनका प्लेटफॉर्म है टू बिगिन विद, राइट. सो मेरा पॉइंट होता है कि हमेशा आप ब्रांड को इन्वॉल्व करो. तो वो दे वर हियर, एंड दे ग्रेट पीपल बाय द वे, ऑल ऑफ देम,
और उनको मैं वही जितने गाने जहाँ जहाँ तक बने हुए थे ना, मैं सारे सुना रहा था। अभी ठगिया नहीं बना हुआ था। तो मुझे याद है कि जब वो मीटिंग खत्म हुई, आई वाज सीइंग देम ऑफ, एंड उस वक्त एक्शन जैन का मैसेज आया कि ये सुन। अब मैं उनको सी ऑफ करा था, बाय बाय करा था, साहब मैंने प्ले कर दिया, सड़क पे था, मैंने प्ले किया, वो बीट स्टार्ट हुई, मैं नाचना शुरू हो गया। ठीक है? तो एक बंदा उन ब्रांड पे रहता था, ज़ीशान इधर ही था, मैंने उसको सुनाया, मैंने कहा ये सुन, वो भी नाचना शुरू हो गया। हम इतने खुश हुए, मैं तो पागल हो गया। मतलब आपको शुरू इनिशिएट हो जाती है ना चीज़, आपकी खुशी का कोई वो रहता ही नहीं लिमिट। आप कहते हो यार, क्योंकि इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेयर इट कैन गो टू ना, एंड आई थिंक I try doing that unintentionally, कि where it can go to वाली situation. So I could imagine where this can be taken to, the world that can be created around it, और मुझे उसकी खुशी भी इतनी ज़्यादा हुई कि नेल हो गई ये बात। तो बस वो हुआ, फिर मैंने एक्शन जैन को बताया, मैंने कहा यार तू छा गया है और ये कवाली के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तुझे अंदाज़ा नहीं है जो तूने कर दिया। हाँ, और वो मतलब दिस इज़ हाउ आई थिंक एवरी सॉन्ग की स्टोरी इवॉल्व हुई है ऑनेस्टली ज्योति। सो खैर एक्शन जैन I think surprises me every time with his art, and also with the fact कि उसकी जो म्यूजिकल नॉलेज है ना वो डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। उसकी उसका स्टाइल ऑफ अरेंजिंग, मेकिंग अ कॉर्डल अरेंजमेंट विद एनी मेलोडी, वो बहुत रेयर है। मैंने नहीं देखा किसी को उस तरह करते हुए। सो इट इज अनएक्सपेक्टेड। His way of music arrangement is unexpected. His way of creating grooves is unexpected, right? And it has kind of a swing as well, right? So वो उसके अंदर भी एक beautiful old soul है, but वो modern को embrace करता है, लेकिन अपनी musicality को साथ रखते हुए। So अब ठगियां है so much musical information, so much musical information, but it's still mainstream नहीं, सबको पसंद आ जाता है, समझ आ जाती है। So वो बात भी ना कि आप अब इस तरह के जो म्यूजिशियंस होते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स भी, अरेंजर्स भी होते हैं, जो कि नॉलेजेबल हों, ठीक है? यू नीड अ स्पेस फॉर देम एज़ वेल। yes, अब ये तो नहीं कि यस, यू नीड अ स्पेस फॉर देम कि देयर एक्सप्रेशन एंड इमोशन एंड देयर musicality, even if it's technically very profound, there is a way to showcase that so that people can still understand it and love it. yes. Thagyan did that for Actions and for that song as well. So मुझे तो खैर बड़ा मजा आता है। मतलब इनफैक्ट मिक्सिंग ठगियां वाज आल्सो अ लॉट ऑफ फन, अपार्ट फ्रॉम द होल जर्नी जो इकट्ठे हुई। उसके अंदर फिर मुझे भी एक यू नो उस दुनिया में ऐड करने का एक आपको मौका मिल जाता है, टू ऐड टेक्सचर्स, टू ऐड मूवमेंट्स, के अगेन दोज अनएक्सपेक्टेड थिंग्स दैट आर अ सिग्नेचर of actions, and you can add on to that and create a new world, create मतलब world stemming from that world as well. So बस वो I think we were able to create so many worlds together के मतलब अब खुद भी एक, it is surprising in all honesty, it is surprising what we were able to do and understand ये करना। और पता है हर एक ने इम्प्रूव किया, मैं सही बताऊं, इवॉल्व किया, चलो इम्प्रूव को भी छोड़ो, हर एक ने इवॉल्व किया है। हम जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था ना हमने, उस और एंड पॉइंट तक हम सब थोड़े थोड़े डिफरेंट इंटरेस्टिंगली हो गए हैं, ज़्यादा ओपन भी हो गए हैं, ज़्यादा कोलैबोरेटिव भी हो गए हैं, नॉलेज भी बढ़ गई है, एक्सपेरिमेंटल भी ज़्यादा हो गए हैं, कन्वर्सेशन भी हमारी बहुत इंक्लूसिव हो गई है। एंड सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस हैज डन टू ऑल ऑफ अस। खैर, यू Because सेइंग they समथिंग? say no, because they say that a lot of artists make the mistake of saying that this creative work is my baby, when actually it's the other way around. You are their baby. The work has given ये birth to a new you, है ना? बिल्कुल, तो सब ये evolve हो चुके हैं और सब नए, like everyone's become a new person now because of it. दिस Reborn. इज, आपने इतनी प्यारी बात की है यार, से इट अगेन प्लीज। नो नो, आई वांट Uh, टू रिमेंबर इट। ये सेइंग, that artists make the mistake of thinking कि the creative work is my baby, when actually you are their baby, the work's baby. दिस इज एग्जैक्टली, इनफैक्ट डिटैचमेंट भी यही है, जब ये समझ आ जाता है। मैं अब सीरियसली बताऊं, और फिर समझ भी आ जाती है समझ, while you are at it you understand it, and then you move on to next things ना यार। आपने next things पे Exactly. तो जाना है। Yeah, तो as a new person. Yeah, with new as a new knowledge, person, new perspective. Yes. बिल्कुल न्यू But पर्सपेक्टिव। I'm so glad you mentioned the mixing process, because I wanted to ask you. You put a really nice post on Instagram. You call your system your best enemy, which I loved. Because you're clearly always fighting with it, but loving the process. So I बड़ी wanted. फाइट थी। हाँ, so I really want to know कि आप finally कब decide करते हैं कि ये गाना हो गया complete?
कभी भी नहीं। I'll be very honest. Yes, because most artists say कि art is never complete. It's just left unfinished when the artist says हो गया अब और नहीं होता मुझसे. So I don't know, is that you या आपको पता चलता है कि ये soul of the song has been delivered, it's ready now. हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, ये बात तो ज़रूर है कि सोल ऑफ द सॉन्ग डिलीवर करने तक आपको लेके आना होता है, ठीक है? फिर उसमें लेकिन बहुत सारी ना चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर आपके आप नोटिस करना शुरू हो जाते हो, बहुत ही फाइनर डिटेल्स जो कि दे मेक यू गो मैड एंड इफ यू हैव एन ओसीडी अबाउट थिंग्स You do. तो उसके बाद ना उसके बाद आपकी जो आप फाइल एक्सपोर्ट करनी होती है ना, तो मतलब हर गाने का ना, जैसे पसूड़ी था ना, उसका जो फाइनल मिक्स था ना, वो मिक्स 16 था। यानी कि 16th मिक्स उसका जो फाइल थी वो फाइनल फाइल थी। इस तरह गानों के 17, 18, 20, 14, 10 जो 10 से नीचे-नीचे होते थे वो तो ब्लेसिंग होती थी। Wow. लेकिन all I'm saying is कि when you start noticing the finer details and you start adding things, or even in the mixing process, you talk to a lot of people. Like for Pasoori, I was having conversations with Abdullah and Ali Sethi, and Sherry, Turab as well from the Sound Squad. These were my people. जिनसे गानों पे depend करता था, लेकिन I always consulted Sherry, Abdullah, and Turab. You need fresh ears perspective. Sometimes you miss something, they can add a bit of that, add that back कुछ आप अगर मिस कर जाओ, कोई नया perspective भी दे सकते हैं. So मेरा प्रोसेस मिक्सिंग का है वो भी कोलैबोरेटिव ही होता है. So मैं क्या बता रहा था? हाँ, क्या पूछा था आपने? हाँ? Different versions बन गए ना सब गानों के. हाँ, मतलब वही है कि वो कभी भी ना वो फिनिश वाली बात आप कर रहे हो ना, आप अभी भी सुन के तो सोच सकते हो कि अच्छा इसमें मैं ये कर सकता था, लेकिन यहाँ वो फ़र्क बात है. You have to complete it in a way which you said very nicely as well कि सोल कंप्लीट हो जाएगा. बाकी बहुत फ्लेवर और रिलेटिव वाली बातें हो जाती हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ा लाउड हो सकता था, मुझे लगता है नहीं हो सकता था, किसी को लगता है हो सकता था. बट इफ द सोल इज बीइंग डिलीवर्ड इन एब्सोल्यूट ग्रेट प्रिस्टीन क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास, ग्लोबल, बस that was the most important part for me, because mixing this music, this genre-less music which has so many textures and sounds, and मेरे लिए भी तो एक स्टेप फॉरवर्ड था ना कि इसको मिक्स कैसे करना है. तो मैंने भी लर्न किया मिक्सिंग प्रोसेस से पहले. मैंने आई यूट्यूब द हेल आउट ऑफ मिक्सिंग लेसन्स एंड अंडरस्टैंड कि जो मॉडर्न मिक्सिंग होती है उसमें माइंडसेट क्या होता है, जो खुद मेरी नॉलेज थी, एक्सपीरियंस, उसको भी उसमें डाला. फिर लोगों की बातें सुनी, लोगों की टेक्निक्स देखी, नया म्यूजिक ज़्यादा सुना समझने के लिए कि साउंड्स क्रिएट कैसे हो रही हैं, ट्रीट कैसे हो रही हैं. देन आई वेंट इनटू द प्रोसेस विद कॉन्फिडेंस कि अच्छा ऐसे करना है. और ये फिर ऑनगोइंग था. हर गाने से पहले मैं सुनता था डिफरेंट गाने, मैं सुनता था डिफरेंट लेसन्स लेता था ऑनलाइन जो होते हैं आपके यूट्यूब पे, जस्ट टू अंडरस्टैंड द सेंसिबिलिटी बेटर एंड जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा हर गाने का मिक्स पिछले से फर्क हो. I'm adding something else to it, I'm adding more textures to it, and as I said, the production never stops. Mixing में भी आप इतनी story tell कर रहे होते हो with the movements, with reverbs, with echoes, with textures, with different musical elements जो कि उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन from what has already happened, the recordings that you have, you can create new movements with them, new textures through them. So वो authentic भी रहते हैं to the performance, वो story भी वही tell कर रहे होते हैं, but they make the world even more sensitive, even more emotional, even more beautiful, and effective as well at the same time. जिस तरह Mehram में, if you notice, there is asfar and then there's a diwar, there's a wall, and then there's a root. So I have created one reverb for both of them, and that reverb is moving like a pendulum across the walls, like this, right? So their sentiment is echoing, even if it's not clear, it's so dim. But it wants to reach the other person, but then it comes back, and then it goes, and then it comes back. It's reverberating in that space. And when they go there, when they're facing each other, then it becomes one. It's not reverberating like that anymore. So these are little details that और इस तरह की पता नहीं कितनी डिटेल्स ऐड करते हैं इन द मिक्सिंग प्रोसेस, जो कि सबलिमिनल और सबकॉन्शियस लेवल पे इम्पैक्ट कर रही होती हैं और कर रही होती हैं. ये तो 200% कंफर्म बात. Yes. सो स्टोरी टेलिंग नहीं रुकती यार, और रुकनी चाहिए भी नहीं, बिकॉज फिर हक नहीं अदा होगा ना पूरे प्रोसेस का. जितना हमने जान दिल दिमाग लगाया है इस पॉइंट तक पहुंचाने में, तो फिर उसका आखिरी स्टेप भी उतना ही दिल जान दिमाग लगा के कंप्लीट करना. बस खैर, बहुत मिक्सिंग की बात करूंगा फिर वो 1-2 घंटे और लगेंगे. So I know we already, but
You said this was even this was a collaborative process. I thought आप अकेले बैठ के कर रहे थे room में. नहीं, अकेला मिक्सिंग अकेला ही बैठ के करता हूँ. जब मिक्स Okay. कर लेता हूँ, मिक्स करने के बाद मैं फाइल भेज देता था. जिस तरह मैंने शहरी को भेजी कि बता यार कुछ तुझे क्या लग रहा है, उसके कोई पॉइंटर्स होते थे, इम्प्लीमेंट करता था. मेरा प्रोसेस असल में ना टेक्निकली स्पीकिंग we recorded everything in 24-bit 96 kilohertz, which is very high resolution to record on. So जो computers है ना हमारे, and the way I work with all these movements and textures and things being panned from left to right, front, back, सब कुछ, वो जो crazy movements हैं वो इस resolution पे जब आप processing में जाते हो ना तो computer भी एक time पे कहता है bye bye, I can't process this. Can't take it anymore. Project तो बंद हो जाता है, I can't take this anymore. वाली situation होती है. तो वो ऐसा प्रोसेस होता है कि मैं अकेला ही बर्दाश्त कर सकता हूँ. मेरे साथ भी बैठ के नहीं कर सकता. When you have to freeze the tracks and you need to make sure the project runs again, so it becomes stressful as well. But वो high resolution का फायदा ये होता है कि उसमें जो harmonic detail ना वो unparalleled है. On a high resolution, if you record, it's unparalleled. Especially the high end, it's so beautiful. And you know, it also is part of that story. The struggle is part of that story as well. So yeah, mixing was something like that. Loneliness थी शदीद, ऐसे ही जैसे थी, but I think I wanted and I needed that loneliness as well after a very you know, इतने ज़्यादा लोगों से मुलाकात, इतने ज़्यादा लोगों के साथ काम, और वो चलता जा रहा था, साल हो गया वो चलता जा रहा था, राइट. एंड ब्यूटीफुल था, सब कुछ था, बट I actually then needed that silence as well, the silence that is here. And then you can hear the inner voice telling you, this is the song. Yeah. This is what. Wow. Yeah. You know? For me to connect back. Yes. To back telling that story and completing it. You know, and that was very important मेरे अपने लिए. ये मुझे पता है. Amazing. And what was your sort of directive that you gave to the video team and the sets team? I really want to know, because I think the world wants to know. Every song having a music video, every song having a crazy different set. You know, when I presented now, before everything, ठीक है, तो उसमें एक slide थी, one story, one narrative, and cinematic, असली बातें, और इस तरह की बहुत सारी बातें मैंने एक slides में लिखी हुई थी कि cinematic होना है, एक story होनी है, visual, sound एक है, and we are going to have every different story, and it's going to have a different visual, right? आप जब ये बात वीडियो डायरेक्टर को बताते हो ना, उसके लिए बहुत एक्साइटिंग होती है. उसको लगता है कि यार हमें नई दुनिया बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलने लगी. वी कैन कार्व सो मेनी डिफरेंट वर्ल्ड्स नाउ. तो फिर होता ना, नेचुरली क्या होता है जो मैंने नोटिस किया, देन दे ओन इट यार. देन नाउ दे नो कि यार this thing happening through Coke Studio is something that is going to go to so many people. So it becomes again that place of belonging. This way we can express, and then the world is going to witness it. So if we want to express ourselves, we can thoroughly do it. हम रुकेंगे नहीं. The right people actually recognize opportunities in the challenges. Yes. बिल्कुल. उनमें कमाल, जमाल, मुर्सी, जो they were in the right space, and Zishan Pervez, right? So these people were at the end, they understood this opportunity. ठीक है. And then the kind of teams they made, जिनको मैं भी नहीं जानता था यार. The Hashim, Fatima, जानता था in the sense कि I knew these people, but I didn't know them personally. इस process में मुझे फिर समझ आ गया. ठीक है. And then I realized कि their art, their expression is also so important to the whole narrative. वो पहले ही गाना हो रहा था ना, जब पहला गाना था, by the way, can you guess कि पहला शूट कौन सा होगा वैसे? नहीं ना? नहीं. तू झूम? नहीं. कना यारी. Oh, with the moving सबसे walls. मुश्किल, हाँ, सबसे मुश्किल हमने सबसे पहले ही कर लिया. आसान नहीं था. वो उससे हमें challenges समझ आ गए थे कि अब फ्यूचर challenges क्या आएंगे. वो दीवार मूव करनी, सारा कुछ. बल्कि इनफैक्ट वी मेड श्योर कि वो दीवार मूव भी ऐसे हो कि उसकी साउंड ना हो, बट आसान नहीं था. 4 लोग 5 लोग उसको मूव कर रहे हैं और उनको पता होना है कि किस टाइम पे मूव होना है, और साथ शोर भी नहीं मचा सकते, साथ रिकॉर्ड भी हो रहा है. एनीहाउ, जब कना यारी का सेट बन रहा था ना, देन आई आके देखा जब, the way people were working on it, the colors, the textures, the way it was lit, the kind of rooms that were made. Every room was a beautiful art piece, honestly. Yes. Okay? And the way it was lit was also so artistic. कि मैं वहाँ जाके ना, मैं
मैं अजीब सा इमोशनल हो गया ज्योति कि यार ये विजन यहाँ तक आ गया. एंड देन आई सॉ पीपल वर्किंग एंड अमेजिंग पीपल वर्किंग ऑन इट. फिर मैंने डिस्कशंस नेक्स्ट स्टेप इन से लेके गया. मैंने पूछा what how are they thinking it. ठीक है, फ्रॉम द स्टाइलिस्ट टू एवरीवन सब समझ आना शुरू हो गया क्या है. फिर आमिर मुगल वाज द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी इन दिस. उसने जो लाइट की हुई थी यार वो इतनी खूबसूरत थी कि पता नहीं मतलब मैं वो लगता था कि वो दुनिया ही एक अलग है, राइट. और हर गाने पर ऐसा ही हुआ पाया. मैं जस्ट एग्जांपल इसके दे रहा हूँ. बट हर गाने में ऐसा होता था कि जब वो लाइट होके जब दुनिया बनती थी तो वो हम सबकी एक एक्साइटमेंट होती थी कि वाह यार मजा आ गया. फिर वही सेट आपका टूटता था, उसका दुख होता था. फिर नया सेट बनता था, फिर उसकी एक्साइटमेंट होती थी. तो हम 13 दफा हमने ये जो है ना अप एंड डाउन देखा है, एक्साइटमेंट का बनना, एक्साइटमेंट का टूटना. एंड एवरी विजुअल, एवरी आइडिया दैट वाज हैपनिंग वाज अ चैलेंज. आई मीन इफ यू क्रिएट अ सेट जो कि इतना इंट्रिकेट, डिटेल्ड, विजुअल स्पेक्टिकल, अब उसके अंदर आपने सोनिक का भी ख्याल करना है. You have to record your audio in it as well, right? अब उसके अंदर भी हमारे पास साउंड स्क्वाड था जो कि they patched all the audio, जितनी भी पॉसिबिलिटी होती थी उसकी कि जिस तरह पैच कर सकते हैं. बिकॉज देयर वाज नो सेट कि ये एक स्टेज है इस पे बजा रहे हैं. रूम्स हैं, कॉर्नर्स हैं, कहाँ कहाँ चीज रखनी है, क्या रखनी है. एंड ऑल ऑफ दैट यूज टू हैपन एवरी टाइम देयर वाज अ न्यू सेट, ऑब्वियसली. सही. सो पता नहीं बात शुरू कहाँ से हुई थी, ले किधर गया हूँ. लेकिन वो जो चैलेंज था ना ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड एवरी टाइम व्हिच एक्साइटेड अस. एंड देन टू अकॉम्प्लिश दैट चैलेंज आपने सब में दिन लग रहे हैं, रातें लग रही हैं और हम इसको मैनेज कर रहे हैं. वो ब्यूटीफुल भी था लेकिन वो बहुत ओवरवेलमिंग भी था. और कभी कभी लगता था कि ये सच्ची बात है, इम्पॉसिबल है. हाउ विल वी डू इट ओवर एंड ओवर अगेन. बट इन ऑल ऑनेस्टी दीज पीपल जो थी, सारे के सारे लोग, डायरेक्टर से लेके, आर्ट डायरेक्टर से लेके, साउंड स्क्वाड से लेके, जितने कोरियोग्राफर, आपके Makeup, वीडियोग्राफर्स, wardrobe, everyone. वर्कर्स, वार्डरोब स्टाइलिस्ट, ये सब लोग ऐसे थे कि यार ये हमने करना ही करना है. मुझे तो एकदम लग नहीं रहा था कि यार कि होता ना कि आप किसी ब्रांडेड प्रोजेक्ट के लिए आए हुए हो. ऐसा नहीं था लग रहा था. वो लग रहा था कि वो वाकई अपने दिल से पूरी अपनी एफर्ट और इंटेंट से काम करके कुछ खूबसूरत क्रिएट करना चाहते हैं. तो ये कोलैबोरेटिव फ्रीडम I think was the main ingredient, was the main essence. And then I had a few, references of how the world is working on this format. So I had collected those videos. Okay. I showed to सारी की सारी टीम कि देखें कैसे सोनिक और विजुअल एक थिएट्रिकल एक्ट बन गया, एक सिनेमैटिक एक्ट बन गया. अब जिस तरह यूजुअली इन म्यूजिक वीडियोस क्या होता है, म्यूजिक वीडियोस में इट्स सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट में आप यूजुअली देखते नहीं हो कि माइक्रोफोन्स है, तारे हैं और आपके गैजेट्स लगे हुए हैं और लोग बजा रहे हैं. ये म्यूजिक वीडियोस आर रिलेटिवली मोर cinematic in a different way. They are telling a story in a different way. I thought if you actually add all this real authenticity of how you're recording into the cinematic narrative, ये कुछ नया ही बन जाएगा कि अगर इसको लेके साथ चलेंगे. And I think then from there on, the directors now, they actually understood, not just understood the concept, they upped the game. Yes, they did. जिस तरह पहले they did. कना यारी हुआ, उसमें जिस तरह मूवमेंट की, वॉल्स मूव करनी है, साथ साथ हुआ, चैलेंज लिया ना कि हमने इस तरह कॉन्सेप्ट बनाया. फिर मिलेंगे, वन शॉट करना है. और वो भी फिर मिलेंगे. मुश्किल वन शॉट था. वो वो आसान नहीं था. बट बाय द वे, डू यू नो दैट वाज द ओनली डे we got free at 5:30 p.m. in the evening. Otherwise, every shoot हम सुबह फ्री होते थे. But that Oh. फिर मिलेंगे was a magical day when it was all done, ready हो गए, अब हम रिकॉर्ड कर रहे थे. Something happened कि we were done in 4 takes. 4 दफा हमने 1 take किया. Obviously एक ही take select होनी थी because that's how 1 takes are. So the best take had to be selected. वो तो हमारी second last take थी that we selected out of all those takes. उसमें वो सुबह के वर्ड के साथ उनके बिल्कुल टाइम पे उन्होंने क्रॉस पिक किया. वो मैजिक सब हो गया. वो फिर वो समझ आ गई थी कि यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया, इससे अच्छा नहीं हो सकता. बट आई एम सेइंग ये चैलेंजेस को और आगे लेके जाना ना, मैंने तो बिगिन ही किया ना और एक प्लेइंग स्पेस दे दी. प्लेइंग स्पेस के बाद जब इतने आर्टिस्टिक माइंड्स इकट्ठे होते हैं यार, तो वो आपने जो सोचा होता है उस इतना आगे ले जाते हैं, इतना आगे ले जाते हैं कि आप खुद भी सरप्राइज होते हो. क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ही फैसला किया कि यार वी हैव टू not just prove to the world, but we have to represent Pakistan's artistic progressive side to the world. सब बड़े पता पैट्रियोटिक हैं, मैं सही बताऊं. और सबको अब, और उसके बाद अब इतने मुझे मुझे किस बात की खुशी होती है. अब जिस तरह हाशिम ने एक सेट बनाया
ठीक है। अब इस तरह पसूड़ी के लिए उसमें हम कराची में शूट कर रहे थे, लाहौर से एक पेंटर आर्टिस्ट बुलाया दीवार को पेंट करने के लिए, क्योंकि उसको पता था वही कर सकता है। ठीक है, अब सोचो आप, अब ये हो रहा है, ये वो बातें हैं जो मुझे इन द मिडल ऑफ इट पता चली, मुझे भी नहीं पता थी कि वो ये मेहनत का लेवल यहाँ तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही थी। और अब मैं देखता हूँ ना कि जब आर्ट वर्क लोग बनाते हैं, जिसमें वो सेट्स बना रहे हैं, जिसमें वो वार्डरोब बना रहे हैं जिन लोगों ने पहने हुए हैं, अब आप खुद सोचो ज्योति, जितने लोगों ने काम किया है, उनकी खुशी क्या होगी यार, Can't कि imagine. उनका आर्ट So rewarding. उन Hmm. सो इमोशनली रिवॉर्डिंग एज वेल, ये कभी नहीं देखा था मैंने होते हुए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मेरी असली अगर खुशी मैं आपको बताऊं ना, वो ये है कि जितने लोगों ने इसमें काम किया ना, वो भी रिप्रेजेंटेड है, और उनका काम और आर्ट्स में भी रिप्रेजेंटेड है विद ऑल द आर्ट वर्क दैट हैपेंड, वो एक हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। उनकी और आर्ट ये भी समझ आती ग्लोबली है कि रीच कर, हाँ सॉरी, ग्लोबली रीच कर गई। नहीं नहीं, बोलें बोलें, बिल्कुल बिल्कुल। सो ये बहुत बड़ी खुशी है। और सबसे, लेकिन इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ये बात, यू नो, व्हेन वी डिस्कस्ड विद द ब्रांड के यार, every song, every narrative needs to have its own visual, needs to have its own world created around it, ठीक है, उनका ये बात समझना और उस पे थम्स अप कहना कि हाँ यू राइट, ये भी बहुत बड़ी बात है, is इतनी बिकॉज फ्रीडम, 13 या ईयर्स ये फ्रीडम, तो ये अब ये जो फ्रीडम है ना, ये स्टार्ट होता है उस पॉइंट से भी कि जहाँ जिनका इनिशिएटिव है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो ब्रांड है, वो अगर ये फ्रीडम उन्होंने मुझे दिया कि करो जो तुम करना चाहते हो, तो फिर वही तो ट्रेवल डाउन करेगा ना, वही तो एब्जॉर्ब हुआ है, वो ट्रेवल डाउन भी किया कि यार अच्छा, अब हमने ये चीज स्टार्ट कर दी है, अब हमने भी ये वाला फ्रीडम देना है आर्टिस्ट्स को, कि वो बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं। और बहुत सारी डिस्कशंस ऐसी भी होती थी जिसके अंदर, जिस तरह अच्छी बात क्या थी, whoever used to think of anything ना, जरा कमाल है, जिशान है, they used to call foreign, they before finalizing any and everything they used to call and used to discuss again, वो भी collaborative थे, used to discuss it all together कि अच्छा कि और हम इसको कैसे improve कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर ये भी होता था, मैं गाना मिक्स भेजता था डायरेक्टर को, तो जिशान मुझे बताता था कि यार ये देख ले, शायद ये इम्प्रूव हो सकता है, मैं वो बात भी सुनता था। वो एडिट भेजते थे तो मैं उनको कह रहा था यार ये एडिट ऐसे इम्प्रूव हो सकता है, तो वो मेरी बात भी सुनते थे। हम तो बल्कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हमने, मैंने और जिशान ने एडिटिंग भी की हुई है कि वो मुझे बता रहा था क्या। सो मैं कह रहा हूँ जो लेवल ऑफ अटैचमेंट था ना ये वाला प्रोसेस से, वो बड़ा फ्रेंडली और बड़ा आजाद और खुशी का एक, मतलब क्या कहूँ यार, वो इस तरह का एटमॉस्फेयर ज्योति बन गया था कि जहाँ एवरीवन वाज गिविंग देयर हार्ट आउट यार, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इट इन एनी beautiful. अदर वे। So beautiful, but you clearly given the creative freedom to the people in the team. Coke has given that creative freedom to you. बिल्कुल। उस freedom वाले space में फिर ideas reject कैसे होते हैं? Because obviously then सब ideas आप, you know, you're telling people bring all your ideas, but you also have to discard some. I'll answer it honestly. See, जब आइडियाज क्रिएट हो रहे होते हैं ना, बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे, क्योंकि ये मैंने किया है, मतलब ये, मतलब यहाँ तक कि अपने आइडियाज भी रिजेक्ट किए हैं, दूसरों के भी किए हैं, दूसरों को लेकिन समझा के किए हैं यार। चलो I'll try to explain. It's not easy. It's not easy in a process where you give the creative freedom, and in fact you collaborate in that creative freedom because there are so many people doing it. But once something doesn't work now, so I have given myself this freedom to admit it. Right. Yes. Be honest. And be honest. And when that happens, I tell my team this doesn't work, and then I tell them not just because I am saying this doesn't work. I have a complete list of points that I will tell them why it doesn't work and how we need to go sideways or किसी और जगह पे सोचने के लिए. I don't say that this is good or bad. In fact, a lot of songs that we made, all of them are great songs, good songs, जो हमने नहीं भी किए, या चलो कुछ छोटा आइडिया भी जो वीडियोस में इम्प्लीमेंट नहीं भी हुआ, अब एक बताने का तरीका भी होता है, राइट? बहुत सारे ऐसे एडिट्स भी, चीजें एडिट में भी चेंजेस हुई, क्यों नहीं हुई, जो हमने कहा कि नहीं ये एडिट आउट हो सकती हैं, कुछ चीजें एडिट इन हो सकती हैं। जैसे पसूड़ी है, पसूड़ी का इंट्रो वाज एन आफ्टर थॉट, जो विजुअल इंट्रो है, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान ओरिजिनली, बट व्हेन वी सॉ द वीडियो वी रियलाइज कि देयर हैज टू बी अ विजुअल नैरेटिव बिफोर इट, सो दैट टू, यू नो, टू कन्विंस द ऑडियंस इनटू कि दुनिया, आपने दुनिया को इंट्रोड्यूस करना है पहले इसकी, इस पसूड़ी की। सो देन दैट इवन म्यूजिक वाज मेड बाद में, अगेन इट वाज एन आफ्टर थॉट। सो दैट्स हाउ इट इवॉल्व्स।
सो इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं और इतनी सारी चीजें आप सोच रहे होते हो कि और इतना कुछ भी हो रहा होता है ना, तो ज्योति आपको ऑनेस्ट होना पड़ जाता है। और ये भी मुझे पता है कि जब ऑनेस्ट होते हो ना, तो फॉर द टाइम बीइंग जिससे आप ऑनेस्ट हो रहे हो, वो शायद फौरन एम्ब्रेस भी नहीं कर पाता है इस बात को कि ये मुझे क्यों ये बात की है। होता है, बट आफ्टर सम टाइम ना थोड़ी समझ भी आ जाती है। आई डू ट्राई माई लेवल बेस्ट के प्यार और दोस्ती और काइंडनेस में ही सारी बातें हमेशा हों, हमेशा। ठीक है? और अच्छी बात ये इस टीम की पता है क्या थी? दे लिसन एट द एंड ऑफ द डे। ये ऐसे नहीं है जो दे डोंट लिसन। एंड इफ बाय द वे, इफ आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड समबडी थिंक्स कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप ठीक हो, तो मैं वो भी सुनता हूँ, मैं वो भी सुनता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं वो नहीं सुनूँगा। लेकिन मैं फिर भी अंडरस्टैंड ज़रूर करवाने की कोशिश करूँगा कि यार यू नो इफ समथिंग इफ वी डू इट इन दिस वे, मे बी इट बिकम्स बेटर, लेट्स ट्राई। फिर हम वो चीज़ ट्राई करते थे और वो जब समझ आ जाती थी कि अच्छा यार अगर ये वाली चीज़ बेहतर है तो वही करनी चाहिए। सो दिस इज़ हाउ इट यूज्ड टू हैपन। आई डोंट मैं लोगों को अपनी कोई बात मनवाता नहीं हूँ। मैं उस प्रोसेस में आता हूँ जिसमें डिस्कशन हो एंड आई फिर देन वांट टू convey to them why I feel this is the right way. So that has been my way all the time, not forcing my way in, but just through the process implementing it. Also, लेकिन it सबसे just पहले sorry. सबसे पहले अपनी एडमिशन, अपने से हाँ एडमिट करना जरूरी है कि दिस इज नॉट वर्किंग। या हाँ मैंने it just made me remember this thing I read कि artists sometimes attach so much this thing to their work, they start thinking of it as sacred and very so important when they should treat it as play, and what's actually sacred is the time they spent on it and how that time spent expanded their imagination, and then that expanded imagination then transformed their life to become a better creator. So एब्सोल्युटली। you know, the more lightly you think of that time, the easier your existence becomes as an artist. So and बिल्कुल the बिल्कुल। lighter. So nice. और Yeah, dealing with rejection is part of being an artist as well. हाँ, और एंड इट्स ओके बताऊं मैं, मतलब एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई आइडिया नहीं जा रहा तो मुझे भी तो पर्सनली पता है कि आई एम रिजेक्टिंग माय ओन सेल्फ। Agreed. Yeah. क्योंकि these were the ideas that we were working on, and if I'm the captain of the ship, तो सबसे पहले तो मैं अपने आइडिया को रिजेक्ट कर रहा हूँ, so everybody knows it Yeah. कि I am not, if I veto something, so it's I'm vetoing my own self. So अच्छी बात ये है ना कि आप टीम में होते हो ना तो आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, ऐसा नहीं होता कि आप दूसरा अंडरस्टैंड नहीं करता। Again, it's still not easy, I'll be Yeah. very honest, it's still But not easy. kindness helps. Kindness helps, yeah, बिल्कुल, You know? kindness helps. But before we like start wrapping up, I want to talk about Abdullah because I feel he is like he's a prodigy, everybody knows and can see that. But like you, I feel like he's also now on a mission to expand the musical landscape in the region in a way only he conceives in his mind, no? आई थिंक ही ना सबसे इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो भी ना एक ही इज ऑलवेज ओपन टू क्रिएटिंग न्यू साउंड, ही इज आल्सो जॉनरालेस। उसको भी कोई जॉनरा कोई कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। एंड ही मेक्स सो मच म्यूजिक, ज्योति वो इतना म्यूजिक बनाता है, वो रोजाना बैठ के कुछ ना कुछ बना रहा होता है। एंड ही ना इज आल्सो समबडी हु डिस्कवर्स न्यू साउंड्स और देन टेक्सचराइजेस देम, देन चेंजेस देम इनटू, मोल्ड्स देम इनटू साउंड्स जो कि अनबिलीवेबल एंड इमेजिनेबल टाइप लगती हैं। सो ही हैज दिस यूनिक, ही एड्स दिस यूनिक कैरेक्टर टू व्हाटएवर ही इज डूइंग। दूसरी उसकी अच्छी बात पता है क्या है? उसका इंटेलेक्ट और उसका विजडम। He also thinks ahead, and for me to work with him, why I actually love working with him was कि उसके साथ जब मैं टाइम स्पेंड करके बात कर रहा होता हूँ ना, I can't explain, but it's a healthy evolution happening on both hands right there. It's like dots are connecting, conversations are connecting, new ideas are growing. मतलब we have these listening sessions as well जिसमें वो मुझे म्यूजिक सुना रहा होता है, मैं उसको म्यूजिक सुना रहा होता हूँ दुनिया भर का। अभी 4-5 दिन पहले भी हुआ। वो उसकी जर्नी ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसकी जर्नी सिमिलर है इस मामले में। ही इज ऑन हिज ओन मिशन एज वेल। एंड एक बात बताऊं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, दैट वी नीड मोर पीपल ऑन सच मिशंस। Agreed, 100%. एंड देन ना फिर वो उसका जो कलेक्टिव इम्पैक्ट होगा ना, उसकी बात ही और। एंड अब्दुल्ला इज समबडी हु इज आल्सो वेरी वेरी
happy to learn, eager to learn, eager to understand, eager to, you know, और उसका भी Inquisitive, बिल्कुल वही curious. curious है and I think बहुत important है curious होना, ठीक है। और दूसरा mundane से फौरन तंग आ जाता है, और दूसरा एडमिशन भी है उसमें, जब उसको भी फील हो रहा होता है ना कि अच्छा यहाँ एवोल्यूशन की ज़रूरत है, कि मे बी कोई आइडिया अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसको भी समझ आ जाती है कि अब मैंने भी इवॉल्व करना है। ही ऑल्सो हैज़ दैट नैक ऑफ एडमिटिंग टू हिमसेल्फ कि अच्छा दिस माइट नॉट बी अ गुड आइडिया। ये भी लोगों में नहीं होता ना, बिकॉज़ अगेन व्हेन पीपल अटैच देयर ईगोज़ विद देयर आइडियाज़, वो अपने आप को रिजेक्ट नहीं कर पाते, और वो उसमें बात नहीं है, वो ओपन है, वो भी ओपन है। सो ये मैंने जितने लोग ये देखे हैं ना, और बाय द वे एक बात बताऊँ यार, द रेस्ट ऑफ द पीपल एज़ वेल, आई मीन अब्दुल्ला तो एक अच्छी बात ये है ना कि वो एक नेशनल ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। एंड एज आई सेड वी नीड मोर पीपल लाइक दैट, एंड आई थिंक ही विल बी एबल टू डू इट। द नेक्स्ट म्यूजिक दैट ही इज वर्किंग ऑन फॉर हिज ओन एल्बम, द व्हाट आई हैव हर्ड, it's remarkable. It's again telling a global story for from coming from this region to the world, and that needs to happen even more with that vision in mind as well. And I think everyone is capable. Action Zain is capable. Sherry is capable. Youngsters are capable. Okay, so you know, all of the people, and I think Coke Studio 14. What एक तो बहुत अच्छी चीज, obviously the kind of music it has done, people are connecting to it, relating to it, but the other thing ना, एक world of possibility दिखा दिया इसने। Yes, absolutely. अब वो world of possibility बड़ा inspiring है for people to now think of things that they probably wouldn't have thought of before, कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। So that is my curiosity. What is now going to happen? Abdullah Siddiqui, obviously, I think after this he will come out even more stronger, more mature, more intellectually more interesting, exciting, और पता नहीं क्या क्या करेगा। लेकिन वो बच्चा ऐसे कि मतलब मैं वो बैठता हूँ ना उसके साथ भी, बात भी करता हूँ, तो आई थिंक उसके साथ ना मेरा सेंसिटिविटी लेवल हाईएस्ट हो, क्योंकि वो भी ऐसा ही वो भी ऐसा ही डरपोक नहीं है, नहीं हूँ कमजोर। उसकी उसमें भी ये जो बात है ना, बहुत प्यारी है। एंड आई वैल्यूड माय टाइम्स विद एवरीवन इन दिस प्रोसेस, ज्योति, with everyone, and I have found new I think layers to myself as well. I've discovered myself further in this as well, and I've discovered others in this as well, the way they are, what क्या क्या उनकी layers unlock हो सकती हैं, क्या क्या possibilities वो create कर सकते हैं। It has been beautiful, I think honestly. you and everyone involved in the project is probably feeling newborn, you know, like a newer version of them has come out of this experience. True, So true, even the true. Talhas, even Faisal, who's been in the industry for so long, I think he said it in the BTS also. I never thought I would come back and do something like this, a song like this. एक जबरदस्त बंदे हैं, पता है। He's like an advocate, honestly. Well, he has so much advice, अच्छी suggestion to offer, and because of his experience with Coke Studio for for the seasons that he has done with Bilal, I think उनका wisdom ने मुझे बहुत help किया इस पूरे process में। Really? बड़ा एक balance था। Yeah, he's like an elder brother. I can call him anytime and ask for help, any suggestions, any opinion. जबरदस्त बंदे हैं। And I have to thank you on behalf of the world for bringing him with the youngsters together in Milenge. Like, thank you for giving us that combination. I'm happy people love it. I'm happy they've made a part of their lives. इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, I'll be honest. Amazing. But they had a world together. He just had to untap it. ये तो मुझे पता था. They had a world together with Guman, with Zinda, the musical textures, the expression, the narrative. Oof. And because of those two songs, you connected their names, you know? Yes, bilkul. And these are my two favorite songs of each of them. Right. Zinda is my favorite string song, and Guman is my favorite youngsters song. Yeah. The Talhas continue to amaze. Yes. है ना? बिल्कुल, तलहास की स्टोरी हुई है, वर्ल्ड चेंजिंग है, ग्लोबल चेंजिंग है, and we are going to see this. We are going to see this in the coming times. We're already seeing it. Yes, but अब global level पे मजीद, जैसे I know they have a fandom everywhere, but their story again, जैसे सिद्दीकी की बात करते हो ना कि he is like on a mission, right? और वो mission global हो रहा है. Similarly, youngsters का भी mission, by the way, honestly, global तो तकरीबन हो ही चुका है, लेकिन अभी इसने इतना फैलने के they will be collaborating with the best of the best, because they are the best as well. क्यों नहीं? Absolutely. तो यार अब वो चीज वहाँ पहुंचनी और पहुंचेगी,
पहुंचेगी। Pachegi for sure. So we were talking about Ye Dunya, and like I said, Sherry mentioned in his interview कि गाना almost नहीं हुआ और पर फिर all of you collaborated and made it happen. ऐसे कोई और गाने थे जो नहीं हुए या हमेशा से 13 ही गाने होने वाले थे? नहीं थे तो वी प्लान्ड ऑन लेकिन जनरली जो कोलैबोरेशंस सोची थी, कुछ कोलैबोरेशंस भी चेंज हुई दरमियान में, ऐसा नहीं कि नहीं हुई। बट जो चेंज हुई भी ना, वो भी ऐसी नहीं थी कि उन कोलैबोरेशंस के बारे में हमने कभी बात ना की हो। सो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट देम, बट वी डिडंट नो कि एट द एंड बात वहाँ पहुँच जाएगी। But there were a lot of song ideas that we made for so many collaborations that didn't happen. But that's the beautiful part as well. I mean, अब वो गाने भी मतलब उन पे भी हमने दिल लगाया है, जान मेहनत लगाई भी है सबने और सबने उस पे काम भी किया है। वैसे 2 सॉन्ग्स आर ऑल वो भी एग्जिस्ट करते हैं, बट यू नो Okay. अनलकीली वो they couldn't be in the season, but they are still great songs. As I said about there was करा करम का पहले भी हम कर रहे थे. I really love that song. I really love that song. So in the future, kabhi I guess Kara Karam We should be might see it releasing that. in the. Yes, 100%, 100%. It is the kind of song that I have such a strong feeling will be loved by so many beyond their territory as well, beyond their fandom territory as well. It's that kind of a melody, kind of a song. तो मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे ज्योति बहुत और ऐसे गाने भी थे। जहाँ अब्दुल्ला सिद्दीकी का हमने स्टार्ट किया, कभी आप उससे भी पूछें तो स्टार्ट से लेके फाइनलिटी तक हमने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत सारे म्यूजिक पर्सनैलिटीज, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। एक्चुअली ये डिस्कशंस होती है ना कि आपने कॉन्वर्सेशन करनी क्या है ऑडियंस से, उसके अंदर भी होता क्या है कि आप कुछ सोचते हो कि अच्छा ये कॉन्वर्सेशन करनी है, ये नैरेटिव है, आप काम शुरू करते हो। काम करते करते आपकी लाइफ भी तो इट्स एवर चेंजिंग, एवर इवॉल्विंग। आपको नई थॉट्स आती हैं, उसको भी नई थॉट्स आती हैं, वो थॉट्स मिलके फिर कहीं और ले जाती हैं। देन यू नो देन एवरीबडी सेज, जिस तरह हम दोनों ने मतलब जब डिस्कशंस में किया कि यार अच्छा लेट्स रीबूट दिस, ओके नाउ लेट्स रीबूट दिस, बिकॉज वी न्यू कि हमारी जर्नी भी अब इस तरह बढ़ती जा रही है कि इस जर्नी को उस गाने में नजर आना, रिफ्लेक्ट करना, होना बहुत जरूरी है। सो दैट देन एंडेड अप एट गो। So that's the beautiful part. Though he had this musical personality, उसने musical personality बनाई और वो हमने शुरू में एक दफा सुन के उस पे काम करने का सोचा भी, और I actually loved it and I kept on telling कि यही है because I loved it that much. But then we did so many other personalities जो हमने visit की, अब्दुल्ला ने बनाई, सारा कुछ किया, but we ended up back at the first one that we had heard. फिर उस पे we developed the song. Yeah, yeah. So हुआ बहुत That's so interesting that you said that your life is also changing while you're in the making process and the बिल्कुल collaborating process, ऐसा ही है। and then somehow that song ka shape becomes something else or it completely changes direction. It's very interesting. ऐसा ही है बिकॉज इवन ना फिर वो रिफ्लेक्ट होता है आप जो फिर काम कर रहे हो लिरिकली, तो मतलब ऐसा रिफ्लेक्ट होता है कि आपको खुद भी नहीं समझ आ रही होती कि अच्छा आपके माइंड में, आपके दिल में ये चल रहा है, एंड देन पैरेलल में ये गाना बन रहा है। अब जब वो लिरिकल और जो नैरेटिव कॉन्सेप्ट है उस गाने की जर्नी का हिस्सा बनता है, तो बेसिकली आपकी जर्नी का हिस्सा बनता है। सो जिसने लिखा है, इसमें कुछ बनाया, वो सब उनकी जर्नीज के छोटे छोटे ब्यूटीफुल पार्ट्स हैं जो थी। और मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात फॉर एनीथिंग टू एक्चुअली कनेक्ट टू पीपल्स हार्ट्स के असली जर्नी के पार्ट्स हैं, असली जर्नी के पार्ट्स हैं। अब अगर अदनान भी लिरिक्स लिख रहा है किसी भी नैरेटिव के लिए, तो वो ऐसा नहीं है कि वो उसकी जर्नी का पार्ट नहीं है। वो अपने आप को भी ही विल शेक हिमसेल्फ अप टू से कि ओके what was that situation that I had been in, which is close to what the narrative is. So and then maybe hota kya hai, when you're writing now, you go into sort of a method when you start believing and living it. अब वो believing और living के अंदर ना फिर आपको लगता है this is what is happening at that time with you. You go into that phase, and it's a kind of phase. Then it takes time for you to get out of it. But then you shouldn't get out of it until you are able to conjure that magic, to create that magic. So I think for a lot of us this happened. For a lot of us this happened. And in all honesty, I remember जब कराची में था तो अदनान obviously he had to come for just his shoot जो नेड़े नेड़े बस का, ठीक है। उसके अलावा वो लाहौर में था, तो रोजाना उसका मैसेज आता था कि आई एम मिसिंग दिस, आई एम मिसिंग द प्रोसेस।
You know, so, Yeah. so this is how beautiful it becomes. And I told him, yeah, I'm missing this process as well. And in all honesty, Jyoti, एक बात बताऊं, ये जो एक प्रोसेस होने के बाद एक फीलिंग होती है ना, जब हो गया, रिलीज हो गया, लोगों ने सुन लिया, वो इतनी ओवरवेलमिंग होती है कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से भी बियॉन्ड हो जाती है कभी-कभी। और इन द सेंस, यू डोंट नो व्हाट टू फील। एम आई फीलिंग द राइट फीलिंग? Is this how it feels when something is, you know, going universal and people are loving it? You kind of get unsure. So, you know, that happens to me, and I'm sure it happens to so many others who have collaborated in this as well, because personally तो मेरे साथ ये होता है. And you know, that is why a few hours pass and the impact of it now fades away in my mind, because then I am on to the next things that I have to do. My mind starts thinking of different things. So, you know, it happens to me so many times. And but I also feel that there's the beauty of it. But it's puri cheez ke andar na, when something you have done has connected to people's hearts, आपको जो blessings feel होती रहती है ना, साथ journey के, वो they also, you know, somehow impact the way you are working. For example, when I was mixing, बिल्कुल last phase was mixing. तो उसके अंदर जब मैं पढ़ता था लोगों के कमेंट्स एंड बातें और प्यार और उनके सब कुछ, रोना, हंसना, नाचना, खुश होना, वो सब देख के मुझे मुझे पता है मेरे मिक्सिंग प्रोसेस में हेल्प हुई है. बिकॉज देन व्हेन आई यूज्ड टू इवन सी योर रिएक्शंस, आपके भी इतने और लोगों के, दे वर इम्पैक्ट पॉइंट्स व्हेन आई फेल्ट कि ओके, व्हेन दिस हैपेंस, दिस इज हाउ द रिएक्शन इज हैपनिंग. सो मैं जो गाने मिक्स कर रहा था, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा, मैं और इन इम्पैक्ट पॉइंट्स को बेहतर कैसे कर सकता हूँ और इम्पैक्टफुल कैसे बना सकते हैं कि इमोशंस को वो मजीद ब्यूटीफुली, यू नो, इनिशिएट कर सकें, चैनल कर सके लोग. सो इट्स अ जर्नी दैट यू कीप ऑन, यू नो, एक्सपीरियंसिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, लर्निंग, कोलैबोरेटिंग. तो बस इस तरह के बस बहुत सारे गाने, जो आपका सवाल था ओरिजिनल, बहुत सारे गाने बने और वो भी हमारे पास पड़े हुए हैं और वो भी खूबसूरत हैं, वो भी हमारी जर्नी का हिस्सा है. But it's so interesting how you said कि Adnan, for example, was saying that he has to go to that place and try and draw from a similar experience in his life so he can write those lyrics and feel those emotions. It's kind of similar to what actors also have to do, right? Like draw from their own life to bring life to a character. So it's beautiful how that process happens. बिल्कुल, for all of us, Jyoti, for all of us. I mean, अदनान की भी इतनी रिच और एक्सपीरियंस से भरपूर, इमोशनल सेंसिटिव बंदा भी ऐसा है, लाइफ रही है. तभी तो मैं जब कोई नैरेटिव पे काम करना होता है ना, तो ही इज माय फर्स्ट कॉल कि यार आजा, बात करनी है, यू नो. एंड बिकॉज आई नो व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम, आई एम गोइंग टू टॉक टू अ पर्सन हु हैज दैट इमोशनल वोकैबुलरी यार. ठीक है, और वो उस इमोशनल वोकैबुलरी से कर सकता है. अब बाय द वे, ऑनेस्टली बताऊं, जितने टीम में लोग हैं ना, उनकी इमोशनल वोकैबुलरी, आई एम सो ब्लेस्ड, इतनी जबरदस्त है जो कि आप उनसे बात करें, उनके पास so clear to all of us. Yeah, we can see. ये सब अदनान, शेरी, अब्दुल्ला, all of these actions and all of these people, जो हैं वो हैं. Even बाकी सब भी जो instrumentalist भी हैं. I mean, you know, there is a way the instrument needs to be played to, you know, get that emotion out. There's velocity, sensitivities. Interestingly, velocity, sensitivity आपकी keyboard synth playing में इतना मैटर करती है कि आपने कौन सी चीज किस तरीके से पोर्ट्रे करनी है, रिप्रेजेंट करनी है. प्यार से बजाओ तो वो फेड इन फर्क होती है, उसकी वॉल्यूम कम होती है. जोर से बजाओ तो इट्स डिफरेंट इम्पैक्ट, इट्स लाउड. सो वो गाने के हिसाब से जो गाना इमोशन डिस्क्राइब करे ना, आपकी उंगलियां, आपकी बॉडी सिंक होनी चाहिए, ताकि आप वही करो जो गाना बात करने की कोशिश करे. And that is the point where I feel so lucky that all the people in my team, even the instrumentalist, they were connected to the narrative of the song, to the story of the song, बजाते हुए भी. वरना ये चीज हो ही नहीं सकती अगर सब connected ना हो. Like the emotion or the emotion or the thought, it starts in the brain, it goes to the heart, and then it goes to your hands, and then it goes to the instrument, and then it goes to the listener. So it has, you know, so it has to be within you. And I think you know, people who've had lives full of various emotions and experiences, they can really draw from them. So I think as a creator and as an artist, what are your thoughts? Like, do you encourage people who are looking to get into the arts to then go out and just experience as much as they can? Because a lot of people hold back from, you know, doing those kind of things. And also what you said about collaborating and missing the process, you and Adnan were saying, a lot of artists also think कि मैं अपना गाना अकेले बैठ के लिखूंगा. I cannot be disturbed. I need to be alone in my zone. So a lot of artists also think that way about creation. So what are your thoughts on that?
क्रिएशन के ना भी डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं वेयर आर्टिस्ट्स विल एक्चुअली सिट अलोन एंड डू इट. बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं. फिर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि मिलके ही होते हैं. ठीक है. क्योंकि और वो पता है वो चीज़ बहुत इस बात से ड्राइव की होती है कि आपने स्टार्ट कैसे किया. अगर वो स्टार्ट ऐसे हुआ कि एक नैरेटिव था, एक विज़न था, उसके आगे से हमने लोग इकट्ठे किए, थिंक टैंक बैठा, उसके बाद लिरिकली लोग बैठे, कंपोज़िशन हुई, प्रोडक्शन वाइज़, कन्वर्सेशन हुई, तो वो जब कोलैबोरेटिव बिगिन हुआ होता है ना, तो उसमें ऑलरेडी ऐसे स्टेप्स बहुत सारे हो जाते हैं जो कि कोलैबोरेशन के साथ ही होने होते हैं. सबको समझ आ जाती है. दे कनेक्ट टू दैट वन सेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड दैट्स बट देन स्टिल देयर आर पार्ट्स देन एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू सिट एट होम एंड डू इट. बहुत सारी लाइन्स ऐसी भी थी तो झूम की भी कि जब हमने कन्वर्सेशन कर ली तो फिर अदनान मुझे कुछ भेजता था कि ये मुझे थॉट आई है क्योंकि ही इज देयर राइट. एंड कभी मुझे थॉट आती थी तो मैं उसको भेजता था कि मुझे थॉट सॉलिट्यूड में। ये ठीक है. सिद्दीकी सेम कोई थॉट आई कुछ बनाया भेजा कुछ मुझे मैंने बनाया मैंने भेजा एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस. तो आपको अपना अलोन टाइम चाहिए होता है. इसमें कोई शक ही नहीं है. कोई शक ही नहीं है और वो अच्छा है बिकॉज उसमें आप अपने आप से कनेक्ट होते हो और हम माने या ना माने कहीं ना किसी लेवल पे यू नो सम जितना भी कोलैबोरेटिव क्यों ना हो जाए कुछ चीजें अनलॉक आपने अकेले करनी होती हैं अपनी. Yes. Yeah. True. और वो फिर उस तरह ही होती हैं वरना पता नहीं कभी कभी लोग हों बेशक आपके बेहतरीन लोग हों और ऑब्वियसली मतलब वी ऑल वर सराउंडेड विद ग्रेट टीम्स and great people and zabardast people who understood us emotionally and we understood each other emotionally but still there is some part of you that is just yours and you have to unlock it on your own. और आपका दूसरी बात के जो आर्ट्स में जाना चाहते हैं दे होल्ड बैक सी इवन ना एक बात भी लोग कहते हैं कि होल्ड बैक कुछ कहते हैं होल्ड बैक नहीं करना चाहिए कुछ कहते हैं होल्ड बैक करना चाहिए. एक फिर बैलेंस की बात भी होती है इसी कॉन्वर्सेशन के अंदर. आई मुझसे पूछें तो आई हैवंट हैड दैट. आई हैव बीन दिस वे for the longest of times and I have expressed I have but while expressing while having this journey of expression I have also tried to understand my emotions. मैंने ऐसे नहीं जाने दिया कि बस ये मेरे इमोशंस हवा में है कि ये क्यों है ये क्या है ये कैसे हैं मैं क्या होता है तो मैं ये इमोट करता हूँ और ऑटोमेटिकली पता नहीं आई डोंट नो हाउ हाउ वेयर इट कम्स फ्रॉम कि मैं इस तरह सोचता हूँ बट दिस इज व्हाट हैपेंस टू मी. आई नीड टू आई ट्राई टू अंडरस्टैंड माय इमोशंस and I think I do it every day and once you get to understand या एक उसका होता ना you get the hang of it तो आप ना उस एक्सप्रेशन को इमोट करते हुए डरते भी नहीं. आप कहते हो ठीक है होने देते हैं अगर मैंने रोना है तो मैं रोने दूंगा अपने आप को. तो ये अपने आप से कॉन्वर्सेशन एक कांस्टेंट चल रही होती है. ठीक है और उस वक्त जब आप अपने इमोशंस को बेहतर अंडरस्टैंड कर लेते हो तो मुझे लगता है आप आज़ाद हो जाते हो आप फ्री हो जाते हो. और आई थिंक ये बुक स्टूडियो वाले इस पूरे प्रोसेस में आई थिंक वी ऑल फेल्ट दैट काइंड ऑफ फ्रीडम. वी ऑल फेल्ट दैट काइंड ऑफ फ्रीडम बिकॉज़ वी हैव Oh. क्राइड टुगेदर यार. सोचो यार बैठ के उस कमरे में हम लोग इकट्ठे रोए भी हैं चीज़ों को करते हुए. There's no greater हाँ, bonding experience than that. देयर इज़ नो ग्रेटर और हम मैं अकेला नहीं पता नहीं कितने लोग हम सब रोए हैं इसको करते हुए. ठीक, बहुत बड़ा बॉन्डिंग एक्सपीरियंस है. दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इमोशनल ना होना या सेंसिटिव होना ये तो आपकी सुपर पावर है ही है. बट अपनी दूसरी सुपर पावर में एक लेयर ऐड करें तो हर वक़्त नहीं हो सकती, बट व्हेन यू गेट दैट टाइम अगेन, दैट अलोन टाइम, जिसमें आप अपने आप को अनलॉक या अपनी लेयर्स समझ रहे होते हैं, उसमें आप बैठ के ना अपनी सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड तो करें. तो आपको इतनी प्यारी डिस्कवरीज़ होती हैं. आपको इतनी प्यारी डिस्कवरीज़ होती हैं, आपका आर्ट इतना हेल्प लेगा इस बात से. यू विल बी एबल टू डू थिंग्स, क्रिएट थिंग्स, इफ यू आर अ म्यूजिशियन, क्रिएट म्यूजिक और लिरिसिस्ट, राइट, पोएट, पेंट, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेंसिटिविटी से होता है. So I feel, and when once you understand that now, you sometimes also know where the balance is, and then it's your choice whether you embrace that balance or Right. not, or when to embrace that balance or not. It's a choice thing. But the journey of life is to keep at it, keep at it, keep at it. Keep at it. Mm. I agree. Amazing. So you mentioned कि you were in the mixing process, you were seeing people's reactions, and even अभी आप देखते हैं online लोग आपको tag करते हैं इतनी चीज़ों में, आप रोज share करते हैं Instagram पे. So one, it's very heartening to know that watching reactions helped in the mixing, and the feedback that the actual emotions that we were displaying actually contributed in some small way. But what is your overall, what do you have to say about the way the season's been received so Oof. far?
बिकॉज आपने एक पुराने इंटरव्यू में बोला था कि जब कोक स्टूडियो खत्म होता था कंट्री में, तब म्यूजिक के कॉन्वर्सेशंस भी खत्म हो जाते थे, एंड दैट वाज समथिंग यू डिडंट लाइक, यू वांटेड पीपल टू टॉक अबाउट म्यूजिक ऑल ईयर राउंड. सो how do you think that's going to go now? That's a very People are still talking about yes, season 14. yes. This is a very different perspective of this, right? कि जो मैंने वो quote था मुझे याद है, and in essence I meant कि there should be music all the year. There should be music. Obviously music conversations तब होंगी जब music होगा, सारा साल होगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कर रहा होगा. And I feel we are now going there. We are going there. और दूसरा, as far as the whole response is concerned, वो तो है अनप्रेसिडेंटेड है, और इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड है कि you hope for it, you plan for it, but you're not ready for it. I'll be very honest. And Yeah. and एक गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना, I was The charting worldwide. yeah. I mean, all the countries. and still, I mean, right now it's been I think 2.5 months now. पसूरी को भी, और पसूरी खत्म हुए भी टाइम हो गया है, और फिर मिलेंगे now came into the top while India charts, Spotify पे. पसूरी is still global number 2, and it's still on India, in fact it's number 2 as well. And in different countries it's charting top 10 में, top 5 में. तो इतना टाइम गुजर गया और ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है. और मैं वो देख रहा था ग्लोबल में, तो Spotify ग्लोबल वायरल में गाने 1, 3, 5, 6 सब चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो जो 2 है वो पसूरी है. सो इट इज सो ब्यूटीफुल कि उसकी स्टोरी नहीं खत्म हुई. सो यू आर सो राइट. आई डोंट नो कि मैंने इस पर्सपेक्टिव में बोला नहीं था, लेकिन एक्चुअल पर्सपेक्टिव ये बन गया है. जो असली बात है जो आपने बताई है, कि वो कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहा है, और कन्वर्सेशन कंटिन्यू हो रही है. इट इज सो ब्यूटीफुल. आई मीन, गिविंग मी गूज़बम्प्स राइट नाउ टू थिंक अबाउट इट, कि एक्चुअल बात तो ये बन गई कि कन्वर्सेशन कंटिन्यू हो रही है. एंड क्योंकि कभी सोचा नहीं था यार कि ऑब्वियसली वही बात के दिमाग रेडी नहीं था और दिल चाहता वो हर एक गाने की स्टोरी थ्रू आउट द ईयर रेलेवेंट है. You're right. पता है, मैं जब भी इस चीज सोचता हूँ ना, एक तो शुक्र अदा करता हूँ, यूनिवर्स का शुक्र अदा करता हूँ मैं इस बात का कि if God has blessed us with so much love from all around the world, and our work has been received, even the artists that are included in it, the collaborators, people are talking about them, उनका आर्ट वर्क बन रहा है, उनके लिए प्यार ही प्यार नजर आ रहा है, स्प्रेड हो रहा है, उनकी गुफ्तगू हो रही है, कॉन्वर्सेशन हो रही है, पूरे आर्ट, मतलब इट्स अ कॉन्वर्सेशन अबाउट आर्ट, which is for me the best thing about the response. It's a conversation about the art. People are not just talking about कि म्यूजिक क्या था, people are talking about कि सेट्स क्या थे, विजुअल क्या था, स्टोरी क्या, नैरेटिव क्या था, वो चीज वहां, मतलब यहाँ तक मैं आपके रिएक्शंस में देख रहा था, इतने लोगों के रिएक्शंस, और इवन कमेंट्स में भी लोगों को मैं देख रहा था. आई यूज्ड टू रीड सो मेनी कमेंट्स व्हेन द वीडियो यूज्ड टू कम, देखने के लिए कि आर पीपल पिकिंग दीस थिंग्स. वी ऑल यूज्ड टू सी ये छोटी-छोटी चीजें सोनिक विजुअल लोगों ने पिक की हैं, एंड आई वाज जस्ट सो सरप्राइज्ड एंड सो हैप्पी एंड होपफुल. दिल इतना बड़ा हो जाता था कि यार ये लोग नोट कर रहे हैं चीजें. And that was my biggest excitement. मैं जाके फिर, I used to call my team up and say कि यार people are noticing these things. How beautiful is that? Right? So वो जो प्रोसेस के अंदर भी अब साथ साथ मिक्सिंग भी हो रही है, साथ साथ ये भी हो रहा है, हमारा म्यूजिक के काम तो चल रहा है, और साथ साथ हम ये भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस पूरे रिस्पॉन्स को. तो जब बिल्कुल खत्म हुआ ना ये पूरा सीजन, तो समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है. Because it just finished, right? And my last day of mixing was the second last day of the season, अगले दिन गाना release. And so that was before that Spotify session. Yeah, उस वक्त almost I had finalized it, but I still had some, I had to do a few things on it. अभी पूरा नहीं हुआ था, I'll be honest. But this is what I'm saying, कि वो जब बिल्कुल खत्म हुआ ना, तो I had to write a post and I didn't know कि मैं इसमें लिखना क्या है, मैं बात क्या करूँ, कहानी पूरी लिख दूँ. फिर मैंने कहा नहीं यार, कहानी तो ये है ही नहीं मेरी, मैं क्या लिखूं, ये तो कहानी सबकी है, ये तो इनफैक्ट लोगों की है जिन्होंने इसको रिसीव किया, जिन्होंने इसको प्यार दिया, जिन्होंने इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया. हमने अपने इमोशंस इसमें डाले बनाते हुए, और उन इमोशन से लोगों ने कनेक्ट किया, और ऐसे कनेक्ट किया कि वो उनकी होके रह गए. मैंने कहा फिर ये सब उनके लिए है, जो लोग इसको रिसीव कर रहे थे, ये उन्हीं की कहानी है.
लेकिन अभी खत्म नहीं हुई, and you know everything still started making a different kind of sense, as if it was happening before, but I didn't know it is happening before for the future. All those lines, you know, they had a different perspective when you were making them, thinking of something different when they happened, when it, you know, so many minds of the listener contributed to the impact and how the season was progressing. तो बात ही कहीं और से और चली जाती है और इनफैक्ट बड़ी हो जाती है सिर्फ। सो वो हर चीज़ ना इट 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 हिट अस ऑल ऑफ अस, मुझे पर्सनली बहुत ज़ोर से। और अ, मुझे अभी भी मतलब एक बड़ी आपको बात बताता हूँ। My mother na, she has been following my music, and she has been my biggest admirer bhi, and supporter bhi, and when she has to be critical or give me suggestion तो बड़े प्यार से मुझे बताती थी। She has always been like that, right? Um, तो वो ना जब मुझे मुझे कल भी उन्होंने बल्कि मुझसे बात की और बहुत दफ़ा कहती हैं कि यार सब सीज़न ज़बरदस्त था और एक-एक गाना उन्होंने सुना। कहती हैं लेकिन ये जो आखिरी 4 लाइनें हैं ना फिर मिलेंगे की, ये कहती हैं ये दिमाग से नहीं निकलती ज़ुल्फ़ी मेरे। Ah, उम, I agree. and you know and because I'll tell you why. Somebody who has followed it completely, single song, not 2 songs, somebody who has followed it completely. उसको ये लाइनें बहुत मकसद भी था कि वो लाइन्स इस तरह रिसीव हों, एब्ज़ॉर्ब हों for the people who have been through the journey with us completely. So वो मुझे बहुत प्यारी लगती है ये बात कि people have followed us like that, जिसमें उनको एक-एक लाइन से इमोशनल अटैचमेंट की समझ आ रही है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द होल सीज़न, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल सीज़न। मतलब इतनी लंबी स्टोरी जो आपने 2.5-3 महीने में लोगों को बताई, लोगों ने फॉलो की है। मतलब मैं इस पे क्या शुक्रिया भी क्या अदा करूँ? मुझे तो समझ नहीं आती। मैं वर्ड्स भी क्या यूज़ करूँ, मुझे तो समझ नहीं आती। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं बस ये करना चाहता हूँ कि क्या प्रोसेस था, किस तरह किया। मैं चाहता हूँ कि ये पता चले कि हमने कोलैबोरेट कैसे किया, लोगों को एक इनसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि मे बी इट कैन इम्पैक्ट मोर पीपल एंड यू नो वी कैन सी मोर ब्यूटीफुल आर्ट। बहुत ज़्यादा अगेन सारा साल कन्वर्सेशन चलती है। बट हाउ टू अंडरस्टैंड दिस रिस्पॉन्स, इट्स जस्ट ग्रेटफुलनेस है यार। मैं तो आई एम जस्ट ग्रेटफुल एंड आई एम जस्ट इन लव विद द रिस्पॉन्स, बट मुझे डिस्क्राइब नहीं करना। मुझे बस ये पता है कि सुबह उठता हूँ, थोड़ी देर बाद जब मैं देखता हूँ कि इंस्टाग्राम पे देख रहा होता हूँ, स्टिल एवरी डे there are people who are tagging me in covers, in dance covers and singing covers, or an article, and all these artists as well doing so many things. I see Shagil doing so many things, Hasan Rahim doing so many things, Karakaram doing so many things, everyone doing City, all of them doing so many things. And it's like, wow, yeah, matlab, this is why I do what I do. And if this is the impact of it, तो शुक्र है. Impact is, oh my God, I can't even tell you. अभी आप जब बोल रहे थे कि you know आपकी mother को वो 4 lines सबसे ज़्यादा याद है. I was thinking those lines in my head and I was getting teary and emotional because like those lines, I like they're so close to everyone's heart who's connected with that song, and so many other lines from other songs in the season. I think of them and I get teary. Like, oh, such an amazing impact. But speaking of Phir Milenge and those lines, I think you said that आपने pause करके देखा था मेरा reaction. I don't know इतना बुरा था लेकिन नहीं, वो बुरा नहीं था वो, इतना ज़्यादा impactful था of somebody, sorry मैं आपको कट किया, of somebody who has been through this journey. मतलब from song 1 to the last song, who have been not just been through like this, listen to the song, but absorbing them, understanding them, even decrypting them and feeling them, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात। उस वो वही था जो कि मेरा ख्याल है हम जो बना रहे थे, वो जो फ़ील कर रहे थे। सो वो कभी-कभी आप इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है, ये इस तरह का रिस्पॉन्स देख के कि आपको ब्रेक लेनी पड़ती है। बट इट वाज़ one of the most beautiful reactions ever, Jyoti. I mean, one of the most beautiful yeah, reactions ever. One of the most honest. one of the most beautiful songs. Thank you. From all of But वो लाइनें जो आपने और अदनान ने लिखी, can you tell us a little about that process because we've discussed. Sorry, आप freeze हो गए. So I just want to ask you about the lines that you and Adnan wrote for Phir Milenge because आपकी mom की तरह they hit all of us really hard and you saw in my reaction. I mean the Talhas obviously wrote their verses which I saw even your reaction to during the BTS. आप भी रो रहे थे and I could not contain myself. But again the first, second, and then the last verse
that Faisal sang. Please tell us about the writing behind those lines. I'll tell you the sort of process tha kya. You know, I said this in the BTS as well, in the Magical Journey. It was the first time I was writing a melody for Faisal bhai. तो मुझे नहीं पता था कैसे लिखूँगा। उनका इतना लेजेंडरी करियर है, जिसमें उन्होंने मतलब कितने गाने गाए और कितने ऐसे गाने गाए, जो लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। उनके लिरिक्स, उनकी मेलोडीज़ ऐसी हैं। तो सबसे पहले तो honestly, um, it was a beautiful pressure. I will be honest, and I will tell you something interesting that not a lot of people know. जब मैं मेलोडी बनानी शुरू की ना, सोचना शुरू किया कि क्या हो सकता है, एंड बल्कि मैं उससे भी पहले जाता हूँ, आई वाज सिटिंग विद अब्दुल्ला एंड इसी रूम में, एंड आई आस्क्ड हिम कि यार, बल्कि इनफैक्ट ही सेड कि लेट मी प्ले यू सम ऑफ माय प्रीवियस वर्क, अनरिलीज्ड टाइप और बड़ा कुछ, ठीक है? सो ही हैड मेड दिस लिटिल लिटिल डेमोस, 1 मिनट के, 1.5 मिनट के, इस तरह के ना, जस्ट अ म्यूजिक पर्सनैलिटी और सारा कुछ। और उससे पहले ये हो रहा था कि वी वर प्रीटी कंफ्यूज्ड के यंगस्टर्स, फैसल कपाडिया, कंफ्यूज नहीं कहूँगा, वी वर ऑन द जर्नी टू फिगर आउट कि क्या होना चाहिए, वो कॉमन ग्राउंड क्या है। दिमाग में एक कॉमन ग्राउंड था वो, लेकिन रिफ्लेक्ट होना भी ज़रूरी था म्यूजिक के। तो ही वाज प्लेइंग मी a few music personalities from his from his computer. तो उसमें एक ये थी जो यही बीट जो फाइनली फिर मिलेंगे की बनी। अब वो बीट इस तरह की थी कि यूजुअली इन माय नॉलेज मैंने रैप होते हुए उस तरह की बीट पे नहीं सुना। सो मुझे हिट किया कि अगर इस पे रैप होगा तो कितना फिट लगेगा। बट दीज़ वर ऑल थॉट्स एट दैट मोमेंट इनसाइड माय माइंड। आई वाज थिंकिंग दोज़ एंड देन आई आल्सो रियलाइज्ड द काइंड ऑफ ग्रूव दिस हैज़, दैट फैसल्स बिग वॉइस ऑन इट विद द राइट मेलोडी वाज़ ज़बरदस्त। और एक और काम उसमें बड़ा अच्छा हुआ था। उसमें जो उसका स्टार्ट था ना, उसमें एक आई रिमेंबर देयर वाज़ सॉर्ट ऑफ एन एटमॉस्फेयर बीइंग बिल्ट। द द बादल का गरजना, the crickets की आवाज़, all of that was there, you know. And I will be very honest, that moment was something that just initiated something in me, an emotion in me, and I told Abdullah, this is the personality we are going with. And उसने पूछा कि really, या कोई सवाल था कि जो कि उसके लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, but then we started the conversation about it, and I then we talked about Guman, we talked about Afsane, we talked about Zinda by Strings. And I said, okay, all these emotions, even the lyrical emotions, this somehow encapsulates this all. And then, you know, he said, let's move ahead with it. Uske baad se, I would say that the journey, you know, it started getting faster. It was on its way. अब उसकी मेलोडी बनानी थी, and I had to create a chord structure जिस पे मेलोडी बने. I just selected, मतलब मैं बजाते बजाते जिस पॉइंट पे, गिटार पे, by the way, when I have to make a melody, it's usually on the guitar. I'm playing the guitar and making it. तो आई वाज प्लेइंग इट, मैंने कॉर्ड स्ट्रक्चर बना लिया, मेलोडी बन नहीं रही थी, 2-3 दिन गुजर गए और वो ऐसे स्लीपलेस टाइप दिन और रात थे कि तो क्या होगी मेलोडी जो इतनी सिंपल और खूबसूरत हो, उसको बिगिन कर वन वे और द अदर। अच्छा, अब हुआ क्या, इन इन 2-3 डेज ऑफ दीस स्लीपलेस नाइट्स एंड डेज, आई डिसाइडेड कि यार आई विल गो थ्रू द प्रोसेस जो मैं बहुत पहले किया करता। वो क्या था, आई यूज्ड टू सिट विद माय मदर व्हेन आई हैव टू स्ट्राइक और क्रिएट अ मेलोडी। और ये मेरे बिल्कुल जो बिल्कुल लारी छूटी भी हो गया, बहुत सारे और गाने ऐसे हो गए बाद में भी, उससे पहले भी, कि मैं उनके पास बैठ के बनाता। सो आई जस्ट यू नो सैट विद हर एंड आई वाज प्लेइंग दोज़ सेम कॉर्ड्स एंड my breakfast was there, but I wasn't having it because there was something happening that I didn't know. It was a presence, obviously. And I just sang these words. They're not these words, but sang this melody. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na, na na. So the moment this happened now, मुझे खुशी भी हुई और मुझे अपने प्रोसेस का
बेअंदाज़ा हो कि मेरा प्रोसेस क्या है, मुझे क्या चाहिए टू इनिशिएट इमोशंस इन मी, मेरी अपनी सेंसिटिविटी मुझसे कैसे बातें करती है। एंड आई थिंक इट वाज़ द लव ऑफ माय मदर for what I do, and it's an energy. It's not a statement. That is always there when I get my guitar and I sing in her presence. And I think that energy made me do it. That energy helped me create it. बस उसके बाद I sang that melody. मैंने एक वीडियो बनाई छोटी सी वो with Abdullah Siddiqui's music personality and with these new chords, and I sang the melody over it. और I sent it to my team. They all loved it. कि this is the balance that we wanted फैसल भाई की आवाज से भी। तो बात चलना शुरू होगी that everybody started connecting to it as well. फिर उसके बाद I called Adnan and मेरी फिर कॉल अदनान को ही जाती है जब हमने नैरेटिव और लिरिक्स और सब ये बातें शुरू करनी होती हैं। So he had a Right. very beautiful thought that he had written a long time back. वो थॉट यही थी कि दिल के किसी कोने में ही याद तेरी मैंने छुपा रखी है। अब जब वो मेलोडी के ऊपर वो वर्ड्स बैठे तो लग रहा था कि ये एक दूसरे के लिए ही है और कुछ हो ही नहीं सकता। या दैट वाज ब्यूटीफुल दैट ही हैड रिटन समथिंग अ लॉन्ग टाइम बैक। तो उसी को थोड़ा-सा उसने ट्वीक करके कहा कि ये जो म्यूज़िक सुना ना, म्यूज़िक आपको यही दिमाग में डाल देता है कि टॉकिंग अबाउट सम मेमोरीज। इट्स अ ट्रिप थ्रू द मेमोरी लेन एंड it's a trip where you are feeling all these feelings that your life has been about and you're not escaping them, but you're still expressing them and मतलब अगर आपको अपने ऊपर वो ज़ुल्म भी लग रहा है, आप तब भी एक्सप्रेस कर रहे हो। सज़ा भी लग रही है, तो आपने ये एडमिट कर लिया है कि बट ऐसे ही है। सो वो जब कन्वर्सेशन बिगिन हुई ना उसकी उसकी लिरिक्स की सब कुछ, फिर एक और बड़ी ब्यूटीफुल बात मैंने उसको ना मेलोडी पे जो लिरिक्स बने, आई सैंग द लिरिक्स ओवर द म्यूजिक पर्सनैलिटी एंड आई सेंड इट टू फैसल भाई। फैसल भाई उस वक्त थे स्टेट्स में, ठीक है, एंड आई रिमेम्बर वो कहीं वेकेशन पे थे अपनी उन्होंने वो सुना है और उन्होंने इतना प्यारा वॉइस नोट भेजा ना वो सुन के ज्योति, वो इतना प्यारा, इतनी प्यारी बात की कि मेरा दिल इतना खुश हो गया। So I felt so great because I am his fan and I'm making a melody for him. And the way he appreciated, understood, and just expressed it completely, मेरा दिल खुश हो गया कि उन्होंने कहा यार इतनी ज़बरदस्त है, मैं बार-बार सुन रहा हूँ। और वो थे कहीं आउटडोर्स में, कहीं पानी के आस-पास। तो उधर वो जब वो सुन रहे थे तो उन पे इफ़ेक्ट भी बड़ा प्यारा हो रहा था। सो वो जब सारी कन्वर्सेशन हो रही थी ना तो आई कुड इमेजिन हिम फीलिंग इट अ सर्टेन वे एंड आई वाज़ लाइक दिस वाज़ ऑब्वियसली इतने सब जब चीज़ें होती हैं ना आपके आस-पास आपको नज़र आए थे कुछ चीज़ें आर मेंट टू हैपन। सो इट वाज़ वन ऑफ दोज़ मोमेंट्स एंड देन ही वाज़ लाइक आई कांट वेट टू कम हियर एंड वर्क ऑन इट फर्दर। खैर ये उसकी अब आपको मैं पहले वर्स की वो बता रहा था, सारी की सिचुएशन बन शुरू कैसे हुई बात। फिर उसके बाद अदनान केप्ट ऑन राइटिंग एंड राइटिंग, पर एक टाइम पे आके हमारा एक हॉल्ट लग गया बिकॉज़ वी हैड टू राइट द ब्रिज पार्ट एंड बट फॉर द ब्रिज पार्ट आई वांटेड कि इट गोज़ इनटू अ डिफरेंट डायमेंशन कंप्लीटली। इट गोज़ इनटू अ डीपर deeper yet grander but more more heartbreaking direction if there is a word for that, I don't know, but it had to go into that, right? It went there. And Yes. तो the room जो बिल्कुल मेरे राइट साइड पे जो मेरा रिकॉर्डिंग रूम है वहाँ बैठे थे। I call it the conversation room because I haven't made it like a recording room. I've made it like where people can converse, उसी में, and because it's very important for the creative process. खैर, so मेरे इस conversation room में मैं अदनान और अदनान का जो bandmate है रवि, we all were sitting and उससे पहले तक ना I had made a melody for this part and a new chord structure and वो एक बस आई डोंट नो कब मैंने किया बट वो मेलोडीज बन गई थी उसकी ना 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 टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट, राइट? तो हम बैठे हुए थे, मैंने मेलोडी सुनाई अदनान को कि यार ये कुछ बात तो कर रही है लेकिन समझ नहीं आ रही बात क्या कर रही है, राइट? फिर हमने गाने के बारे में बात नहीं की, फिर हम कोई और बातें शुरू कर दी और वो बातें होते होते ना कोई एक बात आई थिंक पता नहीं मैंने की इस तरह की कि यार वैसे कहानी किधर खत्म होती है अदनान, ठीक है? तो अदनान कहता है यही है पहली लाइन कि कहानी कहाँ खत्म होती है और इट जस्ट इट वाज अगेन इट वाज बाउंड टू हैपन सॉर्ट ऑफ द सिचुएशन थी। और वही तो मैं कहता हूँ कभी-कभी मेरी अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ वो ब्लेसिंग और लव ही नज़र आता है। मुझे भी मैं टेक्निकली साइंटिफिकली
एक हद तक ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट खैर कहानी कहाँ खत्म होती है, फिर उसने आगे लिखा कि पूरी नहीं हर कसम होती है। फिर जब उसने लिखा ना, फिर मिलेंगे कभी अजनबी की तरह, यहाँ अब तक हम स्टॉप किया। मुझे हुए गूज़बम्प्स शदीद बता नहीं सकता। मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा दिस इज़ द लास्ट सॉन्ग ऑफ द सीज़न एंड इट्स कॉल्ड फिर मिलेंगे। एंड इट वाज़ सच अ फीलिंग कि ये सीज़न खत्म हो गया। एंड एट दैट मोमेंट आई फेल्ट इट कि ये सीज़न खत्म हो गया। हालाँकि ये दिस वाज़ नॉट द लास्ट लिरिक्स वी वर राइटिंग फॉर द सीज़न। Hmm. अभी पीछे हट वगैरह सब होना था। अभी बहुत सारे गाने और होने थे जो भी नहीं बने हुए थे, राइट? Hmm. बट दैट फीलिंग कि दिस इज़ द सीज़न एंडिंग ना, इट Hmm. इट हिट मी राइट देयर एंड देन। एंड मैं इतना एक्साइट हो गया कि मैं आई थिंक बस बाहर चला गया वॉक करने थोड़ी देर के लिए कि ये हो गया इन दैट इमोशन कि गाना है फिर मिलेंगे और सब कुछ। फिर मैंने खैर आई टोल्ड द टीम एंड मुझे मुझे समझ आ गई कि वो रेजोनेट कर गया, सबके साथ ही बात रेजोनेट कर गई। फिर उस ये ना ने 3 लाइनें लिखी, फिर वो आखिरी लाइन पे ना हमने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस लिखी, बहुत कुछ किया। तो बस वन डे अगेन इन अ मोमेंट ऑफ लोनलीनेस when I was just singing it to send it to Faisal bhai as well, to send it to Abdullah as well. तो उसमें दरमियान में मैंने अपने लिए एक लाइन लिख ली कि इस आस में दिल में सुबह रखी। I just loved the symbolism in it, the hope in it, and I just wanted the last line of the season to end in hope. you know, after Thank you. all. After everything you made us go through, thank you for doing that. तो खैर anyhow, तो बस वो तो फिर मैंने फिर अदनान ने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो मेरा समझ लेना इस लिरिक्स के मामले में ही इज़ माय पर्सन हू विल टेल मी कि ये सेट है कि नहीं है। सो कोई भी और भी लिरिक्स लिखे ना, सो मैं हमेशा एक दफ़ा उसके पास कहता हूँ कि यार ये लिख रहे हैं, दिस आई फील इज़ ग्रेट, दिस आई फील मे इम्प्रूव, कैन इम्प्रूव। तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा ज़बरदस्त देता है और बड़ा नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देता है, कनेक्टेड। आई एक्चुअली हॉनेस्टली स्पीकिंग आई and I can't wait for the next process to begin, to again work with Adnan, to again work with Siddiqui. और हम सब एक दूसरे को ना शदीद मिस कर रहे होते हैं तो हमारे मैसेजेस में क्लियर हो जाता है कि we And can't wait to work together again, to work with Action Zain, to work with Sherry, all of us दोबारा से। खैर anyhow, तो खैर ये this is how it was, that's how as it was. authentically told as possible. And also the orchestra in the middle. How did you decide to put that section there? I'll send you a beautiful picture. Um, you know, before the song was made. So this slide we had made this slide for the presentation, which said Faisal Kapadia and youngsters, that idea. So orchestra was a part of it from the beginning. Oh. There will be an orchestra to support the narrative that we are going to build. अभी हमारे पास narrative build नहीं हुआ था, but उस emotion को describe करने के लिए वो समझ लें एक signal मिल चुका था कि there has to be an orchestra. And my reasoning was the kind of emotional vocabulary both of these artists possess, youngsters and Faisal Kapadia. All of them, the journeys, the kind of journeys they have had, orchestra is like a soundtrack. Needs that, huh? Yeah, a soundtrack to tell the story. So, it has to be there to continue where, some lyrical narrative will leave and then the orchestra will begin and then it will take it to the next part. So, storytelling का part के हिसाब से सोचा हुआ। And then I think जो orchestra की जो arrangement की है वो अब्दुल्ला सिद्दीकी ने, it was out of the world. It's a beautiful arrangement. It's a beautiful arrangement, हाँ. So we can just all these creative people having conversations, and out of those conversations, creating this. It is real magic, Jyoti. it is real magic. We've all witnessed it. We've Real all felt magic. it. And I have to say it as well. It feels like that. But it's beautiful because you didn't have the melody, you didn't have anything. You had the slides and you just had the personalities of the collaborators and their histories, and you still thought of this big element that became a part of the song. So you took inspiration from every angle when conceptualizing things. And Jyoti, it's very important before you begin anything ना, तो वो point तो of nothing से start होता है. कोई भी beginning nothing से start होती है. But when nothing से start होने के बाद ना, जब आप ideas के करीब पहुंचते जाते हो, yeah, you somehow then you don't have the final picture obviously, but you have all these senses working together to tell you what the final picture should be. It leads you to that.
So even though you don't know how it's going to sound or look at the end of the day, but your senses are leading you to that point, and it's beautiful. And I think if for that, वो nothingness की feeling बहुत जरूरी है, वो openness की feeling बहुत जरूरी है, और Yes. फिर you are helped by the universe, and I'm sure of that. Yeah. It's ऐसे always a ही leap of faith, but you have to Yeah. just keep everything open and let the inspiration come. And creativity is a collaboration with inspiration at the end of the day. So बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात. So you just mentioned कि ये last गाना आपको you knew it when you heard that line, and there were other songs that needed to be done, including Peechay Hutt. So Peechay Hutt came much later. I would love to talk about that song because Hassan was, I've been a Hassan Rahim fan since I discovered him, thanks to the audiences of my channel. But I was so surprised and happy to see him on Coke Studio. How did that happen? Yeah, Hassan Rahim शुरू से ही मतलब जब ये करना था, तो हम जब बैठे भी थे हमारा think tank, his name was one that always was in the equation, was always in the conversation. And you know, मैं इतना इस बारे में श्योर था कि उसने होना है, ये नहीं पता कि किस कोलैबोरेशन में होगा, कैसा होगा, बट ये पता था कि उसकी इंतहाई ऑथेंटिक पर्सनालिटी, एक्सप्रेशन, यूनिक, कोई परवाह नहीं, fearless and cool, और वो भी बड़ा असली वाला cool. वो सब कुछ दिखाना बड़ा जरूरी है दुनिया को from Pakistan. Yeah. Okay, this is this is a character, a singer, an artist from Pakistan. Take a look, right, to the world. So he is such a unique combo. He's such a unique combo. So I knew कि ये होना तो है, but कैसे होना है, क्या होना है, मुझे नहीं पता. I'll be very honest. And we thought of a lot of collaborations with him, and we made a lot of songs. But my gut feeling was कि अभी तक वो बात ना पहुंची नहीं उस जगह तक कि जहां इस collaboration को पहुंचना चाहिए. So we rebooted quite a few times. We rebooted quite a few times. I mean, this process, this journey is an immense journey, Jyoti. इसमें बड़ा दिल खोल के आप डिसीजंस ले रहे होते हैं, सोच के, क्योंकि लोगों तक बात पहुंचानी है आपने, आर्टिस्ट का भी नैरेटिव, और आपने इन आर्टिस्ट की जर्नीज को भी आगे लेके जाना है. इट्स नॉट जस्ट रिप्रेजेंटेशन, इट्स मोर देन रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन यस इंक्लूडेड, उसके बाद इनकी जर्नीज आगे कैसे कैसे जा सकती हैं ताकि इनकी स्टोरीज आगे तो चलें. अच्छा, तो फिर वो होते होते बहुत मजे की स्टोरी. सारे गाने बन चुके थे, ये एक रहता था. तो obviously Talal Qureshi was always in the mix of things. I wanted that flavor in the season. I was 100% sure, and I had been a fan of the song that Talal has done with Nasibo. Nasibo ji, Aag गाने का नाम, बहुत जबरदस्त है. तो मुझे ना उसकी वो वाइब, पर्सनैलिटी और एक एक्साइटिंग सॉर्ट ऑफ तलाल का काम करने का तरीका जो बड़ा सिग्नेचर तलाल है, पता चल जाता है काम तलाल. I wanted that in the season. So, I was having these conversations, and he was playing me a lot of different ideas and the beats that he has made over time. मैं सब सुन रहा, सब कुछ सुन रहा. फिर उसने कहा कि मैं आपको एक चीज सुनाऊं, थोड़ी सी बदतमीज सी है. तो मैंने कहा सुनाओ. अच्छा, अब ना I was in the kind of mind zone that I was now. तो था कि मैंने ना अब ये एंड हो रहा है. I want to chill, I want to enjoy, I want to dance. मैंने सुकून करना है अपनी लाइफ में. I have been through this journey. I want to enjoy the hell out of this last song, and this last song has to put me in that method of enjoying कि मैं बस पागल हो जाऊं. तो खैर बहुत सारी चीजों के बाद ना again in the conversation room तलाल को एक मैंने सिस्टम उधर सेट किया हुआ था, छोटा सा स्टूडियो, ताकि हम ये कोलैबोरेटिव करीब करीब हो जाए सब कुछ. तो उसने वो चलाया ना, तो वो बीट स्टार्ट हुई, and then bass line began. ठीक है. And I started, like you're doing this right now. I was doing it then as well. And it had this the line was Badtameez Peechay Hutt, right? It was the full line, right? Okay. But I just asked him then, मैंने कहा just remove the Badtameez. So then let's see what it becomes, because I had a feeling it would become a bigger message in every way, right? A more universal message. So once that got detached from that, it became such a beautiful. Oh, Thai by the way, beautiful था. वो जबरदस्त था. वो जब बदतमीज पीछे हट भी था तो मैं नाच रहा था पागलों की तरह. मैंने तलाल को जाके हक किया कि भाई मिल गया, मैं गाना तो छा गया. So बस let's just try to do it without the बदतमीज and see how it happens. So we both started vibing without the बदतमीज as well. तो बस फिर पीछे हट was born like that. I think उसकी सब चीजें जो थी ना उसके अंदर actually मौजूद थी. The bass line, the kick and everything. And I could just imagine Hassan Rahim with his
I don't care and cool threen attitude, हाँ, right? वो जो naturally उसके अंदर authentic है. he is So that. बस वो समझ आ गई and the conversation was with Talal as well कि Hassan Rahim and Justin Bieber, because I had a feeling कि जो Justin Bieber है ना, उनकी story कभी भी बताई नहीं गई सही तरह, मतलब in form of their expression. वो जो उन्होंने जस्टिन बीबर का गाना किया and it got viral and everybody heard it and started talking about it, and they became a sensation. But उसके बाद से the body of work that they had done now, it was more dramatic soundtracks and things like these, right? But उनकी भी जो वो एक I don't care वाला attitude था ना, special, cool, unique, वो थोड़ा पीछे रह गया था. So हाँ, I found this similarity between Hassan and them, between their journeys. कि when they nice. didn't care ना, so they were just being themselves कि यार ठीक है, हम इंग्लिश को उर्दू में लिख के हम ये गा देंगे और दुनिया को सुना देंगे. That's the passionate attitude that actually gives me goosebumps and gives me hope. तो मुझे लगा एक कुछ सिमिलर एक चीज. तो फिर उसके बाद yes, we started it, and Hassan ko I just told कि ये narrative है about Justin Babies, their beginnings and all, and I asked him to research on the idea as well. कि on Justin Babies story he researched, and वो इतना क्विक और कूल तरीन उसका एक प्रोसेस है कि वो खड़ा होता है, मैंने बीट उसको लगा के दी, वो खड़ा हुआ, उसने कुछ मेलोडीज हम करनी शुरू कर दी, started recording on the iPhone. I left him alone for 20-25 minutes, and he had the the क्या कहते हैं उसे, the sort of जो फाइनल मेलोडीज बनी उसके आसपास तक वो पहुंच गया. फिर उसने 2-3 दिन लगाए, वो भी लोनलीनेस के दिन थे उसने लगाए. मैंने भी उसको मैसेज नहीं किया, कोई बात नहीं की, और उसके बाद उसने मुझे लिरिक्स लिख के ये भेजे कि रास्ता छोड़िए अब हम आ गए. Nice. एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज जब उसने ये बात की ना, रास्ता छोड़िए हम आ गए, तो उसने बताया कि आई रोट दिस फॉर देम. He wrote these lines for Justin Bieber because this is what I wanted him writing for Justin Bieber. और वो बस फिर in all honesty it was magical from then on. I called, I remember we called Justin Babies up, मैं और तलाल इधर ही बैठे, उनको गाना सुनाया. तो you know one of them, Sania, she said कि ये गाना तो ना हर गाड़ी में चल रहा होगा. उफ, इतना अच्छा गाना. ठीक है, ये उन्होंने अपनी दुआ थी, अपनी ख्वाहिश जाहिर की. So beautiful, and they were all moving like this, क्योंकि वो गाना बस यही कर देता है कि शुरू होता है तो आप मूव करना शुरू करते हो. तो बस उसके बाद we just recorded a demo with their voice. I sent it over to Hassan as well, sent it over to my team. We were all just blown away. We couldn't wait for the jam. Then the jam happened. तो जैम हो रहा था, तो बाकी म्यूजिशियंस को भी जब सब चीजें हमने बताई कैसे कैसे क्या है, then they also contribute with a few चीजें इधर उधर arrangement ideas. And उस दिन बस हम नाचे थे, और वो हमारा आखिरी जैम था before the shoot. हम कराची जा रहे थे, लाहौर आखिरी था, और वो इतना मजा आया उस दिन. जो हम सब इतना नाचे, इतना डांस किया कि it was a Fun memorable day. song. It was the last, yeah, it was the last day as well, man. So it was quite an emotional day for all of us. And खैर वो जो energy भी थी ना with Justin Bieber and Hassan Rahim in the same room with Talal, वो energy भी बहुत ही unique और special थी. I mean, it's an unexpected combination. Who in the world will think you unexpected? But it just merges in beautifully. Why? Because see, authentic ideas, narratives, people being themselves will always collaborate in magic, will always result in magic. जब आप भूल जाते हो ना कि यार अब इनके रूट्स हैं राजस्थानी, जैसन बेबीज के, अब जब वो गाती है ना, वो अनजाने में ही वो राजस्थानी वाइब आ जाती है. अब जब हसन गाता है रास्ता छोड़िए अब हम आ गए, तो फर्क लगता है. अब जब ये गाती हैं, वो उसमें कहीं फोकनेस आ जाती है. So it's not even the melody that is folk. It's Yeah. the personality that is folk. Hmm. Even if you notice in Pasoori, the way Sethi sings it is very different from how Shegil delivers it. Yeah. Right? Because in each of their delivery is their story. How they have evolved. I remember when, Shegil से conversations के अंदर, बहुत सारी वे, जब उसके उस पॉइंट को चैनल करना था कि जहां she could just deliver it beautifully. So I asked her, have you ever acted? She said yes. But I don't remember कि वो कौन सी उसने एग्जांपल दी थी स्टोरी की, बट आई थिंक हीर रांझा का था. कहती है आई एक्टेड व्हेन आई वाज यंग, आई एक्टेड इन दिस स्कूल प्ले हीर रांझा एंड आई वाज द हीर, राइट? तो मैंने कहा देन बी द हीर यार.
Nice. Think about those distances. Think about the narrative of even that story, and just Oh, channel that point in your life. जब तुमने acting की, and that really helps, यार. it When you does. channel your stories, because you इसलिए ना आपने emotions की बात की थी ना कि hold back करना चाहिए कि नहीं. अगर आप hold back कर लेते हो, भूल सकते हो. आप अपने important moments भूल सकते हो. Important moments भूलोगे तो आप जो आपका emotional construct बन रहा है ना आपकी जिंदगी में, वो आप मिस आउट कर जाओगे यार. और वो इमोशनल कंस्ट्रक्ट अगर मिस आउट हो जाएगा तो आप अपनी स्टोरी नहीं बता सकते हो. Have to be aware about your emotions. You have to be aware with your sensitivities. There is no other way to be the person that you are. And by doing that and by pushing people to do that, you've extracted the best out of them. आपने जैसे वो उनके बचपन की वीडियो उन्हें दिखाई आपदा जी को, and you got the take you needed. Similarly, है ना? So I think you need someone like you who's pushing people to get there, and I think that itself is incredible. But you just said कि Hassan और Justin Bieber's का collab, like their worlds are so different. और आपने उनका collab करवा दिया. You got other people whose worlds are completely apart to collab. But then you also got the Shafi siblings to collab, and they Yeah. come from the same world, and nobody expected even that. So another like brainwave. Yes, yes. They are so similar and they are so different at the same time, right? Yeah. ये उनकी कमाल interesting बात. And I haven't seen two people so similar and so different at the same time. And we all wanted to channel that. अच्छा, ये वाली collaboration ना, ये भी बड़ी जबरदस्त interesting story है. ये इस तरह बनी कि अब it's sort of a dream collaboration, getting those two together and Yeah. creating that. They haven't ever done it. मुझे याद है कि शुरू में ये आइडिया नहीं था. शुरू में we were, Misha was paired with somebody else. Faris was paired with somebody else. We were thinking of so many different permutations and combinations. And I remember in one of the think tank discussions, ये बात वैसी एक दफा हुई. Natasha, she said के Faris and Misha can be together as well. एक ये conversation सिर्फ हुई, ठीक है. But we just drifted away from that conversation, and we was weeks past thinking about some other collaborations for them. I don't know why suddenly I I thought, why not? Why not Faris and Misha? That's a great thought. Why not Faris and Misha? And that got me excited. I called Misha, then I called Faris, and I said, "Okay, this is what I want to do." And Must have looked at each other in the house and be like, should we do it? नहीं, ये बड़ा मजेदार था. तो मीशा से बात की ना, तो she got excited and she said कि ये उससे भी बात करो, फारिस से एक दफा. और she wanted to get this going, and she said Right. this has to be fabulous. This has to sound and look fabulous, because that is the expression emotion this collaboration is speaking, the language that this has to speak. अभी देखें, गाना नहीं बना, but उसकी visual sonic personality की discussion शुरू हो जाती है पहले, which is the great thing, and which is the great thing about collaborating with such artists who have such diverse, broad ideologies of what they want to do. अब मीशा भी पावर हाउस है, फारिस भी पावर हाउस है, दोनों इमोशनल पावर हाउसेस, दोनों इमोशनल पावर हाउस. फारिस को बताया, and because it is something that they were doing for the first time, it took a few days, but then they were like, yes, let's do it. ऐसे वाली situation थी. फिर एक time start हुआ to begin it, and I felt, because Faris has a huge history of work with Action Zain, and Misha has now a history of work with Abdullah Siddiqui. So let's create this, this unison. Let's unify these two people. And as time went on, this was one song जिसकी बिल्कुल फिनिशिंग हुई थी जब हम कराची चले गए थे और हम जैम कर रहे थे. ये फिनिश तब हुआ जाके. क्यों? क्योंकि this song needed, because Misha was not in the country, this song needed everyone to be together in one for 2-3 days, figuring it out. जो उसके moments हैं जो stronger हो सकते हैं, more impactful हो सकते हैं, वो बनाना. और वो energy unprecedented थी ज्योति उस दिन, जिस दिन जैम हो रहा था, जब सब इकट्ठे हो गए. उन्होंने अपनी लाइंस भी खुद लिखी, है ना? या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताता हूँ कि गाने का जो कोरस था ना, पहले थोड़ा डिफरेंट था, राइट? एंड व्हेन मीशा केम इनटू द जैम रूम ना, शी सेड कि आई आल्सो रोट सम अदर लाइंस जुल्फी. मैंने कहा सुनाए. वो है तीरा वंगो सिदियां सामने नजर आ रही मेरी, वो ये लाइन. मैंने देखा सब्जेक्ट पे, मैंने कहा तो यही तो लाइंस है. ये वो यही तो होनी चाहिए इसमें. तो फिर हमने बजाया, तो फिर वी वर टुगेदर, वी देन
created this melody and with her emotion expression coming in, ये jam पे हुआ यार. Wow. It just was so कि फिर ये भी मोमेंट बन गया जिसमें हम इसमें भी नाच नाच के पागल हो गए. And then the kind of music it had, it was like the hybrid of Abdullah and Action Zain, and that hybrid was so unique you can't say कि it's Abdullah or it's Action Zain. आप pinpoint कर सकते हैं कि इसमें Action Zain है कि Abdullah है. And that is the beauty. It merged so beautifully. That's exactly what I yeah, because we didn't know when the rap bit was ending and Misha's bit was starting, and it was so beautifully yeah. और फिर उसकी शूट भी बड़े मजे की थी. उसकी शूट भी बहुत मजे की थी because it was one take and both of them, Faris and Misha, they are such great people to be on stage with. I'll tell you why. They keep the mood interesting, exciting, बातें, मजाक, jokes. मतलब आप थक नहीं सकते हो, especially Faris के साथ आप थक नहीं सकते हो. He is, such a dynamite, I swear to God. And in fact, he's such a dynamite ke, when we get on a call now, I think in 5-6 seconds of the conversation, we both are laughing like crazy and not talking. And I don't know why. Some people have that energy. Something happens when I talk to him and talk. So, it's such a connection with him. And Misha के साथ मेरा बहुत पुराना, जब हमने मैं किया था for the Battle of the Bands, right? और वो by the way इतना बड़ा milestone था because that theatrics, that story, narration, visual aspect, वो भी एक तरह से इस जो कहानी आज बनी, इस तरह की performances आपको hope भी देती हैं कि when people connect to such theatrics, so आपको समझ आती जाती है. Resistance भी जिस तरह एक story का part था कि अच्छा you change the whole set for a show. People are connecting to it. People are connecting to the change as well. It is working as well. आपको hope भी मिलता है, समझ भी आती है, और आपको समझ आती है कि अच्छा यार ये तो जरूरी है. So all these little things ये सब जब लोग भी मिल रहे होते हैं आपस में, मुझे लगता है कि वो कोई भी आप किसी से मिल रहे हो, वो आपकी स्टोरी का कहीं ना कहीं से हिस्सा है, और आपको पता भी नहीं है कि कैसे बन जाए. कुछ भी चीज आप कोलैबोरेशन में कर रहे हो, वो कैसे फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट होगा आपको पता नहीं चल रहा होता है, वो हो रहा है. So I guess this was this Muaziz Saarif was the unison of all these emotions getting together. जो सबकी अपनी अपनी स्टोरीज हमारी भी जो चलती रही हैं आपस में, और इनकी भी जो आपस में है. Faris Misha, right, brother sister. Faris Action Zain, collaborators for the longest of times, beautiful work done together. Misha, Abdullah, they have been doing great work together, beautiful, amazing work together, game changing work together. अब क्या हो रहा है? मेरा फिर मीशा के साथ अपना एक म्यूजिकल रिलेशनशिप विद स्टार्टिंग विद मैं एंड देन मूविंग ऑन, बहुत सारे साथ कोलैबोरेशंस की. सो ऑल ऑफ दिस वाज कहते हैं ना, it was leading up to something like a Moses. I would say. Everyone's personal and professional journeys are then culminating in a beautiful new product coming together. But Abdullah and Action Zain again working together and creating this new sound, and so much more through the season sound wise, especially shooting with live sound in all the songs. So many videos are one take. Tell us about the sound squad. It's called the sound squad in the descriptions I've seen. What is that? Sound squad. Yeah. Sound squad. We were thinking कि हम अपनी sound team का नाम क्या रखें. So I think my wife suggested कि sound squad is a great name. And interestingly, one of the people in the sound squad, Ziyad, उसके अपने स्टूडियो का नाम भी sound squad था. जब मैंने उसको बताया ना, तो he smiled and he said कि ये तो मेरे अपने स्टूडियो का नाम भी है. मैंने कहा यार all the more better, हम sound squad ही रहेंगे. तो started like that. मैं आपको उनका वो बताता हूँ, कैसे बताऊँ कि क्या रोल था, क्योंकि बहुत ही बड़ा रोल था. अच्छा imagine आपने हर 4-5 दिन बाद एक नई जगह के हिसाब से उस जगह को वायर करना है फॉर अ रिकॉर्डिंग. ठीक है, वेयर एवरीबडी कैन परफॉर्म, सिंग, एक्सप्रेस, यानी कि दीज माइक्स, दीज इंस्ट्रूमेंट्स, वायर्स कहाँ से जाएंगी, कैसे जाएंगी. ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट. वायरलेस, obviously the mics have to be wireless. उसके distances calculate करना कितना हो सकता है, because it's a big set, it's a big space that we have created. आपको एक फिर दीवारें हैं दरमियान में. So there were so many little technicalities that had to be catered to make sure कि कोई मसला ना हो और smoothly हो सके.
है स्मूथली कुछ नहीं होता, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ होता मुश्किल से ये सब कुछ। अच्छा, फिर उसके बाद कनेक्टिविटी, लाइक वी वर डूइंग इट ऑन एन ऑडियो नेटवर्क व्हिच इज कॉल्ड दांते। अब दांते क्या है? दांते इज आप समझ रहे हैं ऑडियो ओवर आईपी का एक, बल्कि मैं थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। डिजिटल ऑडियो ट्रांसफरेंस का एक तरीका है, राइट? आपने कभी माइक देखा होगा, माइक से केबल निकलती है, राइट? वो जो माइक की केबल होती है ना, वो एनालॉग सिग्नल ट्रांसफरेंस की केबल है। एनालॉग, आपने बोला वो आपकी एनालॉग आवाज गई, राइट? जब वो कंप्यूटर में जाती है ना आवाज, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिजिटल, क्योंकि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी 0 and 1। सो बेसिकली यू नीड समथिंग टू कन्वर्ट इनटू द सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, राइट? दांते एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी हुई है, बनाई है, आई थिंक इट वाज डिवाइस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, जिसमें आप एट अ टाइम, आप बल्कि जाके 128 चैनल्स बैक एंड फोर्थ भेज सकते हो, 128 चैनल्स ऑफ ऑडियो बट डिजिटल। सो होता क्या है, एंड दिस वाज बाय द वे द फर्स्ट म्यूजिक शो आई फील इन पाकिस्तान दैट वाज डन ऑन एन ऑडियो नेटवर्क, वरना इट वाज ऑल एनालॉग केबल्स। मतलब आप समझ लें कि अगर सेट से केबल जानी है आपके कंट्रोल रूम में, तो वो अगर एनालॉग करते तो वो कोई 128 केबल्स जा रही होती, बहुत। बल्कि ज़्यादा, ठीक है? अब आप सोचें 2 केबल्स जा रही होती थी सिर्फ, 2 केबल्स, क्योंकि आप एनालॉग नहीं भेज रहे हो, आप सेट पे ही सिग्नल को ज़बरदस्त कन्वर्ट करके आप भेजते थे डिजिटल तार, मतलब आपकी लैन केबल जो होती है उस पे कैट 5 कैट 6 पे आप भेजते थे 128 चैनल्स। So all these streamlining, all managing this bit, I had so much gear that I wanted to use. जो gear मेरा studio में है, I had taken it to Karachi for the whole shoot. So my mic preamps, my microphones, I wanted to record them. So ये जितनी रिसर्च करके कैसे करने हैं, पॉसिबल कैसे करने हैं, प्रिस्टीन रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, मेकिंग श्योर यार ये सब ब्रिलियंटली हो जाए, स्मूथली हो जाए, और क्योंकि पहले कभी हुआ नहीं, तो समझ भी आ जाए कि इस चीज़ को करना कैसे, हम डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। ये सारा काम साउंड स्पॉट। सो मैं भी साउंड स्पॉट का बाय द वे हिस्सा ही था, क्योंकि ये रिसर्च ये सब कुछ ना, एंड आई वांटेड कि हम ये सब मिलके ये करें, और ऑल दीज क्या कहते हैं टेक्निकलिटीज, दिस गियर टॉक और सारा कुछ, ये ऐसी एक कॉन्वर्सेशन है जो मुझे इतनी पसंद है और मुझे लगता है इतनी ज़रूरी है, जो होती नहीं है, एंड यू मस्ट हैव सीन माय इंस्टाग्राम इज एक्चुअली Even your उतना ही मैं YouTube, एक्साइटेड जितना Ask Zulfi series जो आप हाँ, करते या बिकॉज़ आई थिंक दैट नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हैं। मैं इतना खुश कि ऐसी टीम बन गई साउंड स्क्वाड की, कि वो सारे नॉलेजेबल बच्चे जो कि खुद भी आर्टिस्ट हैं, ज़ियाद इज़ अ रैप आर्टिस्ट, तुराब इज़ अ सॉन्ग Oh. राइटर, कंपोज़र, प्रोड्यूसर इज़ असद, शेरी भी साउंड स्क्वाड में था, आपने देखा होगा, फिर रहा होता था बेचारा इधर से उधर। तो हम सभी मतलब ऑनेस्टली सभी इधर फिर रहे होते थे जस्ट टू मैनेज सो मेनी थिंग्स, एंड देयर वाज़ अरसलान, ही इज़ अ सिंगर सॉन्ग राइटर, देयर वाज़ हैदर, अगेन अ सिंगर सॉन्ग राइटर प्रोड्यूसर। ये सारे वो लोग, एंड द पीपल हु हैव, एंड इसाक भाई जो इस साउंड स्क्वाड के आप समझ लें हेड थे, जो पूरा साउंड इंजीनियरिंग टेक्निकल उसकी लाइव संभाल रहे थे, उनका उनका को स्टूडियो का एक्सपीरियंस इतना लंबा है, जितने स्ट्रिंग्स वाले सीजन है उन्होंने किए हुए हैं मोस्ट ऑफ देम। Oh, सो wow. so we had a very good team who wants to learn new things. That's important. Everybody brings their own sensibility into it because ये technically बहुत बड़ी undertaking थी, and we had to um, somehow ensure कि ये this happens। ये यही बात था, और उसमें ज़्यादा बड़ी खुशी का दिन था जब हमने पूरा टेस्ट वगैरह रन करके देखा कि अच्छा हमारी एक केबल से चैनल्स ऊपर जा रहे हैं। फिर हमने सबको, ऑब्वियसली यू हैव टू गिव देयर ओन मिक्स, एवरीबॉडी इज परफॉर्मिंग, दे नीड टू हैव देयर ओन मिक्स इन देयर हेडफोन्स। सो उनको भी फिर जो वापस सिग्नल जाना है, बिल्कुल एक एक सबका मिक्स बिल्कुल ठीक बने, सो दैट एवरीबॉडी कैन परफॉर्म आराम से सुकून से। ऑल ऑफ दिस वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द साउंड स्क्वाड। सो ये जो बिहाइंड द सीन वाली सिचुएशन होती है ना, ये स्पेशली ऑन अ शूट ऑफ अ लाइव म्यूजिक शो इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल जॉब्स एंड मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स, बिकॉज टेक्निकली कभी कुछ भी फेल हो सकता है, और होता था। तो हमने अपना एक दांते एक्सपर्ट भी, उमैर वाज देयर। उमैर बाय द वे इज द बेसिस फॉर कराकरम, ही वाज आल्सो इन द साउंड स्क्वाड, Oh, एंड okay. ही इज द पर्सन जिसने हमारी टीम में से दांते सर्टिफिकेशन की हुई। सो उसको इन्स एंड आउट्स का पता था इस टेक्नोलॉजी का। Okay. या सो वो Great. अक्सर कोई मसला आता था तो वो बैठता था, रिजॉल्व करता था, एंड एवरीबॉडी एल्स अराउंड हिम आल्सो देन लर्नड। सो अब इस पॉइंट पे मुझे मुझे मेरी खुशी ये है कि ये पूरे प्रोसेस को करने के बाद ना अब सब टेक्निकली मोर नॉलेजेबल हैं। If each of them want to do their own music show, and they want it to be streamlined as far as an audio recording is concerned, they can do it now. It's amazing. You're और learning बहुत as you अच्छी go, and you're बात है। like setting new benchmarks for the industry also. Like, और पता है इन इन बच्चों की बेचारों की इतनी दौड़ने लगती थी, मुझे याद आता है
कि उफ, बिकॉज़ जिस तरह फिर मिलेंगे है, मैं आपको बल्कि बताता हूँ। उसमें आप देखें तारें ऊपर से आ रही हैं। हुँ। क्यों? क्योंकि अब जो कैमरामैन है, जो हमारे फराज़ था, जो द पर्सन हू वाज़ शूटिंग इट ऑल इन वन टेक में करना था, उनके पीछे-पीछे ज़ीशान परवेज़ थे, गाइड करने के लिए यहाँ से इधर जाओ। अब वो ऐसे पीछे की तरफ आ रहे हैं ना, ही इज़ शूटिंग इट इन अ डिफरेंट वे, राइट? सो अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर ज़ीशान परवेज़ वाज़ गाइडिंग हिम, कोई तार नीचे होती, किसी का पाँव लगता, क्या होता? तार उतर जाती, खत्म हो जाता वन टेक उधर ही। सो वी हैड टू मेक श्योर कि सारी तारें ऊपर से आ रही हों। So if you see the video now, you should notice that. But even that looked so apt for the concept. Yeah, it did, it did. था कि ये था और वो तारों को ऊपर से फेंकना, लेके जाना, कैसे-कैसे इन्होंने सबने किया। मैं मतलब सैल्यूट है खुदा की कसम, जितनी हैट्स इन्होंने ऑफ, मेहनत की। हैट्स ऑफ, बिकॉज़ हैट्स ऑफ। आप आपने ऑनेस्टली बिल्कुल आसान नहीं किया उनके लिए काम, बिकॉज़ आपने मूविंग वॉल्स भी रखी है, मेज़ भी रखा है, फिर आपने जंगल भी बना दिया एक सेट में, लाइक नथिंग ईज़ी। नथिंग ईज़ी। उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि जुल्फी भाई ने हमारे लिए नो, नो, आसानी की है, हैट्स ऑफ टू मुश्किल की ऑल है। ऑफ देम। ऑल ऑफ देम। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। Thank you for बड़ा your उनका hard रोल work. Seriously. था। But I want to ask you कि बहुत ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग होता है क्रिएटर्स और आर्टिस्ट के लिए आजकल स्पेशली टू वर्क विद ब्रांड्स एंड टू कोलैबोरेट विद ब्रांड्स एंड हैव द विजन्स एंड द इंटेंट मैच, you know. And I mean, Coke Studios always have the legacy of doing what it does and portraying the culture so beautifully. हुँ, In this season, obviously you had a slightly different vision, and you took the older, the legacy, and evolved it further. And you also mentioned आपके एक पुराने इंटरव्यू में और अभी भी कि आपने जब बेसमेंट प्रेजेंट किया था तब आप इमोशनल हो गए थे, and you probably at that moment felt that was your superpower, and you have to present to brands in a different way to show them the passion behind, you know, the intent. So I really think this is an important question to ask, and it might help a lot of people बिल्कुल। to know, how do you get a brand to put their faith and backing behind your intent and your देखिए एट द vision? एंड बिल्कुल, एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं, हम सब इमोशनल हैं। बिफोर वी आर अ म्यूजिशियन और वी आर अ ब्रांड। कभी-कभी ऐसा ज़रूर हो सकता है कि एक मतलब इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड बिकॉज़ इट बिकम्स इट हैज़ दैट एबिलिटी टू बिकम मंडेन। इट हैज़ दैट एबिलिटी टू बिकम बोरिंग और थिंग्स हैपनिंग इन अ सर्टेन वे हो सकता है। बट दैट डज़न्ट मीन कि द पीपल ओवर देयर आर नॉट किसी भी ब्रांड की मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोक, राइट? मैं जनरली बात कर रहा हूँ Yeah. कि ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते या इमोट नहीं करना चाहते। हम सब इंसान हैं, हम सब इमोट करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम सब सेंसिटिव हैं। वो बस वो मानने वाली बात है, अपने आप को मनवाने वाली बात है कि हैं। अच्छा, अब सेकंडली कोक इस तरह का ब्रांड है जो अगर आप उनकी हिस्ट्री भी देखें ना, दे हैव बीन दे हैव बीन अ ब्रांड जो डेयरिंग है, सबसे पहली बात। कोक स्टूडियो को बिगिन करना ही ना एक डेयरिंग एक्ट है, जो शुरू हुआ, सबसे बड़ी, ठीक है। उसके बाद 14th ईयर है, सस्टेन करना, इससे बड़ी डेयरिंग बात क्या है? हर साल आपके गाने क्रिएट होके लोगों तक पहुँचाना, उनकी ज़िंदगियों का हिस्सा बनना। सबसे बड़ी बात कि आपकी वो एक्सेप्टेंस का लेवल होना चाहिए, ठीक है? म्यूज़िक के लिए लव होना चाहिए। कोक स्टूडियो अब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, आई डिफाइन इट एज़ वन ऑफ द लैंग्वेजेज़ वी स्पीक टू टॉक टू पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो इट इज़ दैट बिग ऑफ अ थिंग ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें आप सबको इन्वॉल्व कर लेते हो, फिर वो किसी एक का रहता भी नहीं, सबका हो जाता है। अच्छा, अब my way of working now has always been to involve people, not involve people in the beginnings and the ends or the results, involve people throughout the process. Yes. So whenever something was happening, I, you know, मुझे याद है बल्कि, I'll give you an example. I sent a recording, जो पाकिस्तान में कोक को फिलहाल हेड करते हैं, उनको मैंने जब नसीबो जी और आबदा जी रिकॉर्ड रिकॉर्ड करी थी, तो एक उनकी रिकॉर्डिंग आबदा जी का एक पूरा पार्ट था। उनको मैंने वैसे ही व्हाट्सएप पे वीडियो बना के भेजा कि यार सुने, कि क्या बात। सो इन्वॉल्वमेंट का लेवल इमोशनल लेवल पे था। ऐसा नहीं था कि आप मैंने उनसे छुपाया हुआ है प्रोसेस, जो हो रहा है उनको पता था। फॉर एग्ज़ाम्पल गाने जब बन रहे थे ना, बिल्कुल जब इनक्यूबेटर में भी थे, वो थोड़े-थोड़े पे बन गए। तो मैं कह रहा था आएँ मिलते हैं।
लेट्स लिसन टू द सॉन्ग्स जितने जितने बने, लेट मी टेल यू द नैरेटिव्स। अब वो आप सोचें कि जब गाने आधे-आधे मिनट या 1-1 मिनट के थे या छोटे-छोटे थे, बात ही तू झूम वो began like 1 minute song. Pasoori was also a 1.5 minute sort of a thing when it all began. तो वो जब जो आए कि उनको आके सुनाया कि है क्या, हम कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, अभी लिरिक्स भी चीज़ों में कंप्लीट नहीं है, मेलोडीज़ भी कंप्लीटली नहीं हुई, लेकिन म्यूजिकल पर्सनैलिटीज़ बन रही हैं, प्रोसेस में इन्वॉल्व की और पूछा, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? हाँ, व्हाट डू यू हैव टू से? बताएँ आपको आपको क्या लग रहा है? और फिर सुना यार, because there are also people who have their own stories. Maybe they have a lot to contribute, Yeah. a lot to contribute. I'll tell you. और दूसरा देखें, एक ये बहुत बड़ी बात होती है कि उन्होंने इस बात पे यकीन किया कि अच्छा कवर्स नहीं होने चाहिए, ओरिजिनल्स होने चाहिए। ओके, ज़बरदस्त है, ये बात मानना बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने जब ये बात की कि हर विजुअल फ़र्क होगा, ये तो उससे भी बड़ी अंडरटेकिंग थी। इस पे भी उन्होंने कहा कि समझ आती है स्टोरी टेलिंग जितना तुम करना चाह रहे So they हो, agreed the like visual instantly for these things. instant in the first presentation, Hmm. agreed. Okay. दूसरी और एक और की बात ये थी कि द गाय हू वाज इन टच विद मी ज़ीशान सिकंदर, जिसने जो बेसिकली सबसे पहले आया कि यार, और मुझे याद है कि हाउ द कन्वर्सेशन स्टार्टेड वाज कि आई थिंक ग्रूव मेरा उस वक्त मैंने किया था और कुछ टाइम गुजर गया था, एंड ही वाज कॉलिंग मी, मैसेजिंग मी कि आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट यू, एंड I didn't say yes, let's meet for a long time. I took my time to say okay, let's meet. तो वो फिर जब आया ना, again in that conversation room, our first conversation happened, and this was the conversation for Studio 14. This is how we started. Ke he wanted to now make a difference. He wanted to change things around. So I said, okay, if that is your vision, if that is where you're coming from, that is your point of view now. So, okay, then let's begin. Okay. then शुरू then करें. I'll start creating up. शुरू करें, फिर शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे ये था कि if I would have ever done a Coke studio, I would have done it in obviously my own way that I deem will connect to people today in different ways, in unique ways. So in that way, I wanted that ideology to come through, and I also wanted that ideology to get that freedom to propagate, to to be nurtured, and he understood that. So उस प्रोसेस में ना ये बिलीफ भी बड़ा जरूरी होता है कि अच्छा हमने इस बंदे को इन्वॉल्व किया ना, वी हैव टू बिलीव इन हिम बिकॉज वी हैव इन्वॉल्वड हिम। और दूसरी बात, अगर वो मुझ पे बिलीव कर रहे हैं ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको उतना ही उन पे बिलीव करूं और उनको इन्वॉल्व करूं प्रोसेस के अंदर। तो मैं तो ज़ीशान को अक्सर बुलाता था कि आ जा यार, चलें ज़रा गाड़ी में, हम फिर लगाते थे जो हमने डेमोस जहाँ तक बनते थे, फिर हम उस पे एक साथ गाते थे, नाचते थे। दिस इज़ द प्रोसेस। यू हैव टू इन्वॉल्व एवरीवन एज़ इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स। भूल जाएँ ब्रांड, भूल जाएँ म्यूज़िशियन है, भूल जाएँ ये है, सब भूल। एज़ इमोशनल सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग्स सब हम इकट्ठे हैं यार, और उस इकट्ठे होने से ही एट द एंड ऑफ द डे चीज़ निकलेगी जिस पे ये भी नहीं कि सब खुश होंगे, जो ज़िंदगी में असर करेगी। अब उनकी देखें एज़ अ ब्रांड भी, इट्स सच अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग कि अभी कोक स्टूडियो हो रहा था, एंड आई थिंक दे वन अ ग्लोबल अवार्ड फॉर कोक स्टूडियो 14। अभी आखिरी गाना भी नहीं आया था। Wow. दिस इज हाउ इट इज, Yeah. क्योंकि उन्होंने भी बिलीव किया। सो ये स्टोरी वही है, बिलीफ की स्टोरी है जो बिगिन करती है, फिर आप वही आइडियोलॉजिकल फ्रीडम देना टू वे है। ऐसा नहीं है कि आपने दरवाजे अपने बंद कर दिए। मेरा स्टूडियो का दरवाज़ा, आई टोल्ड देम, आपने जब आके इस मेरे प्रोसेस में देखना है मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इट्स ओपन, आएँ, विज़िट करें। वही तो चीज़ बिलीव का बनाता है यार। और फिर Builds चीज़ें trust, भी no? ऑथेंटिक, And the trust ट्रस्ट, is या two-way. ट्रस्ट इज़ टू। तो ये बेसिकली आप जहाँ ब्रांड की बात करते हैं ना, तो वो ये था। और दिस इज़ द वे आई हैव लर्न्ड टू वर्क, कि जहाँ अगर कोई सेंसिटिविटी किसी की अनलॉक नहीं हो रही, तो आप कोशिश करें कि हो जाए। आप उस पॉइंट पे ले जाएं सिचुएशन को कि हो जाए, बस वो ब्रांड हो, वो कुछ हो। इन दिस केस दिस हैपेंड, इन दिस केस दिस हैपेंड। Beautiful how it happened, and that it happened because hats off to Coke for I've worked enough with brands in my own career to know that there's a lot of pushback on creators' ideas, and of course there are so many constraints that even they have in terms of budget or whatever. But I think just you can see in the final product that the trust was two-way, and everyone trusted everyone else and just created magic out of that trust.
So beautiful. I have one sort of almost like a quiz question for you, but before I get to that part, there's a very renowned musician who said that at the end of the day, music is an approximation of all emotion. And I would love to know your thoughts on this and whether you think the songs of this season were an approximation of the emotions or did you get it right 100%? Your voice broke. Your voice broke. Oh, sorry. The last thing. Did you think the songs of this season were an approximation of the emotions you were trying to share with the world, or were they completely 100% bang on? I think it's always an approximation of emotions that you share with the world. I feel that. It's Okay. always. So you're in agreement. And I think, yeah, I mean, even because, see, something being universal, कोई भी चीज यूनिवर्सली कोई लोग उसे इमोट करते हैं. I think लोग approximation of emotions से ही इमोट करते हैं because there they can find that empty space where they can put their own emotion in as well, right? And that's the beauty of the story. In an approximation of emotions, there is still space for people to collaborate or contribute to that emotion set. So I think 100%. 100%. I feel. Can you guess who said this? Yeah. Take a guess. This is the quiz part. Thinking, is he somebody I know? I'm sure you know him. No, I know in the sense You I know definitely him heard personally. him. Personally, I don't know, but you can Hans. ask. No, it's not. Okay. I'll say South Asian. I'll give you a clue. Yeah, Rahman. Yes. To get it. Yeah, so he said this. And I was like, and wow. no wonder. No wonder. Kya baat ki hai? No wonder. I mean, it could have been Hans Zimmer or A.R. Rahman or Peter Gabriel saying something. He said it so matter-of-factly. He's like, see, at the end of the day, all music is an approximation of emotion. And I was like, okay. Beautiful thought. But one question that I really, really would love to ask you is, from what I'm seeing and what I'm hearing through your stories and everything, you're obviously, a very aware creator and aware artist and aware person. You've spent a lot of time observing and understanding your emotions, like you said, and that's a continuing process. It's always going on. So through the journey of Coke Studio season 14, what do you feel you have learned about yourself? इतने मुश्किल सवाल आपने कहाँ से बनाए? I'm curious. I'm super curious. I would love to know. They're great questions, but these are questions that I think about silently. I never think about these questions out loud, and इतना मुश्किल है just to word this. Can you ask again? So through the journey of Coke Studio season 14, what do you think you have learned about yourself? I don't know. Yeah. I don't know. No? Maybe I will in time. And maybe I will be able to word it as well. Anything that I would say now won't give justice to how I have changed or what changed here, how I've evolved, grown. I think one thing but I can say just one thing. I have learned detachment. You need to detach from your effort. You need to detach from the ownership that you might be thinking in your mind. This is absolutely when you do something, उसका प्रोसेस से जो अटैचमेंट है वो तो रहेगी, बट जब कर दिया लोगों तक पहुंच गया तो वो तेरा नहीं है, वो सबका है. आप
डिटैच करें अपने आप को, और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि आपकी जो अगली जर्नी हो ना वो डिफरेंट हो। चलो, the one thing that I learned about me is that I can be more patient than I ever thought I could be. That's the one thing I learned. There's the one thing I learned. My team knows, because they have seen me through that, through the whole season as well. So I learned that I can be more patient, and I learned that आपका काम आपकी लैंग्वेज है, आपका काम आपकी रिप्रेजेंटेशन है, और आपका काम ही आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, बस। और हर सूरत में, in the face of criticism, in the face of controversies, you need to reply and respond with art, so that people can probably, through all this burst of sensitivities, of emotions, they can probably understand what we are trying to say. They probably can believe in us, trust us, emote with us. And I think this is what I then tried to do from that moment onwards. There's a learning in every experience. Mm. But Zulfi, I just want to say that everything that you've learned through this process, we are hoping, and everyone around the world has seen that you are like an ambassador for art, and it's not just art of a place or a region. You're just someone who's on a mission to create the culture of art and empathy and understanding and connecting, no matter where you're from in the world. And you're bridging boundaries and borders and binaries and people from all over. And that's so heartening to see as someone who's a fan of music. And it's so heartening to see someone like you exist in the world, and who's also grooming others like you to carry on the legacy in the future. And we just hope you continue doing this good work into the next season and everything else in your life, because it is helping the world in more ways than you know. So thank you. Thank you for this conversation. Before we wrap up, I have some quick questions, like rapid fire type. I would love to know the answers to these. So rapid fire worst to it's easy. It's not very difficult. Yeah. So I want to know, where is the best place for you to listen to music? This where I'm sitting right now. Right there? With my brothers and all. Yeah. This is my best place. A lot of people say the car, but okay. This is it. Okay. The detail that you can hear now from these speakers and the system. हूँ तो मैं at the end nerd हूँ. मुझे शौक है कि पूरे लवाज़मात सब चीज़ें हों जो मुझे सुनाए उस तरह से मैं सुनना चाहता हूँ in beautiful detail. Okay. Which artist or creator would you like to have a dinner conversation with? Anyone in the world. You can't say Hans Zimmer. No, ठीक है. I think Peter Gabriel. Oh. 100%. Okay. Story. Okay. Now this might be hard, but try to give me answers. The song that stayed with you the longest from this season. I can't answer it. I knew it. I'm telling you, I can't answer it. It's both because you must have noticed as well, the way I am talking about each and every song, it's so unfair. I can pick one, because all of these songs now has a part of me and so many else, so many other people as well. So if it is something so beautifully collective, collaborative, and emotional, I can't choose one. You can't pick a favorite. How about a favorite set? No, again. in a very tight spot. And okay, let's make it easier. We won't ask you to pick favorites from the song. Let's describe each song in one word. Can we do that? I think the audiences would love that. How would you describe Tu Jhoom? मेरे जैसा बंदा एक वर्ड में कुछ डिस्क्राइब कर सकता है? मुझे ये पता है. इतना मुश्किल है यार. यार I think Tu Jhoom ना healing. Kana Yaari. Tu Jhoom is surrender. Sorry. Tu Jhoom surrender. Okay. Kana Yaari. Representation.
Lovely. Okay. Sajan Dasna. एक word में I think it's rediscovery. Oh, rediscovery. Interesting. Okay. Mehram. Time. Abandonment. Abandonment. Yes. Okay. Nere nere was. Dance. Dance. Enjoy. Nice. Pasoori. Pasoori का पसूरी होगा. Pasoori, Pasoori, you're right. And, Really? Pasoori is Pasoori, and I think Pasoori ना बताता हूँ. An inclusive space, an art space. और वो जगह भी यही थी. वो जगह भी यही थी. मतलब वो बनी ऐसी गई थी कि जहाँ इतनी inclusivity, unity भरी हुई थी from the kind of characters, personalities, the portrait shots. वो लोग फिर एक तरफ शीमा किरमानी जी जो कि is a legend in her own right, and at the other hand वो एक डांस होता है लेवा, वो एक बिल्कुल उसमें ब्रेक डांस को मिक्स करके लोगों ने नए जॉनरास बना लिए हैं, तो वो लोग भी थे वहाँ. सो इतना खूबसूरत हाइब्रिड था कि उस जगह पे हर एक था, हर कैरेक्टर पर्सनालिटी ऑफ म्यूजिशियंस भी थे, और वो जगह इतनी हैप्पी जगह बन गई थी ना ज्योति. दैट्स वाई वो जो पिछले दिन मैजिकल जर्नी में आप बीटीएस देखते हो ना, सारे बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लिख रहे हैं. हमारे अराउंड तकरीबन सेट के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे जब हम लिख रहे थे, एंड एवरीबडी वाज देन गिविंग आइडियाज कि ये वर्ड भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है. सो इंक्लूसिव स्पेस में ऐसा होता है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. Nice. Okay, ये दुनिया. Oh, Fair, you're making me revisit all of this. It's good, no? And I I'm think when I'm audiences want to detach hear from this from all of you. वो मुश्किल होता है ना, मेरे डिटैचमेंट के दौरान अटैचमेंट की वापसी. पता नहीं यार, अगला करो ये दुनिया पे वापस आओ. Peechay Hutt. Simple, make way. Nice. Muaziz Saarif. Yeah. Hello. Hello. Yeah. Nice. Okay, Beparwah. Momina said it's a prayer. आप क्या कहेंगे? It's a prayer. It's a prayer. It's a request. It's a very heartfelt request to the universe. Yes. I think Thagyan is very innocently shararti, and all its elements, musical elements, Zain, QB, is one thing that binds them together. Is that little subliminal shararat that is there. Even in Action Zain's musical arrangement, there is a subliminal shararat happening all the time. So it's the shararat. Shararat. Nice. Go. So I think what I remember out of the whole experience of Go are these three lines, these three words, nahi hu kamzor. So for me, it's sensitivity. Phir milenge. Not the end. Not the end. Lovely. And let's go back to Ye Dunya. I think it's an embrace. Even when चेहरे बदलते रहे, जिंदगी ऐसे ही चलती रही. I feel it's a very मुश्किल वाला embrace. When you're not
really happy with that embrace. But that's all it is. You can't deny that this is how it is, and you still have to move on. Yeah, so it's an You embrace. have to keep moving. Embrace. Keep moving on, but sometimes it's very difficult to admit to this feeling कि यार ये ऐसा ही है, or sometimes you don't find reason in it as well, but you still move on. So yes, it's an embrace. Beautiful. Well, thank you so much. Like you said, it's not the end. We're expecting big things in season 15. I'm sure you know. Are you feeling the pressure? Though I have to ask you. Or you're नहीं, relaxed, I'll tell you. playful about it? No, I don't think I'm feeling executionally. जब चीज़ों पे जाते हो ना, तब you feel the pressure because there are timelines and everything. मैं जिस तरह कहूँ, उस टाइम पे ज़रूर pressure होता है. लेकिन when you are building the narratives and ideas and the story that you have to tell, it's a very enjoyable experience. Yeah. And experience, it doesn't leave you. I mean, even I traveled और break भी ली after CS, but वहाँ से भी मैं 2 talking drums लेकर आया हूँ. एक ड्रम होता है मालदीव्स का, बोधू बेरू, उनका कोकोनट स्किन से बनाया होता है उन्होंने. Wow. It's a beautiful like a ढोल, but it you will understand when you hear it कि ये एक समुंदर के पास के कोई इंस्ट्रूमेंट है, कि कोई साउंड है. So my mind keeps taking me to musical art space every time, wherever I am, and I enjoy that. I relish that, and this gives me, the opportunity to think of new things, new people, to meet new ideas, to begin again, to meet again. Yes. So I'm just in that process right now. So मुझे अच्छा लग रहा है, and you also then are able to, जब चीज़ खत्म होती है ना कोई चीज़, तो आप अपने इमोशंस भी थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंड करते हो. And I think I'm also going through that process to understand myself better. कि मैंने आगे करना है तो मैंने किस तरह करना है, क्या करना है. I don't want to repeat myself. I want to tell new stories. I want new collaborations. So there's a lot happening, but these are all exciting ideas that trigger my curiosity in such a beautiful way कि वो कोई discovery नहीं खत्म होती. अभी यही हो रहा है. I'll be honest. उसके अलावा other thing that's happening is I'm watching this series, This Is Us, and so beautiful. It's also, that series is also making me even more sensitive than I've ever been. मुझे ऐसा लग रहा है. So there's something happening in my mind. I mean, मुझे लगता है हर चीज़ का reason होता है. Whatever is happening, whatever you're doing, nothing is random, nothing is by accident. So, and I sense things like that, everything. So let's see where it takes us. Let's see where it takes us. Like Ali said, he said, music and art are occasions to transcend, boundaries, borders, and binaries. और आपने इतना beautifully किया है इस season के through. And I think, the point of art and what art needs to do is capture what we all experience and then let everyone know that they're not alone. So I think you've done that so beautifully through this season of Folk Studio. I can't thank you enough. And I know the audiences can't thank you enough. क्या बात की आपने. You're not alone. ये भी हम ये दुनिया के लिए कह सकते हैं. You're not alone. So thank you for having me here. No, and thank you. For conversation and this discussion. मुझे भी बहुत अच्छा लगा to express it all like I'm expressing it to a friend. मुझे the way you carry the conversation now, you're also blessed. You're gifted in how you do it. So keep at it. And we also love watching you. भी देखते रहेंगे आपके reactions. Or just keep expressing the way you do. Thank you. Thank you. Thank you for being you, and thank you for being here and sharing everything today. Thank you. Take care, Xulfi. Take care. Khuda Hafiz. Bye bye. You will not believe it. तलहा अलग लिख रहा था, अंजुम फारिस अलग लिख रहा था, दोनों को नहीं पता था कि किसने क्या लिखा. और तलहा खत्म करता था कि अगर कोई नहीं तेरा तो मेरी जहाँ खुदा है, और फारिस खत्म करता था यू नॉट अलोन.
Amazing. these are so connected but they didn't know. और गाने का आखिरी पार्ट भी नहीं बना हुआ था Wow. इन द सेंस लिरिकली कि जब वो चीख रहा होता है दैट बिग स्क्रीम ना, उसके पीछे क्या होना। तो उसी टाइम पे जब ये हो रहा था तो आई वेंट टू तला एंड फारिस एंड आई सेड कि इफ यू से कि कोई नहीं तेरा मेरी जहाँ खुदा है, यू नॉट अलोन, इट विल blow everyone away because it just And it completes the narrative. did. It That happened. sounded like it was written, सोच It was के written. लिखा. So it happened right there. So that process of figuring out what can work is such a it's such a beautiful emotion. In fact, even in तू झूम Goosebumps. यार, तू झूम के अंदर मुझे याद है आखिरी टेक हो गई, ज़ीशान परवेज़ ने कहा कि जुल्फी वी आर डन। मैंने कहा नो वी आर नॉट डन and I said कि there's still something that can happen that hasn't happened. So I just went to Abda ji and Nasibu ji. I had very heartfelt conversations with them. For Abda ji, I showed her a video of her from her younger days, in which she was smiling, ठीक है, and interacting with the audience, in a very beautiful way, a very positive वो वाली vibe, right? Less serious. तो मैंने कहा कि आबदा जी ये हंस दें आप बस गाते हुए ना, आप इंजॉय कर लें इसको। गाना भी मतलब इट्स पॉजिटिव वाली ना वाइब सारी वो। तो उसको फिर मैं नसीबू जी के पास गया, उनके पास जाके मैंने कॉन्वर्सेशन उनसे ये कह रही कि आई एम स्टार्टिंग द सीजन विद योर वॉइस, द होल नैरेटिव ऑफ द होल सीजन, मेरा पहला सीजन कोक स्टूडियो 14, पहली आवाज, पहला वर्ड आप, पहला, ठीक है। मैंने कहा ये ज़हन में आप बस एब्जॉर्ब करके ना, यू एक्सप्रेस द होल स्टोरी and you then with Abda ji and you sitting in front of each other, just communicate, just feed off each other's energy emotionally. अगर मैंने कहा आपका दिल कर रहा है उनको वाह कहने का भी तो आप कह दें, आपका उनको स्माइल करने का दिल कर रहा है आप कर लें, और फिर वो जो टेक हुई ना is what you see in the video. Oh, nice. These little moments are so beautiful कि पता नहीं यार बहुत बातें हैं ज्योति, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा इनसे डिटैच होना भी ज़रूरी है क्योंकि नई स्टोरीज अब करनी है, बट देयर आर सो मेनी, क्या करूं। सॉरी आप डिटैच हो गए थे और फिर मैंने सब मेमोरी वापस ले आई। ये हुआ है नहीं, इसमें सॉरी तो कोई बात नहीं लेकिन ये हुआ तो है वापस तो आया सब कुछ और आ रहा है, उधर ही रहेगा थोड़ी देर, चले खैर अच्छी बात।